6 मेडल पैरालंपिक्स में हम जीते भी, आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल्स हैं। डेफ ओलंपिक्स में भी हम 16 मेडल जीते सर, ये भी सबसे ज़्यादा है। तो सर प्रश्न ये खड़ा होता है कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की रिक्वायरमेंट क्यों है और बिल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सर जब कॉमनवेल्थ गेम पिछला हुआ 2010 में भारत में, तो उससे पहले रूल्स बने और एनडीटीएल को भी यहाँ पे बनाने का काम किया गया। लेकिन कुछ वर्ष पहले सर हमारी जो लैब है उसको सस्पेंड कर दिया गया था, उसकी रिवोक भी हमने पिछले की, उसके मैं विस्तार में बाद में आऊँगा सर। लेकिन कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि इसके सैलेंट फीचर्स हमारे बिल के हैं क्या, उस पर मैं थोड़ा प्रकाश जरूर डालूँगा। सर द प्रपोज बिल इंटेंड्स टू अकम्प्लिश building institutional capabilities in anti-doping and enabling hosting of major sporting events, protecting rights of all sports persons, ensuring time-bound justice to athletes, enhancing cooperation among agencies in fighting doping in sports, reinforcing India's commitment to international obligations for clean sports, independent mechanism for anti-doping adjudication, providing legal sanctity to anti-doping agency, which we generally call NADA, and NDTL, which is National Dope Testing Laboratory, establishing more dope testing labs, creating job opportunities both directly and indirectly, and creating opportunities for academic research, science and manufacturing relating to the anti-doping. कुल मिला के सर इससे खेल और खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा, क्योंकि सर अगर कोई भी व्यक्ति डोप करता है और वो पाया जाता है टेस्ट में, ना केवल उसकी भागीदारी खत्म हो जाती है बल्कि साथ ही साथ हमारे एक मेडल जीतने की संख्या भी उस दृष्टि से कम हो जाती है। तो इसके बारे में जागरूकता भी बढ़े, टेस्टिंग भी हो, सुविधाएं भी बढ़े, तो खेल और खिलाड़ियों के हित में आज इस बिल को लाया गया है। मैं आशा करता हूं इस पर सकारात्मक चर्चा होगी और जो भी विषय इसके बीच में आएंगे उसका विस्तार में बाद में उत्तर दूंगा। आपका धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी। Motion moved. There is one amendment by Dr. John Britas for reference of the National Anti-Doping Bill 2022 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha. Members may move the amendment at this stage without any speech. You can move. I move, sir. Amendment moved. The motion for consideration of the bill and the amendment moved thereto are now open for discussion. माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। सभापति जी, मारिया शारापोवा, लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग, डिएगो मैराडोना, बेन जॉनसन, शेन वॉर्न, शोएब अख्तर और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे भारत की धनलक्ष्मी ऐश्वर्या बाबू, ये वो नाम हैं। अगर हम ये सूची पढ़ें और आज डोपिंग बिल पे हम डिस्कशन की बात ना करें तो ये अपने अपने खेलों में इस प्रकार के खिलाड़ी रहे हैं, मारिया शारापोवा से लेकर और लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग तक, डिएगो मैराडोना तक, की पीढ़ियां उनको आदर्श के रूप में देखती हैं कि मैराडोना जैसा फुटबॉलर बनेगा। नहीं, आप, मैं कुछ और अभी आऊँगा। पीटी उषा जी उस सूची में नहीं है, मगर ये वो सूची है जो डोपिंग में, हाँ अब वो समझेंगे, ये डोपिंग में आए हैं। चेयर की तरफ ये सूची उन प्रतिष्ठित खिलाड़ियों की है जो डोपिंग के अंदर कहीं ना कहीं टेस्टिंग, जिन्होंने पॉजिटिव टेस्ट किया है और खेलों की खिलाड़ियों को गरिमा गिराने का काम किया। इसीलिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास हो रहे हैं डोपिंग पे नियंत्रण लाने के लिए और भारत उन प्रयासों में सकारात्मक भूमिका निभा रहा है, ये राजनीति से ऊपर का विषय है। खेल खिलाड़ियों का कोई भी विषय मैं राजनीति से ऊपर मानता हूं। और जो ये बिल लाया गया है, हम इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़े हुए हैं। और क्यों लाया गया है, थोड़ा सा जिक्र किया अनुराग जी ने। मुख्यतः ये जो एंटी डोपिंग की जो लेजिस्लेशन है इंटरनेशनल लेवल पे, ये पिछले 20 साल से धीरे धीरे इन शेप में आई। सबसे पहले 1999 से लेकर 2002 तक एक फाउंडेशन बोर्ड बना, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का। हमारी सरकार भी उस फाउंडेशन बोर्ड का सदस्य।
2005 में जैसे आपने यूनेस्को का बताया, यूनेस्को कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स 2005 में आया, हमारी सरकार ने उसे 2007 में उसको रेटिफाई किया और 2009 में नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना की गई और टेस्टिंग लैब, नेशनल एंटी डोपिंग टेस्टिंग लैब भी हिंदुस्तान में स्थापित की गई। उसके बाद जैसे जैसे डोपिंग की परिस्थितियां बदली, जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, ये जिनका जिक्र किया अनुराग जी ने, कि उनकी जो कन्वेंशंस है उनको हमें पूरी तरीके से फॉलो करना, फॉलो करने की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने एक इशू रेज किया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन, सारी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस विच आर कंट्रोल्ड बाय रिस्पेक्टिव यूनियन गवर्नमेंट्स। उन्होंने कहा कि ये सरकारी जितनी भी सरकारें हैं उसमें कोई हमारे देश का अलग से उन्होंने नहीं जिक्र किया, सभी सरकारों का, कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और उन्होंने स्ट्रिक्टली एक गाइडलाइन या नया कोड प्रकाशित किया 1 जनवरी 2021 को, कि जो जितनी भी नेशनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें हमारी नैडा भी है, उनको ऑपरेशनली सरकारों से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और एक तरफ ये कोड आया, दूसरी तरफ उन्होंने हल्का सा जिक्र किया, दूसरी तरफ इस दौरान 2019 में जो हमारे देश की नेशनल डोपिंग टेस्टिंग लैबोरेटरी थी वो सस्पेंड कर दी गई और उस 2021 में 19 में सस्पेंड हुई, जिसके बाद टेस्टिंग हमारी बहुत लिमिटेड हो गई, बाहर भेजने पड़े हमको जो सैंपल्स कलेक्ट हुए, टेस्टिंग बंद हो गई हिंदुस्तान में। और उसके बाद अब जाके उसका एक्रेडिटेशन दोबारा मिला है। तो ऐसे में ये अनिवार्य थी कि ये बिल लाया जाए और जो बॉडी बनी थी नेडा, जो कि एक सोसाइटीज एक्ट में बनी थी, उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया जाए और उसके साथ साथ एक फ्रेमवर्क, लार्जर फ्रेमवर्क, जो इन्होंने सेलिएंट फीचर्स बताए, जिसमें एक बोर्ड बने, नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाए, जिस बॉडी में डोपिंग कंट्रोल प्रोसेस वेडा की गाइडलाइंस के तहत हो, और उसके साथ साथ इसके अंदर दो पैनल, एक डिसिप्लिनरी पैनल और एक अपील पैनल, दो अलग से पैनल बने, दो के चेयरपर्सन बने, उनकी सारी जो है गाइडलाइंस फॉलो की जाए। ये आ गया। इसमें स्टैंडिंग कमेटी ने भी इस बिल को बड़े अच्छी तरीके से स्क्रूटनाइज किया। शद्दू बुद्धे जी उसके चेयरमैन थे, उनकी भी रिपोर्ट सभा पटल पे आ चुकी और मंत्रालय ने भी उनकी रिपोर्ट का संज्ञान लिया है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो, क्योंकि मैं स्वयं स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ पिछले 12 साल तक, मैं हरियाणा रेसलिंग फेडरेशन का भी प्रेसिडेंट रहा हूँ, मुझे संतुष्टि है क्योंकि 12 साल का सबसे बड़ा टेन्योर होता है। अभी रिसेंटली तक मैं हरियाणा रेसलिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट था, अनुराग जी जानते हैं। मुझे इस बात की संतुष्टि है कि हमारे देश के इतिहास में सबसे सफल ये फेडरेशन रही है। पिछले 4 ओलंपिक में लगातार हमने मेडल दिया है देश को और 50% ओलंपिक के मेडल केवल हरियाणा रेसलिंग फेडरेशन के हमारे रेसलर्स लेके आए हैं। तो मगर धरातल की कुछ बातें इसमें मैं आपसे कुछ सुझाव देना चाहता हूँ जो इस बिल के संबंधित हैं। कुछ बातें तो स्टैंडिंग कमेटी ने ली कि इसमें, जैसे पहला, स्टैंडिंग कमेटी का एक बहुत अच्छा सुझाव है, उसको आपने जिसमें लिया नहीं, कि जो एथलीट्स हैं और जो खिलाड़ी हैं उन सभी को एक कैटेगरी में रखा गया है। उनके खिलाफ जो डिसिप्लिनरी एक्शन भी होगा वो एक कैटेगरी में ही है। उसमें 2 अलग अलग कैटेगरीज कर दी जाएं। माइनर, यानी कि कम से जो वाडा ने माइनर को 16 साल से कम के खिलाड़ियों को अलग कैटेगरी में रखा है, क्योंकि इसमें खास तौर पे जो बहुत यंग एज के खिलाड़ी होते हैं वो कई बार प्रभावित होते हैं, बाकी बहुत सी, तो उनका अलग से प्रोविजन हो, कम उनकी पेनल्टीज हो। ये बहुत अच्छा सुझाव आया था स्टैंडिंग कमेटी का। मैं भी आपसे ये आग्रह करता हूँ, ये हमने भी देखा है। दूसरा, सटीक मैं आपको कुछ सुझाव दे रहा हूँ। आज की परिस्थिति क्या है? आज की परिस्थिति अनुराग जी ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई टेस्टिंग नहीं होती, स्टेट लेवल के हम खेल करते हैं, कोई टेस्टिंग नहीं होती, और मैं आपको ये बताऊं नेशनल लेवल पे भी कोई टेस्टिंग नहीं होती, बहुत कम। खेलो इंडिया का जो आपका, मैं आज मेरी जगह राजनीति से ऊपर उठ के मैं बात कर रहा हूं सभापति जी, खेलो इंडिया का बहुत अच्छा एक कार्यक्रम सरकार ने चलाया है, उसमें आपकी टेस्टिंग होती है। खेलो इंडिया के उदाहरण का मैं तौर पे कहना चाहता हूँ। लेकिन जो स्पोर्ट्स फेडरेशंस के और जो अलग अलग खेलों के
डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल की प्रतियोगिताएं हैं, वहां पे टेस्टिंग नहीं होती, अनिवार्यता से कोई टेस्टिंग। यहां तक कि मैं आपको उदाहरण दूंगा कि स्टेट चैंपियनशिप में या नेशनल चैंपियनशिप में कई बार खिलाड़ी नेडा के आगे अपनी अर्जी देते हैं कि हमें शक है कि दूसरा खिलाड़ी डोपिंग कर रहा है, उस अर्जी पर भी लगभग टेस्टिंग ना के बराबर जवाब उनको मिलता है और टेस्टिंग नहीं होती। तो जब आज ये बिल लेके आप आए हैं तो इसमें कहीं भी आपने ये निर्धारित नहीं किया है कि किस लेवल पे टेस्टिंग हो। ओवरऑल देश में, हमारे देश में 4 से 6,000 सैंपल लेने की आज के दिन आपकी कैपेसिटी है, और हमारे देश की जो टेस्टिंग है ओवरऑल का तो आपको थोड़ा सा आपने अंदाजा दिया है, लेकिन मेरी मांग है कि कहीं ना कहीं नेशनल और स्टेट चैंपियनशिप में कम से कम डिस्ट्रिक्ट स्तर पे ना जाएं, क्योंकि हम जो एलीट एथलीट हैं उन पे लगातार टेस्टिंग करके उनको अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए तो उनको फिट करके भेजना चाहते हैं, लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हो रही है? आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के खेलों में जाके देखो, आपको सिरिंज पड़ी मिलेंगी वहाँ पर, जो है ऐसे आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा कि खिलाड़ी वहाँ से जो है कहीं ना कहीं, जब लैंस आर्मस्ट्रांग और मारिया शारापोवा, डिएगो मैराडोना डोपिंग कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो खिलाड़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू कर रहा है उसको आगे बढ़ना है। तो आप निर्धारित कीजिए, और रैंडम सैंपलिंग की बजाय अगर ये तलवार लटका दें आप स्टेट चैंपियनशिप में, नेशनल चैंपियनशिप पे, कि 10% जो खिलाड़ी हैं उनकी टेस्टिंग जरूर होगी, 5% खिलाड़ी हैं उसकी टेस्टिंग जरूर होगी, हर प्रतियोगिता में होगी, तो कम से कम कुछ तलवार लटकी रहेगी, वहां से हम क्लीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम करें। इसमें एक और बात है अनुराग जी, जो ग्राउंड ऑफ रिमूवल है, जो इंडिपेंडेंस की बात वाडा ने करी कि भाई ये जो नेडा है ये सरकारी इन्फ्लुएंस से अलग होना चाहिए, कल को ऐसा ना हो जाए कि कोई खिलाड़ी का पॉजिटिव आ जाए। और अनुराग जी क्योंकि बहुत व्यवहारिक हैं और खेल मंत्री हैं देश के, तो अलग अलग लोग, सांसद उनको फ़ोन करें अपने जिस क्षेत्र का वो खिलाड़ी है कि जी आप इनको लीनियंसी कर दीजिए, क्योंकि चेयरमैन तो सरकार ही लगा रही है, मेंबर्स भी सरकार लगा रही है, और डिसिप्लिनरी पैनल के भी, अपील पैनल के भी, और उनको हटाने की भी अनलिमिटेड पावर सरकार के पास ही है, तो सरकार के हाथ में सारी बात आ गई। तो इसमें एक सुझाव आया, मैं देना चाहता हूँ, ये जितनी और रेगुलेटरी बॉडीज़ आप देखेंगे अनुराग जी, बहुत सी रेगुलेटरी बॉडी की, क्योंकि वैक्यूम में काम नहीं कर सकती, आखिरकार नियुक्ति सरकार को करने में अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, लेकिन बहुत सी जो रेगुलेटरी बॉडी हैं उनमें जो नियुक्ति की रूल्स हैं वो बहुत क्लियरली डिफाइंड होते हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है, वही लोग नियुक्त हो। दूसरा, रूल्स के साथ साथ ग्राउंड ऑफ रिमूवल, अभी आपने ग्राउंड ऑफ रिमूवल की पावर बोर्ड को दे दी, जो आप बोर्ड बना रहे हैं, मगर बोर्ड किसी बिना कोई कारण बताए किसी रिमूव कर सकता है डिसिप्लिनरी पैनल में और अपील पैनल में जो फैसला करेंगे खिलाड़ियों का। तो ग्राउंड ऑफ रिमूवल अच्छे से नोटेड हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्राउंड ऑफ रिमूवल अगर क्लियरली, जो जैसे बाकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे ट्राई है, बाकी हर क्षेत्र में रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, उनमें ग्राउंड ऑफ रिमूवल को अच्छे से अंकित करने की एक अनिवार्यता से एक प्रावधान होता है। मैं मांग करता हूं कि यहाँ भी, इस बिल में नहीं है, मगर यहाँ भी अगर आप वो करें तो बहुत सहूलियत होगी। तीसरी बात जो मैं समझता हूँ कि इस बिल के दायरे में नहीं है लेकिन वो महत्वपूर्ण है, अगर इसमें सर पहले तो डिसिप्लिनरी जो एक इस बिल के माध्यम से एक पैनल बन रहा है, डिसिप्लिनरी पैनल, अगर नेडा प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी, नेडा को कोई पॉजिटिव मिला कोई खिलाड़ी, वो उसके डिसिप्लिनरी पैनल में रिपोर्ट दे देगी, वो प्रोसिक्यूशन करेगी उस खिलाड़ी का, और वो डिसिप्लिनरी पैनल उस पर कार्रवाई करेगी। कार्रवाई करने के बाद जो अपील है, अपील अथॉरिटी भी, अपील पैनल के बाद फाइनल अगर अपील करनी है, किसी खिलाड़ी को संतुष्ट नहीं है, तो उसको जाना पड़ेगा स्विट्जरलैंड, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन लसवान स्विट्जरलैंड। ये जाहिर है वाडा जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग अथॉरिटी है उन द्वारा निर्धारित है फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, लेकिन आज दुनिया की परिस्थिति बदल रही है। सबसे बड़ी जनसंख्या समूह कहीं है दुनिया में तो एशिया में, और एशिया में 2 मुल्कों में, चीन और हिंदुस्तान। ऐसे में स्विट्जरलैंड हमारा कोई खिलाड़ी जाएगा अपील करने, कितना उस पर पीछे भी हमने देखे कई आए, मनजीत सिंह वर्सेस नेडा केस आया, वो स्विट्जरलैंड तक गए, मनजीत सिंह जो खिलाड़ी थे हमारे देश के। तो ऐसे में मेरी मांग है कि आप प्रयास करें वाडा के पास, क्योंकि वाडा को भारत सरकार का भी सपोर्ट रहता है, जो हमारी टेस्टिंग लैब अभी डिस्क्रेडिट कर दी गई थी,
उसके बाद भारत सरकार ने 1 मिलियन उनको जो है ग्रांट दी रिसर्च के लिए, उसके बाद दोबारा से एक्रेडिट की गई। तो कम से कम एक बेंच, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का एक बेंच हिंदुस्तान में क्यों ना बने। आज हम ये सदी हिंदुस्तान की सदी मानते हैं। भारतवर्ष दुनिया के पृष्ठभूमि सबसे उभरता हुआ हमारा देश है, तो हमारी मांग होनी चाहिए कि यूरोप में तो कि एशिया में क्यों ना हो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का बेंच, ताकि हमारे खिलाड़ी स्विट्ज़रलैंड में उस पर अपील करना पड़े तो उससे अच्छा जो है हमारे देश के अंदर वो अपील कर सके। एक और इसमें मैं सुझाव देना चाहूँगा, जो आपने इस कानून में पनिशमेंट का जो प्रावधान दिए वो प्रावधान जनरल है, उनमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है। उनमें केवल आपने कि कितने समय तक बैन हो ये कुछ नहीं कहा गया। कहा कि भाई उनके मेडल वापस ले लिए जाएंगे, उन पे कोई कार्रवाई की जाएगी, फाइनेंशियल कार्रवाई की जाएगी इत्यादि। स्टैंडिंग कमेटी ने भी इसका जिक्र किया है कि वो कुछ ना कुछ उस बारे में स्पेसिफिसिटी आए कि कितनी प्रोपोर्शन टू क्या ऑफेंस है, उसमें डिटर्मिन ये हो, क्योंकि खिलाड़ियों का पीक करियर बहुत लिमिटेड होता है। ये पूरी पावर हम दे दिए जाएं और अनलिमिटेड पावर दे दिया जाए जिसमें कोई गाइडलाइंस ना हो कि वो कुछ भी कर सकते हैं उनको, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ स्पेसिफिक आप ज़रूर उसमें वो बात लाएं। आज सभापति महोदय देश के खेल की बात हो रही है और ये मैं समझता हूँ कि इसको अच्छे से अगर आप करेंगे तो देश के खेल की खिलाड़ियों की साख बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक कदम है। और मुझे खुशी है कि हमारे मित्र अनुराग ठाकुर जी जो स्वयं खेलों की पृष्ठभूमि से आते हैं, वो इस मंत्रालय को देख रहे हैं। ऐसे में ये एक फ्रेमवर्क देने की बात है। हम अपने खिलाड़ियों को सबसे ज़्यादा प्रतिभा हम मानते हैं, हिंदुस्तान के गाँव में हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रतिभा है, उनको एक फ्रेमवर्क देने की बात है और ये महत्वपूर्ण कदम है। इसमें मैं एक उदाहरण भी देना चाहूँगा, क्योंकि कई ऐसी बातें हैं जो हमारे प्रदेशों में कुछ अच्छे तजुर्बे हुए हैं, उनको देश स्तर पर लागू किया जाए। और मैं उदाहरण देना चाहता हूँ हरियाणा एक हमारा छोटा सा प्रदेश है सभापति महोदय, 2% देश की आबादी। हरियाणा इस सदी से पहले पिछली अगर हम देखें तो पुराने समय में एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ खेलों में हमारी प्रदर्शन अच्छा नहीं था। हरियाणा में 2004 के बाद जो हमारी सरकार वहाँ पे आई, मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अच्छा उदाहरण है, वो भी आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो एक हम हरियाणा में एक नीति लेके आए, पदक लाओ, पद पाओ और प्रतिष्ठा पाओ। व्यापक स्तर पर उस नीति को हमने हरियाणा में लागू किया और जो 2% आबादी वाला प्रदेश है उसका नतीजा ये हुआ कि 2010 कॉमनवेल्थ गेम जब हुए तो कॉमनवेल्थ गेम में 39 गोल्ड मेडल में से 22 गोल्ड मेडल 2010 में अकेले हरियाणा प्रदेश के आए। और वहाँ से लेकर आज तक, आज भी पिछले 3 एशियाई, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक गोल्ड मेडल, ओलंपिक खेलों की आप बात करेंगे तो 40% मेडल अकेले हरियाणा के हैं और ओलंपिक खेलों में 50% भारत के मेडल। आप पिछले ओलंपिक की आप बात कर रहे थे, चाहे वो पिछले ओलंपिक में 2 ही मेडल निराशाजनक प्रदर्शन रहा था, साक्षी मलिक और पीवी संधू, मगर साक्षी मलिक हरियाणा से थी। और इस ओलंपिक मेडल में भी, इस ओलंपिक खेलों में भी, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो हमारे, चाहे वो रवि दहिया हो, चाहे वो बजरंग पुनिया हो, तो ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने देश की जो है भारत माता की झोली मेडल से भरने का काम किया, 40 से 50% मेडल आज हरियाणा के खिलाड़ी एशियाई और यहाँ तक कि कॉमनवेल्थ खेलों में अगर हरियाणा के मेडल अलग से अगर रख दें तो बड़े बड़े मुल्क जिसमें पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं उनसे दुगने मेडल अकेला हरियाणा लेके आ रहा है देश के लिए। तो इस बात का हमारे को गर्व है। उसके पीछे नीति थी, 2-3 नीतियाँ, जैसे मैंने कहा पदक लाओ, पद और प्रतिष्ठा पाओ। 700 से ज़्यादा खिलाड़ियों को सीधा डीएसपी, सब इंस्पेक्टर पदों पे नियुक्त किया गया था। उसके साथ हमारी एक नीति थी स्पैट, स्पोर्ट्स फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, हर स्कूल की बच्चे का अनिवार्य था। और अनिवार्यता के बाद जो 10% बच्चे सबसे टॉप में आते थे उनके 1500 से 2000 उनको स्टाइपेंड मिलता था, ताकि एक जो पहले जमाने में कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, हमने उसको बदलने का प्रयास किया हरियाणा में और कहा कि अगर खेलोगे कूदोगे तो होगे लाजवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे कामयाब। दोनों रास्ते अच्छे हैं ताकि अच्छी दिशा में हमारे देश का और हमारे प्रदेश का युवा जाए। इसके अलावा व्यापक स्तर पे 500 से ज़्यादा ग्रामीण स्तर पर खेल स्टेडियम और उन स्टेडियम्स के अंदर बड़ी एकेडमीज, कोच आदि की नियुक्ति की गई, डाइट एक्सेट्रा के प्रावधान किए गए। नतीजा ये आया
कि आज हरियाणा के खिलाड़ी आगे बढ़ पाए। मैं अनुराग जी से ये आग्रह करूंगा कि मेरी मांग भी है कि ये जो कुछ नीतियां थी, आज खेलो इंडिया अगर आप देखें तो थोड़ा सा उस पैड से लगता है कि उसके कहीं ना कहीं कुछ अंश उसमें लिए गए हैं, तो हमें खुशी है इस बात की। और भी जो हमारी नीति थी, खास तौर पर पदक लाओ पद पाओ, क्योंकि आज खिलाड़ी क्यों करता है डोपिंग? उसको लगता है कि भाई जीत गए तो सब कुछ है और हार गए तो कुछ नहीं। मगर ये जो इस तरह की नीतियां बनती हैं, इसमें अगर खिलाड़ी एक लेवल तक पहुंच जाए तो भी अगर उनको पद से, सरकारी रोजगार से अगर उसको सरकारी रोजगार दिया जाए तो कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेके उसको उतनी चिंता नहीं रहती। ये सरकार का, तो इस नीति को आप राष्ट्रीय स्तर पर इस नीति को लेके जाएं ताकि देश की, भारत माता की झोली, भारत माता के नौजवान आने वाले समय में हम दुनिया के अंदर आगे पहुंच पाए। और साथ में मैं ये भी आग्रह करूंगा कि हरियाणा सरकार को भी आप, क्योंकि 3% जो खिलाड़ियों का कोटा था हरियाणा में बंद हो गया। जो डीएसपी लगते थे पिछले 8 साल से, कोई डीएसपी जो पुराने सारे एथलीट थे, विजेंद्र सिंह बॉक्सर हो हरियाणा सरकार में, हरियाणा पुलिस में डीएसपी, योगेश्वर पहलवान हो हरियाणा पुलिस में डीएसपी, बबीता फोगाट हो हरियाणा पुलिस में डीएसपी, सारे खिलाड़ी उस समय आए थे। लेकिन अगर आप देखें अभी साक्षी मलिक, 2 ही मेडल आए थे ओलंपिक में, हमारी एक बेटी साक्षी मलिक थी, पिछले 5 साल से प्रयासरत है मगर उनको कोई नियुक्ति नहीं मिली। अभी जो इस ओलंपिक में रवि दहिया, बजरंग पुनिया, नीरज चोपड़ा के जो मेडल आए हैं उनकी तो मैं क्या जिक्र करूंगा, पिछले ओलंपिक में ही किसी को नियुक्ति नहीं मिली। ये भारत माता के धरोहर है। राजनीति, खेल, खिलाड़ी ये राजनीति से ऊपर होने चाहिए। जैसे हमारी नीति में पहले नियुक्तियां मिलती थी, मैं आग्रह करूंगा आप हरियाणा सरकार से भी आप आग्रह करें कि उनको नियुक्तियां उसी पैटर्न पे नियुक्तियां मिलें, और आप भी देश में भी इस खेल नीति को लागू करें कि एक छोटा सा 2% आबादी वाला प्रदेश अगर देश के लिए 50% मेडल जुटा सकता है तो इस नीति को आप पूरे देश में लेके जाएंगे तो मैं समझता हूं कि देश के खेलों में और ज़्यादा हम आगे बढ़ पाएंगे। जो आप इस सूझबूझ के साथ ये बिल लेके आए हैं, मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत अच्छा, ये एक सकारात्मक कदम है, एक एनवायरनमेंट आपने देने का प्रयास किया है। खेल खिलाड़ी जो है उनको प्रोत्साहन देने के लिए अच्छा वातावरण बनेगा। सरकार कई विषयों में इसमें खेलो इंडिया इत्यादि, जैसे मैं एक खेलो इंडिया से संबंधित एक और सुझाव आखिरी, मैंने खेलो इंडिया की प्रशंसा करी, खेलो इंडिया अच्छा काम कर रहा है। जब ये खेलो इंडिया की प्रतियोगिताएं होती हैं सर, तो जिस तरह का खाने पीने का, उनका ठहरने का इंतजाम किया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये पहले नहीं किया जा रहा था। इस बात के लिए जो है भारत सरकार का मैं धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ। खेलो इंडिया में आप अच्छा काम करें, लेकिन खेलो इंडिया में एक कमी भी है। खेलो इंडिया से जो जीत रहे हैं उनको, विजेताओं को किसी सरकार में, जैसे मैंने कहा कि नेशनल में जो मेडल्स आते हैं उनको कई डिपार्टमेंट्स उनके सर्टिफिकेट्स को मानता है, चाहे हरियाणा सरकार हो, प्रदेश सरकारें हों, चाहे भारत सरकार में रेलवे इत्यादि हो। मगर खेलो इंडिया में जो विजेता हैं उनको अभी कहीं किसी स्पोर्ट्स नीति में देश में, ना प्रदेश सरकारों की, ना आपकी राष्ट्रीय देश की सरकार की, उनको वो जो है अनिवार्यता से उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा, उनको लाभ नहीं मिल रहे। तो खेलो इंडिया को कनेक्ट किया जाए, ये भी मेरी एक आपसे मांग है। इन्हीं शब्दों के साथ सभापति जी, मैं एक बार फिर अनुराग जी का धन्यवाद करता हूँ इस बिल लाने पर और पूरा समर्थन करता हूँ। धन्यवाद दीपेंद्र जी। माननीय प्लीज, माननीय लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर डीपी वत्स रिटायर्ड। माननीय सभापति जी, जैसा कि माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि हिंदुस्तान की मेडल टैली में हरियाणा के 50% मेडल होते हैं, और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि उनके बाद मेरे को बोलने का अवसर दिया। मुझे लगता है इस बिल में भी हरियाणा का 50% कंट्रीब्यूशन होगा। एंड सेकंड थिंग, आई डू अप्रिशिएट the discussion on bill is above political levels. A soldier will certainly appreciate it. Historically, drug use was often sanctioned and encouraged by militaries through including alcohol, tobacco in troop rations. Performance enhancers का इतिहास इतना ही पुराना है जितना बैटल का और मैनकाइंड का। ओपियम लेके लोग लड़ाइयों में जाते थे, ओपियम एडिक्ट भी हो जाते थे, और उसका कारण था कि इनडिफरेंस टू डेंजर हो जाता था।
Then came performance enhancers, especially anabolic steroids and methamphetamine ड्यूरिंग वार्स, क्योंकि इनसे एपिटाइट कम हो जाती थी और साथ में सस्टेन्ड दे कुड डू दी जॉब, और इनका नाम कहा जाने लगा लिक्विड करेज। मगर एक ऐसी स्टेज आ गई कि 1960 के ओलंपिक में साइक्लिस्ट एन मार्क 100 किलोमीटर की दौड़ में गिर गए एंड ही डाइड ऑन दी स्पॉट। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें मेफेंटामीन का लेवल काफ़ी हाई मिला। तो ये मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि ये परफॉर्मेंस एनहांसर्स तो हैं, मगर साथ में डेंजरस फॉर दी बॉडी हैं। और क्या है डोपिंग मटेरियल? उसकी डेफिनेशन ये है कि आपने ऐसा मटेरियल, ऐसा केमिकल, ऐसी दवाई ले ली जो नॉर्मली बॉडी में सिक्रीट नहीं होता, अगर होता भी है तो उस लेवल तक का नहीं होता जो नॉर्मल रेंज में है। तो इन डोपिंग मटेरियल्स पे आज रेगुलेट करने की बात हो रही है, बैन लगाने की बात हो रही है, कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाए, अगर पकड़ा गया तो उसको क्या पनिशमेंट होगी और क्या उसकी अपील होगी। इट हैज बीन एम्पली कवर्ड बाय ऑनरेबल दीपेंद्र सिंह। एक बात मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि खेल का जिक्र हो और हरियाणा का जिक्र अधूरा रह जाए। हरियाणा में एक कहावत है कि या तो हरियाणा का छोरा और अब तो छोरी भी, या तो खेत में या फौज में और या फिर खेल में। अगर इन तीनों जगह वो नहीं है और उसको नौकरी ना मिले तो उसके जेल जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ही इज बबलिंग विद यूथ, डायनामिज्म, एनर्जी, परसिवियरेंस एंड फोर्टिट्यूड। और ऐसा आदमी को अगर बगैर नौकरी छोड़ दिया जाए तो फिर वो कबाड़ा कर सकता है। इसलिए मेरी अपील है सारी स्टेट गवर्नमेंट से कि हरियाणा के जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं उनको आप नौकरी दें स्पोर्ट्स में। जैसा कि इन्होंने बताया पदक लाओ और पद पाओ, ये सच्ची बात है। मगर एक बात मैं बताना चाहूँगा, वैसे तो मैं यूनिफॉर्म में 40 साल मैंने बिताए हैं और आई रिकमेंड इट कि भाई पुलिस में डीएसपी भर्ती कर दिया। एक डीएसपी का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, इन्होंने भी किया। हमने नेगेटिव तो सुना डोपिंग के बारे में, एक पॉजिटिव बात, ओलंपियन योगेश्वर दत्त को ब्रॉन्ज मेडल मिला लंदन ओलंपिक्स में। रशियन प्लेयर खुडरोव रेसलर का डॉप टेस्ट हुआ। डॉप टेस्ट की रिपोर्ट आई पॉजिटिव एंड योगेश्वर दत्त वाज ऑफर्ड कि योर bronze medal can be upgraded to silver medal. In the meantime, wrestler Khudrov died in an accident. The character of athletes and sports person, बात नौकरी की हो रही थी और हरियाणा की हो रही थी। उसमें मैं दीपेंद्र सिंह जी से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि 2004 से पहले भी हरियाणा का ही रोल था। फौजी परिवार से होने के बावजूद भी पहले नेशनल स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में अगर हिंदुस्तान का कोई रोल था तो वो फौज का था। सारी टीमें, चाहे रेसलिंग की हो, चाहे उदयचंद हो, चाहे चंदगीराम हो, चाहे लीलाराम हो, चाहे सज्जन सिंह हो,
चाहे बॉक्सर्स हो मेहताब सिंह, हवा सिंह, वो सारे फौज के थे और वो थे भी मैक्सिमम हरियाणा के। मैंने एक ऐसी यूनिट में काम किया, रेजिमेंट में काम किया है, वो थी 2nd जाट बटालियन ऑफ द रेजिमेंट, जिसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के एथलीट्स एंड स्पोर्ट्समैन थे। मगर नौकरी में एक मेरी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैंने माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा से, प्लीज आप चेक कर दें। हाँ सर, बात की थी इन रेसलर्स के बारे में जो डीएसपी लगे, तो एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन आई। वो कहते हैं इनको रेसलिंग के सिवाय बाकी तो एग्ज़ाम पास करें, वरना हरियाणा में तो सारे ही फौजी, सारे ही रेसलर, वो तो फिर सारे ये पुलिस वाले फौज ये रेसलर ही हो जाएंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये प्रैक्टिकल एंड फिजिबल ना होने की वजह से आपके माध्यम से बाकी स्टेट से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इनको आप एडजस्ट करो ताकि आपके मेडल भी आने शुरू हो। ऑफ कोर्स माई कंप्लीमेंट्स टू पीवी सिंधु एंड पीटी उषा जी सीटिंग हेयर, कि दूसरी स्टेट्स की भी परफॉर्मेंस, खासकर केरला की परफॉर्मेंस तो बहुत बेहतर है। और उसमें अगर खेल का नाम लें और स्पोर्ट्स यूजेनिक्स की बात ना करें, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में एनाबोलिक स्टीराइड्स के इस्तेमाल की वजह से खासकर जीडीआर होता था। बिकॉज मेरी उम्र 73 ईयर्स हो गई है एंड आई हैव बीन फॉलोइंग स्पोर्ट्स क्वाइट कीनली। उसमें स्टीराइड्स का हो, ट्रेनिंग का हो, यूजेनिक्स का हो, उसकी वजह से मेडल टॉली वाज हेविली टिल्टेड टुवर्ड्स यूएसएसआर एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। जैसा कि मैंने कहा यूजेनिक्स, तो मैं यहाँ पे खाप पंचायत को जरूर लाना चाहूँगा। खाप पंचायत हैं तो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस टू मेंटेन स्टेबिलिटी, मगर उनका एक प्रिंसिपल था कि आप क्लोज रिलेशन में शादी नहीं करोगे, यानी इन योर क्लैन, योर मदर्स क्लैन, योर दादीज क्लैन, मीन्स क्रॉस ब्रीडिंग इम्प्रूव्स द ब्रीड। तो यहाँ मैं आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में 5000 ऐसी जातियां और सब जातियां हैं जो दे डोंट इंटरमैरी। ए नेशन मीन्स इंटरमैरिंग एंड इंटरडाइनिंग। व्हेन इंटरमैरिंग स्टार्ट्स आवर मेडल टॉली मे इम्प्रूव बिकॉज ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग, और जातिवाद का भी छुटकारा हो जाएगा। रही बात इंसेंटिव्स फॉर स्पोर्ट्स, incentives for sports, प्लीज स्पीक। हाँ, यस, इंसेंटिव्स में मैं ये जरूर कहूँगा, कृपया सीट पर बैठकर बात न करें, हाँ, प्लीज। नहीं, वी एडवोकेट इंटर रिलीजन आल्सो। हाँ, यस, मैं ये कहूँगा कि इंसेंटिव्स की बात थी। इंसेंटिव्स 3 हिस्से में से एक हिस्सा तो बोल गए, मगर एक बेचारा फौजी भी शहीद होता है। अगर 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए ओलंपिक गोल्ड मेडल को देते हैं, सिल्वर मेडल को 3 करोड़ देते हैं, तो फौजी को कम से कम 1 करोड़ ही दे दो, और एक स्टेट में एवरेज, और इस पे भी क्लैपिंग कर दो। मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूँगा। रेस्ट आई विल से, सर मेरा टाइम बता दो, क्योंकि नहीं, आप अपनी बात कंक्लूड कर रहे हैं ना। कंक्लूड इतनी जल्दी करने के मूड में नहीं हूं, मगर आप बोलिए, अभी आपके पास समय है। हाँ, अभी तो समय है, पार्टी ने जो समय दे रखा है वो समय भी है आपके पास। प्लीज। नहीं, मैं असल में आमतौर से मेरा पुराना एक्सपीरियंस ये है कि मैं ठीक ट्यून में होता हूं तो बोल दिया जाता है बैठ जाओ, और मैं बैठ जाता हूं। एक मैं ये लेबोरेटरीज के बारे में कहूँगा। ये तो मैं मुबारकबाद दूंगा
Anurag ji ko, but he has got ample compliments from his friend on this issue कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स and further encouragements, especially giving to the young athletes and catching them young. उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ऐसी ओरिएंटेशन ज़रूर की जाए कि इनको बाद में दे आर नॉट लेफ्ट ऑन द ग्राउंड, इनको जॉब ज़रूर मिले। रही बात लेबोरेटरीज़ की, लेबोरेटरीज़ में एक बात इंटेग्रिटी की करना चाहूँगा। इसमें लिखा हुआ है कि एथलीट के हकूक़ को एनक्रोच अपॉन ना किया जाए। मैं NABL लेबोरेटरीज से मेरा एक्सपीरियंस है, नेशनली एक्रीडिटेड बायोलॉजिकल लैब्स, एज ए मेडिकल एजुकेशनिस्ट। उसमें मेरा एक्सपीरियंस ये है कि सैंपल अप्रूव करवाने की तो कम करप्शन है, यानी करप्शन तो वी हैव टू एक्सेप्ट इन दिस कंट्री के फ्रॉम द डे वन जो है वो अनमैनेजेबल सी है, मगर सैंपल रिजेक्ट कराने की ज़्यादा बड़ी करप्शन है। इस चीज़ का शिकार एथलीट्स ना हो जाएं कि कम से कम NABL की तरह इन लेबोरेटरीज को भी इंटेग्रिटी का ख्याल रखा जाए। माननीय दीपेंद्र सिंह जी का एक और बात थी कि ये इंडिपेंडेंट बॉडीज़ रखी जाएं। इंडिपेंडेंट बॉडीज़ के मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ, इन पर सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। बिकॉज वी हैव ए वेरी बिटर एक्सपीरियंस ऑफ statutory bodies and independent bodies. We dispensed with the Medical Council of India, which became a state within a state, and Delhi High Court had to tell or label it to be a den of corruption. So until and unless Indian character improves, the state within state may backfire. Therefore, there should be unity of command rather than multiplicity of commands, and unity of command is that it should come under the government. And it was not only Medical Council of India, Pharmacy Council of Haryana now going on, dental councils and other councils, means this independent should be for the government, not under the government. Like soldiers, they should remain disciplined under government. I put it this way. As far as standing committee is concerned, Lok Sabha Speaker, Mananiya Lok Sabha Speaker and Chairman Rajya Sabha had referred it to the departmental standing committee, and they made quite good recommendations to make it more user-friendly, and those have been agreed to by the minister when it was put, and still the rules need to be framed. In rules, the further relaxation can be given. As far as selection of the committees and board is concerned, certainly men of integrity and men of professional integrity should be appointed to those posts. Otherwise, it becomes another futile exercise, but that will be made sure. And I will like to bring it to everybody's notice through you, sir. एक एथलीट, एक स्पोर्ट्समैन का इज्जत व इकबाल बुलंद रखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उनको एयरपोर्ट पे खुशामदीद कहने जाते हैं, उनको सी ऑफ करते हैं, उनको शाबाश देते हैं,
और उनको साथ साथ में सिर्फ हौसला अफजाई नहीं, फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं। और उन फैसिलिटीज़ का रिजल्ट ये है कि रिकॉर्ड फॉर इंडिया 7 मेडल्स एंड ये एक शुरुआत है। हम ऐसी इराद से ताल्लुक़ रखते हैं, जब मेडल्स का अकाल था पूरी दक्षिणी एशिया में एक भी मेडल नहीं होता था, और जर्मनी की कोरलिनिया एंडर जिम्नास्टिक्स में अकेली 10 मेडल, फ्लैप्स ऑफ यूएसए 10 medals, and still in Commonwealth Games we are doing very well. It's okay as compared to past, and especially these last 8 years have really been excellent. But still a lot needs to be done, because हिंदुस्तान की पॉपुलेशन करीबन 2 करोड़ सालाना बढ़ती है, हरियाणा की पॉपुलेशन 2.25 करोड़ है, मगर ऑस्ट्रेलिया की तो टोटल पॉपुलेशन हरियाणा से कम है और मेडल बहुत ज़्यादा है। इस तरफ इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पोजीशंस वी मस्ट लुक इनटू इट एंड मेडिकल्स शुड वॉक इन। एक बात मैं और एथलीट्स के बारे में बताना चाहूँगा कि गांव में कहते हैं भाई छोरा 17 और 27 के बीच में आ गया। 17-27 के बीच में मीन्स हिज एक्सीलेंट परफॉर्मेंस पीरियड एट दैट टाइम। हिज रिफ्लेक्सेस आर फास्ट, हिज रिफ्लेक्सेस आर क्विक, हिज सेंसेस आर वेरी सेंसिटिव। बट व्हाट अबाउट आफ्टर दैट? आफ्टर दैट आप देखोगे कि कोच साहब आ रहे हैं, मैनेजर साहब आ रहे हैं, इतना बड़ा पेट, और मैनेजर जो है रेसलिंग टीम का, मैनेजर कुश्ती टीम का, मैनेजर एथलेटिक्स का। फौज एक ऐसी चीज़ है कि जनरल भी प्रमोट होगा तो उसका मेडिकल और वेट हाइट दोबारा ली जाती है, और सामने का फोटो भी और साइड से फोटो भी। तो इसी तरह से इनका भी कांस्टेंट दे शुड बी सब्जेक्टेड टू मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। जो खुद ही अनफिट हो दूसरे को क्या एथलीट बनाएगा? ये दिस डिसिप्लिन शुड बी imposed upon the coaches, on managers, and on even doctors who are accompanying the Olympic teams or international events. माननीय डॉक्टर वत्स जी, अब कंक्लूड कर सकते हैं आप। Sir, thank you very much. Thank you. थैंक यू। डॉक्टर शांतनु सेन जी, डॉक्टर शांतनु सेन। Good afternoon, one and all. Sir, through you, I would like to put forward certain important points before our learned minister, which I propose to get incorporated or accommodated or considered for better implementation of this bill. Sir, as we all know by now that WADA, that is World Anti-Doping Agency, was formed in 1990 under the International Olympic Committee. Then WADA considered that there should be a doping agency in each and every country. Accordingly, NADA was formed in November 2009. As a society, it was registered under Society Registration Act. Then it was felt that as there was no legislation, certain decisions taken by this agency could have been taken to court by the other parties. So there was a need of legislation. Accordingly, it was proposed by the State Standing Committee in 2020. And thereafter, it has been converted to a statutory body like NADA. Said certain drawbacks of this act is, number one, there is a provision of Director General of NADA, whose qualifications are not yet mentioned in the bill. Secondly, it has been mentioned categorically that Government of India may remove this Director General at any point of time from the office on such ground, within bracket. What are the grounds that have not been mentioned in the bill, sir? Thirdly, it has been mentioned that the term for this DG would be 3 years, but it might be extended subject to the decision taken by Government of India. So there is a clear-cut question that Director General will be bound to work under the directives of Government of India. He will be unable to work
independently. Secondly, there is a provision of national board, and in the national board there is the provision of disciplinary panel. Like if there is a case of any doping, this disciplinary panel can take the decision so far the punishment is concerned. And the appeal panel, if that particular athlete feels that it has been done as an injustice to him, he can go to that appeal panel. Unfortunately, it has been mentioned that board can remove the members of these panels at any point of time, and even they cannot be given any chance of being heard of. Here lies the question once again so far the independence of this authority is concerned. Sir, qualification of members. WADA, that is World Agency, has categorically mentioned there should be specific guidelines so far the qualifications are concerned, which are missing in this existing bill, sir. Sir, clause 11.2 and clause 11.5 of this bill, it is mentioned that disciplinary panel will consist of 1 chairperson and 4 vice chairpersons. And it has been mentioned that in absence of the chairperson, 1 vice chairperson will take the lead role. But who is this 1 vice chairperson out of the 4? It is not mentioned clearly, sir. Sir, there are certain standing committee recommendations. Number 1, selection and appointment mechanism process should be clear and transparent. There should be clear-cut discrimination between major and minor athletes and physically challenged athletes. Specific SOP is needed regarding the therapeutic use exemption. There is clear-cut confusion if an athlete doesn't know whether he can take a simple paracetamol or he cannot. So there should be adequate awareness as well. Penalties of athletes should be proportionate to the amount of the crime done by that athlete. That it should be proportionate one, sir. After the period of his punishment is over, he should be once again entitled and allowed for each and every competition so far the medals and others are concerned, because we know that duration of one athlete is very short, sir. Thirdly, dope testing laboratory. It was very unfortunate to note that the only laboratory in India was banned for nearly 1 year. There are 29 accredited labs in the world. Asia is having 6. Our suggestion, each state should have 1 laboratory, sir. And I sincerely endorse the statement made by my Congress colleague that we should give our best possible effort to have 1 unit instead of Switzerland, 1 unit in our in our country, or if not possible, at least in Asia, sir. Sir, there is another confusion regarding athlete support personnel. Who are the persons to be considered as athlete personals, support personals? It needs to be mentioned clearly in the bill. And last but not the least, my humble submission before my learned minister will be, we should look into it so that these bodies and these organizations can act neutrally and independently, not directly being governed by the government of India. We have enough discussion regarding Khelo India. I believe someday there will be enough discussion on Becho India, and thereafter in the country there will be Khela Hobe. We are waiting for that. And I strongly contradict the statement made by my BJP colleague. He said that MCI was corrupt, and for the same NMC was formed. I can cite you several examples where NMC is being accused for so many irregularities. So I strongly contradict him, sir. And last but not the least, I believe our minister will take necessary steps so that this organization can work independently, unlike the Delhi police who restrained the Bengal CID speak on the from subject. investigating and Speak on the arresting subject person that will only in go North on the Delhi, record, sir. please. Mane N.R. Elango, Honorable N.R. Elango. Thank you, Chairman. At the outset, I welcome the bill. But if I take Chairman, the House clause by clause, clause ZA says what is prohibited list. Prohibited list means the list of prohibited substances and prohibited methods specified by the agency by regulations. So the prohibited list itself is subdelegated to some other authority what is going to be the prohibited list. I request the government to consider and to incorporate what are all the prohibited list in the bill itself. There cannot be any subdelegation on this point, number one. Number two, ZH, clause ZH, 2ZH says, use means the utilization, application,
injection or consumption by any means whatsoever by any prohibited substance or prohibited method. Now again the question comes, what is the prohibited substance? The bill is silent. What are all the prohibited substances? Like NDPS Act classifies what are all the prohibited substances. This bill is silent on what are all the list of prohibited substances and who is going to decide that. And this cannot be subdelegated to some other authority. When this house, the great parliament, is deciding this house and the parliament have to decide what are all the prohibited substances. Number one. Number two, if it is considered Section 4, Clause 4, anti-doping rule violations, it requires further deliberation into the Clause 4, because the anti-doping rule or the violations of anti-doping rules is not categorically stated and it needs further deliberation by this House. If Chapter 3 is taken, the National Board, the Constitution of National Board, the qualification of the member is not given, either for the chairman or for the members of the National Board is not specified in the bill. Like TROI and other commissions, Medical Council, the qualifications of the members and chairman are specifically stated in the bill and the act. This bill is silent about the qualification of the members and the chairman. It will lead to appointment of person by the choice of the government in power. This will take away the independency of the board itself. So there need to be a deliberation and a insertion of the qualification of the chairman and members of the national board. Then if Chapter 5, Class 19 is taken, where the agency has reason to believe that an athlete or athlete support personnel or any other person to whom this act applies has committed anti-doping rule violation, any person authorized by the agency may, in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure, enter so-and-so, and search. Now, it is a question of using a prohibited substance in a particular game or sports. Why should authority to be given a power to enter any place of the sportsman and go and trouble him and search his place? When he is there in the ground, he has to be subjected for the anti-doping test. His house cannot be the authorities can be given a power to go and search his house or place where he is residing. This will put a great mental trauma on the sports persons. This has to be considered. Number one. Number two, there is already provisions under the narcotic drugs and psychotropic substances how these procedure of search and seizure have to be made. Prohibited substances under this bill will have a different kind of a procedure, namely Criminal Procedure Code. So this has to be considered by the ministry and a clear-cut procedure of search and seizure have to be made. Though there is an appeal before the appellate panel is given, the recommendations of the standing committee has not been considered before drafting the bill. Number one, anti-doping bill is the requirement of the day. It's the need of the hour. But the bill has not considered the cases where through conspiracies, a sports person is made positive to this anti-doping test. There are conspiracies made to fail a person from this kind of test. There is no clause or section provided for conducting an investigation whether that sports person was cheated and by conspiracy he was made to positive. That has to be considered. So many cases where through conspiracy sports persons are failed in the doping test. That has to be considered, number one. And the standing committee in its recommendation
exhaustively stated that issues to be identified in the bill, in this bill. Number one, no provision regarding the data procured by the authorized agencies, namely the personal data protection aspect of the athletes accused of doping are not taken into account. Number one. Number two, no provision for the members of the disciplinary panel or the panel or appeal panel or their removal. Third, fails to identify and make provisions in respect of applicability of the bill on foreign athletes participating in India. There is no clause in the bill about the foreign athletes who are going to participate in India. Number four, no provision regarding compensation in case of false positive tests which can harm the career of the athlete and destroy their reputation. This ministry have to definitely consider and make sufficient provisions to compensate persons due to conspiracy made false positive. Number five, seeking access to lab reports and hiring experts to interpret those reports can be expensive and time consuming and thus affecting the athlete's career in the process. So there should be a mechanism to expedite the reports to be given to the athlete and to approach the appellate panel, and a time-bound manner of giving the decisions of the appellate panel is must. That is absent in the bill. And no provision regarding penalties to be imposed on supplement companies engaged in contamination of supplement products, which can result in potential doping. This clause or this recommendation of the standing committee has not been considered at all in the bill. So a wider consultation is required, and the recommendations of the standing committee have to be again thought of and to be incorporated in the bill. With that, I rest my case. Thank you. Thank you. Manya Shri Ayodhya Rami Reddy Allah ji. Thank you, sir. I want to thank you for giving me this opportunity to speak on the National Anti-Doping Bill 2022. I would also like to congratulate Sanket Mahadev Sargar for starting off India's medal tally at the Commonwealth Games 2022 with claiming a silver in weightlifting, and fellow lifter Mr. Guru Raja Pujari for winning bronze medal, as well as Saikom Mirabai Chanu, who shattered Commonwealth Games records by winning India's first gold medal. Sir, coming back to this anti-doping bill, as we are all aware, doping remains a very severe problem, with India ranking 3rd worldwide, according to the latest World Anti-Doping Agency report released in 2022, with 152 cases across different sports. Such incidents affect the morale of the sportsperson and also disappoints the aspiring athletes that view them as their idols, and it also becomes a matter of national embarrassment. Therefore, I welcome the anti-doping bill, which seeks to rectify this problem, as it is an important bill, especially considering the ongoing Commonwealth Games and the increase in India's participation in sports inspired by our record Olympics tally last year. There are few positives that I would like to mention here. The protection towards athletes. As use of steroids and other doping substances disqualify athletes from any competitions and ban them from taking part in any competition for a long time, washing away their immense preparative efforts, while also having a negative impact on their health, even resulting in their death in certain extreme cases. A bill seeking to curb this problem is a good step toward protecting and looking after the safety of our country's athletes. The next point is inclusion of athlete support personnel. Under this new bill, athlete support personnel, described as any coach, trainer, manager, agent, team staff, official,
medical or paramedical personnel or such other person working with or treating or assisting an athlete who is participating or preparing for at the national level or international level, or to which this act applies, will also be subjected to consequences of violation. Considering that there are various cases of athletes testing positive due to supplements containing contaminated substances given to them by their coach or other staff members, subjecting them to punishments or fines or other disciplinary action will ensure more responsibility from their side as well as and may lead to a decrease in such cases. The next one is therapeutic use exemption. This bill, in accordance with the international standards for therapeutic use, shall grant certain athletes undergoing medical treatment to be allowed to take medicines or drugs included in the list of banned substances as an exemption. As sports persons throughout their career may sustain injuries that require such treatment, it is another positive addition to the bill that will allow for regulation of banned substances as part of medical treatment. Few observations, sir. I would like to put up a few of my observations. Most of the doping incidents in India are unintentional. In India, a number of athletes do not actually intend to use any enhancement drugs or steroids. However, a number of ordinary medicines that are meant to cure common pain or illness and even some daily used products also contain some amount of banned substances. A lack of knowledge regarding the presence of banned substances is the reason why most of the doping incidents in India takes place. Recent estimates project that these cases are about 12 per year. That is, one athlete per month is caught out due to not carefully checking everything that is put into their body or being appropriately educated on their rights and responsibilities. The next observation is the responsibility solely on the athletes. These regulations in the bill makes an athlete strictly liable for any banned substances entering their body, and therefore the burden of protecting their body against any such prohibited substances lies on the athlete themselves. So therefore this bill should have provisions that call for the National Anti-Doping Agency or the National Board to take responsibility for protecting the athletes from instances of accidental ingestion through proper education and also proper labeling of supplements, medicines or other products that are likely to contain these banned substances. So few suggestions, sir. Localized awareness programs. So across all the stakeholders who are part of the sports industry must be brought in, an IEC program. Information, education and communication programs must be brought in across all the stakeholders. India is set to adopt the international anti-doping rules verbatim without considering some ground realities and challenges that will eventually arise. The National Anti-Doping Agency's educational programs are conventional as the language mainly used is English, which may not be easy to understand by most of the athletes coming from rural backgrounds. Owing to this, there are many cases in which athletes have taken the plea of unknowingly committing the violation due to lack of knowledge. Thus, anti-doping programs and presentations should be conducted in the vernacular language of the athlete as it helps in acquiring them better with the technicalities of doping. The bill should also provide for a complete list of banned substances in regional languages to the athletes so that the athletes can have a better understanding relating to that. The increasing testing infrastructure. As per the NADA's regulations, an athlete is expected to conduct research before consuming any supplement. However, there is a lack of laboratories in India that carry out such specific tests on supplement, and if an athlete finds such a laboratory, the cost of carrying out the tests are high. Also, the suspension of country's national dope testing laboratory due to non-confirmation
to the international standards for laboratories posed additional problems for athletes, especially during the 2020 Olympics, for which they had to get tested in laboratories outside India. As NDTL was prohibited from carrying out any anti-doping activities, including all analysis of Honourable urine member, please conclude. and blood samples. The point towards the lack of infrastructure required for the proper adoption of anti-doping regulations. NDTL should be improved and more such labs should be set up in different states of India. So trained personnel also have to be brought in across various levels. Mental pressures on athletes should be brought down. So with all these things, sir, I would like to say that the sports without ethics and fair play becomes a baseless competition. Hence, we need to protect our athletes. We need to bring back the true spirit of sports, one which is not tainted with any fear of losing. With these suggestions, I support this bill. Thank you. Thank you. Shri K.R. Suresh Reddy ji. Thank you, sir. At the outset, I would like to congratulate all the sportspersons who have excelled at the Commonwealth Games, who have kept our country's flag flying high. I welcome this bill, sir, and more so feel reassured that it is being piloted by a young minister who is not only young but also very keenly involved in sports activities. So I am sure the bill and the mood of this House in their presentations would be taken in letter and spirit by the Honourable Minister. I have a couple of suggestions and a couple of queries, sir. Now, India signed this UNESCO Convention against doping in 2005 and you ratified it in 2007. Now, why has it taken almost 15 to 16 long years to bring in this bill? We've seen the other day also on Antarctica, whenever international conventions are signed, treaties are signed, and when it mandates legislation, it seems to be taking a pretty long time, and I'm not in full know-how of why the delay, but the Honourable Minister can kindly explain that, sir. There are a couple of issues relating to the bill, sir. The World Anti-Doping Code, the WADA code, as we call it, makes a very clear distinction between majors and minors. And it sets a lesser punishment for the minors. In the bill piloted by the Honourable Minister, if you see Clause 2, Subclause D of the bill, athlete is defined as any person. Now, to be more specific, the bill can contain a separate subclause under Clause 2, which defines minors as persons below the age of 18. And further, Clause 6, which talks about the consequences of anti-doping rule violations, insert a separate provision which states that minors will be subjected to lesser punishments, like letting them off with a warning, decreasing the duration of suspension, and not basically publishing the name of such minor who has committed this anti-doping violation as under your Clause 27.1. The other WADA code guidelines, sir, which talks about the significance and independence and impartiality of the National Anti-Dope Agency, the NADA. However, the way in which the current bill is structured, the central government has its own say in appointing and removing the Director General of NADA, thereby breaching the ideals contained in the WADA code. I suggest that the bill should have a provision which states explicit qualification for the Director General's appointment under Clause 15, Subclause 1, sir. Director General should be a person who excels in this activity. It should not be meant for any retired officials, or it should not be meant for any political adjustments, sir. So if the bill is very clear, it makes it easier for the government to move in that direction.
And now coming to the removal of the Director General, Clause 15, Subclause 8 defines the grounds for removal as a proven misbehavior, incapacity, and then the third is such other ground. Now, the meaning of such other ground is not very clear. I suggest that the phrase such other ground be defined more specifically so as to ensure no unfettered discretion being used by the central government in the Director General's removal, sir. These are being very specific because you are reflecting the UNESCO Convention, and you emerging, India today emerging not only as a big financial strong nation, but also in the sports we are emerging as a very strong nation. So these very clear descriptions in our law makes it in tune with the various laws in other developed countries, sir. And the same analogy applies even in the disciplinary panels and appeals panel also. They face the threat of government interference. The grounds of removal are not specified in clauses 1 and 12 respectively. I suggest that these be stated in the text of the bill itself, sir. And finally, on educating the people about the demerits of doping, which spoils the athlete's career, Part 4 of the UNESCO Convention against Anti-Doping in Sports requires state parties to engage in imparting educational programs on anti-doping. It also requires states to provide accurate information on the harm of doping, to the ethical values of sports, the health consequences of doping. The government can take note of these obligations and create educational sensitization programs for the athletes. Such programs will also help prevent negligent or unknowing violations of the anti-doping bill, sir. With these, I welcome the bill, sir, and I would also like to place on record that I come from Nizamabad, where the world boxing champion Nikhil Zareen comes from. So I'm very proud that today I've been able to be part of this bill. And of course, Telangana, like rest of the country, today has been producing many wonderful sportspersons who have excelled internationally. So it is not just confined. Of course, Haryana has always been a very good example for us, inspiration for us. But today, the entire country is working on those lines. Now, keeping this in mind, the state of Telangana, the government of Telangana has also been developing and encouraging sports in a similar manner by not just through educational, sir, but also in terms of very good budgetary support. Thank you. So I welcome the bill, sir, and I congratulate the Honourable Minister. Thank you. Dr. John Britas ji. Thank you, sir. At the outset, let me salute General D.P. Watts. He has been dispassionately objective, and he even went to the extent of proposing inter-caste, inter-religious marriages to have better breeds. I don't know whether Anurag ji would subscribe to his view, and I would say that General is different, and I would appreciate it. Sir, I really wanted to dwell on the nuances of the bill. However, many of the points which I want to speak have already been spoken here. Nevertheless, we have so much of concerns with regard to the structure and who all will be part of the board, the independence of such bodies, what could be the rules, what could be the criteria, all sorts of things actually are kept in vague. Sir, I don't want to tell about the suspension of the accreditation of NDTL, which happened in 2019. Devendra was kind enough to point out that. It was a shame for us. What would the government do to avoid such a, I would say, such an incident which made us to lose our peace? Sir, we have
a prominent sports person, P.T. Usha ji here. Devendra and General were talking lavishly, talking about Haryana. They should have at least spoken about Kerala, because we have a social ecosystem whereby we promote sports. That is the peculiarity of Kerala. General Watt spoke about that. I told that he's a general with difference. He should be sitting here with us. Okay. Sir, just in July, 2 of our brilliant athletes were debarred. And sir, this bill should be providing us a window to the situation that is existing now. Our minister is ebullient, young, dynamic, though he is very active in politics also. And I would request that he should concentrate on sports little more. As much as he is so enthusiastic about the political happenings surrounding. Sir, as we all know, sports, we have no religion, caste, creed, language, color or sex. It is universal. In India, everyone loves sports. Everyone wants Indian sports persons to excel. But sir, a country with 1 billion plus population, we have certain achievements. Is that what is required now? Don't we need to, tread ahead, progress? And Anurag ji, just ponder over the budgetary allocations you have. You should be using your political clout to increase the allocation, which you are not doing. Actually, the budgetary allocation has gone down from 25 crores, it has gone down to 16 crores. This is the situation. And Khelo India program currently accounts nearly 30% of the sports budget. Sir, we need to have absolute increase and specific allocation to enhance the sports in this country. Sir, hardly 0.07% is the allocation. There are small countries like Romania, Latvia, etc., which allocate more funds. Please ask Ushaji, please ask her how much the sports person require. And I would request that you should consult her. Don't make us sit here alone. You should consult her on sports. You should use her talents also. Sir, I have a suggestion. The minister should take interest in such a way that a portion of the CSR earnings should be demarcated for the sports activities. That should be propagated and promoted. Sir, we have to catch our people at young age. That's how we had. Honourable member, we'll Sir, start I would with just come to one or two small points more. Anurag ji, we should be perturbed over the politics that are in our sports federations. We have many federations. How many federations have been derecognized due to mismanagement, lack of transparency, lack of corruption? Even in our Indian Olympics Association, one of your friends in BJP is fighting with another rival group. And too much of politics in sports bodies. Sir, 50% of the sports bodies are headed by politicians. Do you want to have that much of politics on sports bodies? I have no objection to Devendra ji becoming a sports authority. He is passionate about sports. But think about those people who do not have any knowledge about the domain of sports, presiding over sports empires, only for narrow parochial interest. You have to have a control. I know that your limitations, because some of the big wigs are presiding already over some of the sports federations. I don't want to name them, which you know that. You're smiling. Your smile gives us, obviously, an answer to the question I raised. Sir, cricket is overbearing. I have no issue. We all talk about the money they generated from the market, say about 50,000 crore. But think about other games and sports. Don't you want, we need to have a even structure in our sports culture. We don't want to neglect, we don't want to denigrate any vertical of our sports, sir. So I would request the Honorable Minister to have an awesome view. And last point, sir, sports medicine. When we talk about this doping, please understand that we got a person like Messi because his hormonal deficiency were identified when he was an adolescent. We should develop sports medicine as a counter to the doping that is happening, counter to the drugs. Thank you. And we have Ayurveda in Kerala. He just comes to meet few press persons in Kerala. He should come and meet us also.
We will suggest you the ways where you can use Ayurveda to inculcate Thank you. and to have Thank you, Honourable sports Member. medicine. Sir, the Thank you. last point I want to make is that... Your last point was 2 Last points point. back. Last. This is last. Sir, we have spectators' interest. We should not limit the sports to be something of the spectators. We should have participatory element in sports. I would request Honourable Minister to consider these points. There are so many nuances which I wanted to dwell out on the bill, but many persons have already spoken about that. So I would earnestly urge our young minister to see that something is done spectacular. Thank you. Thank you. Thank you. माननीय श्री संजय सिंह जी. धन्यवाद मान्यवर, आपने इस एंटी डोपिंग बिल पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, जब हम लोग आज इस बिल के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हमारा सौभाग्य है कि अपने जमाने की उड़न परी जिसको कहा गया और जो इस समय इस सदन में है, पीटी उषा जी, उनका भी हम सारे लोग अभिनंदन करते हैं उनके रहते हुए इस बिल पर चर्चा। मान्यवर, अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं तो जब हम इस बिल पे चर्चा कर रहे हैं तो हिंदुस्तान के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी जिनकी गुगली से अच्छे विकेट गिर जाते थे, हरभजन सिंह जी भी हमारी पार्टी के राज्यसभा, हम सब के लिए दूसरा गेंद उनकी फेमस गेंद हुआ करती थी, हरभजन सिंह जी जिसका जिक्र कर। तो मान्यवर, अनिल कुंबले की भी गुगली याद कर, तुम क्यों ले रहे हैं? नहीं, सबकी है। हमने ये कहा कि हमने अपनी पार्टी की ओर से राज्यसभा के सदन में हमने लाने का काम किया। मान्यवर, ये बिल जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक अच्छी बात इसमें लगी कि बिल स्टैंडिंग कमेटी में गया, उसके बाद जनता से राय मांगी गई, उसके बाद लोकसभा के पटल पे लाया गया और अब राज्यसभा में चर्चा में आया है। बहुत अच्छी बात है कि सघन रूप से इस बिल के ऊपर चर्चा करके कई स्तरों पर उसके बाद यह बिल लाया गया है। और जब डोपिंग टेस्ट में लोग पॉजिटिव आने के बाद उनका कैरियर चौपट होता है तो बड़े बड़े अखबारों की हेडलाइन बन जाती है, उनको खेल की प्रतियोगिता से वंचित तो रखा जाता है, लेकिन उसकी टेस्टिंग सही थी या गलत थी, उसके साथ न्याय हुआ या अन्याय हुआ, इसके बारे में फिर पूरे जीवन भर उसके बारे में कोई सोचता नहीं, पूछता नहीं, और उसको हमेशा खेल बिरादरी और राष्ट्रीय स्तर पर उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है मान्यवर। और इसमें सबसे ज्यादा जो मामला मुझे याद है मान्यवर, वह हमारे युवा होनहार पहलवान नरसिंह यादव का मामला मान्यवर। हिंदुस्तान से डोपिंग टेस्ट पास करके गए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ओलंपिक के खेल में उनको फेल कर दिया जाता है। मैं समझता हूं कि इस बिल से अब ऐसी घटनाओं से हमें मदद मिलेगी जहां पर राष्ट्रीय स्तर से खिलाड़ी पास होकर राष्ट्रीय नाडा से पास होकर खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में जाता है और वहां उसको फेल करके पीछे कर दिया जाता है। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की ओर से इस बिल का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। देश के हित में है, अच्छा है, खिलाड़ियों को इससे सुरक्षा मिलेगी। लेकिन यहां चिंता व्यक्त की दीपेंद्र हुड्डा जी ने, यहां चिंता व्यक्त की सदन के दूसरे हमारे माननीय सांसदों ने कि ये कई बार ये डोपिंग के चक्कर में लोग फंसते क्यों हैं, खिलाड़ी अतिरिक्त ताकत लेने के चक्कर में फंसते हैं। वो अतिरिक्त ताकत लेने की सोच उनके मन में आती कहां से है? क्योंकि जब वो मेडल की रेस में जब पीछे होते जाते हैं, सोचते हैं चलो किसी तरीके से मेडल हासिल करते हैं, लेकिन कई बार उनके साथ साजिश भी होती है। उनके साथ जो टेस्ट होता है, ऐसे इंजेक्शन जानबूझ के उनको दिए जाते हैं जिससे वो टेस्टिंग में फेल हो जाए। और इसलिए इस बिल का होना बहुत आवश्यक है कि ऐसी तमाम साजिशों पर, ऐसी तमाम कार्रवाइयों पर और ऐसी टेस्टिंग कर करके जो हमारे खिलाड़ियों को पीछे रखा जाता है, उससे उनको बचाया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ
क्या खेल के प्रति हमारी सरकार का ध्यान है मान्यवर? या माननीय मंत्री जी बैठे, मैं आपके माध्यम से बड़ी विनम्रता पूर्वक उनसे पूछना चाहता हूं, 130 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में आप अच्छे खिलाड़ी कैसे बनाएंगे जब आप खेल का बजट मात्र 3000 करोड़ रुपए रखते हैं? 3000 करोड़ रुपए का बजट आप 130 करोड़ की आबादी में रख रहे हैं। और 2021 में आपने खेल का बजट कम किया, इस बार थोड़ा बहुत आपने बढ़ाया। तो खेल को इतने उपेक्षा भाव से क्यों देखा जाता है? खेल के ऊपर हमारा बजट क्यों इतना कम रहता है? खेल की तरफ हमारी सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता? और जब आज एंटी डोपिंग पे आप चर्चा कर रहे हैं मान्यवर, पूरा देश हम लोगों को सुन रहा होगा और खास तौर से हमारे वो नौजवान सुन रहे होंगे जो हरियाणा के गांवों में, उत्तर प्रदेश के गांवों में, बिहार के गांवों में, पूरे देश के अंदर दिन रात सुबह 4 बजे उठ के शाम तक मेहनत करते थे कि उनको देश की सेना में भारत के लिए मरने मिटने का मौका मिलेगा। उनको भी आपने बगैर डोपिंग टेस्ट के फेल कर दिया। उनको तो बगैर डोपिंग टेस्ट के आपने फेल कर दिया। भारत की सेना में जिनके मन में जाने का जज्बा था, यह अग्निवीर योजना लाके, यह 4 साल की योजना लाके उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया आपने। मान्यवर, मैं आप लोगों से, आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूं, कभी आइए देखिए और खेल को बढ़ावा कैसे दिया जाता है। खुले मन से आइए खेल मंत्री जी, चलते हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, जहां अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने मिलकर सरकारी स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल का निर्माण किया है। सरकारी स्कूलों के अंदर हॉकी के ग्राउंड बनाए हैं, एथलीट के ग्राउंड बनाए हैं, वर्ल्ड क्लास हॉकी के ग्राउंड बनाए हैं, जहां पर बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन तैयार करने के लिए मिशन एक्सीलेंस की योजना दिल्ली की सरकार लेके आई। और केजरीवाल जी की सरकार कहती है खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा मदद, आर्थिक मदद की जरूरत तब होती है जब वो उसकी खेल की प्रतिभा को निखारना होता है। आप मदद कब करते हैं? कोई ओलंपिक में गोल्ड पा गया, कोई सिल्वर पा गया, कोई एशियाड में मेडल पा गया, उसके बाद कई राज्य सरकारें उसके पीछे कोई 20 लाख, कोई 50 लाख, कोई 1 करोड़ के सहयोग देने के लिए होड़ लग जाती है। लेकिन जो खिलाड़ी संघर्ष कर रहा होता है मान्यवर, जो खिलाड़ी मेहनत कर रहा होता है, जिसके खेल में प्रतिभा है, जो ओलंपिक में गोल्ड पा सकता है, सिल्वर पा सकता है, ब्रॉन्ज पा सकता है, जो एशियाड में मेडल पा सकता है, उसकी मदद करने के लिए क्या योजना है? ये योजना दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लेकर आई। और मिशन एक्सीलेंस में हम दिल्ली के खिलाड़ियों को, प्रतिभावान खिलाड़ियों को, जिनके अंदर संभावना है खेल के अंदर बड़े बड़े खेल प्रतियोगिताओं में मेडल पाने की, उनको 16 लाख रुपए तक की सालाना मदद करते हैं मानवर, 16 लाख रुपए तक की। और दूसरी दिल्ली सरकार की योजना है मानवर, प्ले एंड प्रोग्रेस की योजना। प्ले एंड प्रोग्रेस की योजना, इसमें ऐसे बच्चों को हम लोग तैयार करते हैं जो आगे चल के अपने बचपन से ही खेल के अलग अलग खेलों में, जिसमें उनकी विधा है, जिस खेल में वो अच्छी प्रतिभा रखते हैं, उनको मदद करके उनको आगे बढ़ाना और उनको मेडल के लिए तैयार करना, उनको बड़ी बड़ी खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना। और दिल्ली की सरकार ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई सर, खेल का विश्वविद्यालय। और ये अपने आप में एक ऐसा अनोखा खेल का विश्वविद्यालय है जहां खेल को ही उसकी पढ़ाई मानी गई है, खेल को ही उसकी डिग्री मानी गई है, खेल को ही उसका जीवन माना गया है। वो अलग अलग खेलों में जिसमें भी वो जाना चाहता है, उसके खेल के हिसाब से उसको स्टेडियम उपलब्ध कराया जाएगा, उसको मदद की जाएगी और उसको हॉस्टल की सुविधा, खाने की सुविधा, रहने की सुविधा, खेलने की सुविधा, उसके खेल की प्रतिभा को ही उसको डिग्री माना जाएगा। ऐसा खेल का विश्वविद्यालय दिल्ली की सरकार ने, केजरीवाल जी की सरकार ने बनाया। तो इसलिए मान्यवर, हमने दिल्ली के अंदर खेल को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। मैं फिर से बात करूंगा कि ये जो खेल का बजट है, ये ऊंट के मुंह में जीरा है। इस बजट को बढ़ाइए। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अर्जुन बेच के कहीं मूंगफली बेच रहे हैं, कहीं चाय की दुकान लगा रहे हैं, कहीं ठेला लगा रहे हैं, कहीं सब्जी बेच रहे हैं। ये जो खबरें आती हैं मान्यवर, ये दिल को दुख देती हैं, तकलीफ देती हैं। मैं जिस उत्तर प्रदेश से आता हूं, वहां की आबादी 24 करोड़ की है और उस 24 करोड़ की आबादी में मान्यवर, जब हम पढ़ते हैं ओलंपिक का मेडल, एशियाड का मेडल, कॉमनवेल्थ
कॉमनवेल्थ का मेडल और उसमें हमारे प्रदेश का नाम नहीं होता तो हमें तकलीफ होती है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि खेल की ओर ज्यादा ध्यान दीजिए, खेल का बजट बढ़ाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। Thank you, Mr. Sanjay Singh ji. Now, Srimati P.T. Usha. Please. 238. 238. Yeah. A member while speaking shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending. Yeah. He was referring about Agniveer and Agniveer matter is pending with the Supreme Court. So, मैं आग्रह करूंगा कि इसको नहीं है, वो सब जुडिस है, वो मामला। Please. सर Sushil, no. ये मामला Please sit down. 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 Yes, raise the point of order. You please sit down. Sir, it is very clear, sir. Kindly sit A down. member while speaking shall not refer to any matter of fact Sushil ji, on please. which a judicial Sushil ji, decision you is need not pending. repeat. It will be examined by the chair. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Excuse me, you please sit down. You please sit down. One more. Minister. Sir, I didn't want you to intervene. I'll reply in detail later. But I just wanted to apprise the House because the Honorable Member right now mentioned about Uttar Pradesh. I just want to say, इस देश में केवल एक राज्य ऐसा है जिसने अपने ही राज्य के एथलीट्स को टोक्यो ओलंपिक्स के बाद सम्मानित नहीं बल्कि देश भर के जितने एथलीट्स मेडल जीत कर आए थे उन सबको सम्मानित करने का काम किया, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी ने करने का काम किया। तो ये हाउस पे थोड़ा रिकॉर्ड स्ट्रेट रहे। मैं सारे बातों का उत्तर बाद में दे दूंगा, मुझे उसमें कोई चिंता संकोच नहीं है। Thank you. Srimati P.T. Usha. Please. Respected Honorable Chairman, sir. Honorable Vice Chairman, sir. My most respectable gurus, mentors, and fellow members of this august house, as today is my maiden speech, I hope you consider me as your humble sister, and I also hope you will forgive me for any mistakes in my speech. Sir, with all your blessings, let me begin my speech by paying homage to all our freedom fighters, our soldiers, policemen, and all the great noble-hearted individuals who had laid down their lives for our nation. It is because of their sacrifice and everyone who are in service of our nation that we are now living a loving and peaceful life. It is because of their service that has made the very foundation of this great nation that we are able to enjoy the freedom which is given to us, and hence we also have commitment towards our nation. As nominated Rajya Sabha member at age of 58, I am grateful for the good fortune of taking my first step in the temple of democracy. I took oath on 20th July in the name of God to uphold the constitutional values, and all those days, like a grade 1 student, I have been watching the proceeding of this sacred house. I also had the great opportunity of representing my country in more than a few hundred events as part of my sports tapasya. I would like to look at the democratic process of post-independent India through the open eyes of an athlete. Since independence, we have been providing various facilities for improving our sport. Our proud sports personalities have achieved rare achievements in hockey, wrestling, and football at Olympics venues. Our sportsmen have several achievements that inspire the younger generations in athletics, tennis, and other sports. Hockey legend Dhyan Chand and his team, Mevalal ji in football, K.D. Yadav ji in wrestling, Ramanatha Krishnan and Amritraj brothers in tennis, the mighty Milkha Singh ji in athletics, and though India's first female Olympian Mary D'Souza ji. All of them are our true legends. We have achieved great feats in 1980s,
but later on, unfortunately, we lost the upper hand in hockey, football, and wrestling. With the 1983 World Cup trim, the prestigious of our nation in the field of cricket has risen once again, such that we were the world champions in another major sporting event after hockey. In the 1960 Rome Olympics, we lost the medal of Milkha Singh Ji by fraction of a second, and it was repeated once again in 1984 with a difference of 1/100th of a second. Thereafter, me being a girl from the remote place of Payoli in Kerala, a village without any facilities to pursue my sporting dreams, met the spoke for the first time to the then Prime Minister, late Srimati Indira Priyadarshini Ji, which was of the most precious moment of my life. Then, by running up to year 2000 and training my younger generation till yesterday, this devotee has dedicated herself to the betterment of sports, Indian sports, and once again had the rare privilege of meeting Honorable Sri Narendra Modi Ji, the most admired Prime Minister among the world nations. All the while we can count the achievements of our nation in the field of sports since 1984. We embraced the sports as a self-criticism as there was no overall growth. I wish to mention that our achievements in athletics, tennis, weightlifting, cricket, chess, billiards and snooker, badminton, boxing events are huge. From the time when our beloved Vajpayee Ji became the Prime Minister until 2014, only a few silver stars were seen performing at bigger stages. In terms of infrastructure developments, in addition to things such as training grounds, conditioning facilities, and improved diets, better treatment facilities were not adequately available then until come 2014. In the 1980s, I used to travel from Payoli by train for up to 4 days to reach Delhi to work out on athletic tracks. But now I am happy to state that after 2014, our country has been making enviable progress in various fields, including unparalleled achievements in field of sports. And that is why today's generation and experiencing district to district better training facilities in varieties of sports. Facilities such as synthetic tracks, swimming pools and gymnasiums and other amenities are being made readily available. The new generation sportsmen are now getting better coaches, scientific diets and resting facilities. But there is one department which needs more emphasis, and that will be the field of sports medicine and sports science. The front-running top 10 nation in the field of sports and Olympic has backing of modern sports science technology and support of sports medicine system. Injuries are an inseparable part of the sports, and the Department of Sports Science and Sports Medicine has an important role to play in helping sports personalities recover from injuries as fast as possible in bringing them back to training in a short period of time. Unfortunately, in our country, this branch is still in its infancy. We need to have immediate and special attention to this sector. This is the time to become self-reliant, and in those terms, I strongly suggest that sports science, sports medicine and coaching should come under the scheme of our beloved Prime Minister, Sri Narendra Modi Ji's dream project, Atma Nirbhar Bharat. Now, all this has been mentioned only as an introduction, but on the contrary, over the past 20 years, there has been general tendency towards doping, or what we can call as an abuse of performance-enhancing drugs and steroids. According to today's statistics, India ranks third in the number of individuals who have been tested positive for steroids and punished for doping. In this context, the nation which is ranked 1 in the number of individuals tested positive for steroid has already been excluded from the world sports by other countries. I wish to mention that this serious concern which need to be addressed immediately. We are yet to open our eyes to abuse of doping in our country.
which was once earlier confined only to the senior national levels, has now reached the juniors, college and school level, which is serious concern that need to be addressed. When talented sports individuals are abusing performance enhancing drugs, they are not only sacrificing their career and life for short-term benefits, but they are also spoiling the talents of upcoming sports individuals who work very hard to improve their performance levels. In addition to, they are also tarnishing the image of our country among other nations, and through this, we are also destroying the dignity and legacy of our ancestors that worked very hard for it. To control this alarming situation, with the special interest of our sports minister, the Lok Sabha has passed the anti-doping bill last week. While this phenomenon can be controlled to some extent through legislation, yet still more effective measures are impressive and needed to be taken. We should create awareness about the abuse of performance-enhancing drugs in sports among athletes, coaches, and parents, and there should be no delay in taking timely action and appropriate ban against those who test positive of doping. At the same time, the activities of National Anti-Doping Agency, NADA, should be accelerated and should be given the freedom to operate without any other obstacles. National Anti-Doping Agency and the National Dope Testing Laboratory in New Delhi should get necessary financial freedom, and all competition must be brought under the watchful eye of NADA. And not only for the competition, but also for the preparatory time also should be tested. For instance, in a competition with the participation of 800 athletes, the NADA authorities are used to come up with just 10 anti-doping kits, and it can be undoubtedly said that such measures are happening because of the financial constraints and lack of adequate manpower. It is only through the timely interventions of our legislatures, state these people and the people of representatives who should be more assertive regarding matters related to sports and should be every means ensure that a better opportunity is created for our sports individuals to showcase their true talent and potential among world nations. If the motto prevention is better than cure is implemented scientifically and educatively in the field of sports, and we as a nation which has always dreamed big and hoped good for our people, I can indefinitely say that in the next 10 years, we will become one of the top 10 sporting superpower among the countries of the world. I wish to mention that we have reclaimed the Olympic medal in 2020, which we had previously missed in 1960 and 84. Now let us give support to our upcoming sport talent by all means and respect so that they can compete vigorously in the upcoming Olympics and World Championships and win with the flying colors so that millions of Indians living in other countries and our Bharat can stand with their heads held high. Today's faith is the strength of tomorrow. On this note, let us all work for the betterment of new and strong India. Let me conclude my speech by extending my heartfelt gratitude to our beloved Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, who is very keen on development of sports in country. As a daughter of Bharat Mata, I bow my head before her and wish that I could serve this nation for the betterment of sports. Thank you, Honorable Chairman, who gave me this opportunity. I thank everyone once again from the bottom of my heart. Namaskar. Thank you, Srimati Piti Usha. Now, Dr. Fausia Khan, 4 minutes. Why 4 minutes, sir, to me? Members or more. Anyway, thank you very much. Sir, I would like to begin by first welcoming this bill and saying that my family is a great fan of Sachin Tendulkar and Sunil Gavaskar, sir. Like millions of other families in our country and even outside our country, particularly the youth,
not because they have been successful sports persons, but simultaneously also because they are icons and an inspiration of what the field of sports has groomed them into as human beings: righteous, disciplined, determined, humble, punctual, hardworking, unbiased men of integrity. So generally people thrive to become like their ideals and adopt their ways of life. The current expansion of the field of sports itself may be attributed to this idealism. There are thousands of such icons who are role models for the youth. Sports is a field that inspires love, affinity, and brotherhood. And the general behavior of great sportsmen impacts the way our youth think or perceive life. While discussing this bill, this must be kept in mind, that while addressing the issue of doping in sports, we are also trying to address the value system in our youth. Sir, righteousness has always been a part of Indian tradition. I think most misguided sportspersons are not introduced to doping when they reach international level, but they are introduced to doping much earlier, when they participate in state or national level competitions. And that is where our focus must lie. This is necessary. Therefore, I thank the Minister for having brought in this comprehensive bill, which covers not only sports, but also gives a message that values matter, not only for the is a definite indicator of the growth of the nation. I must congratulate our young Minister, Anurag Thakurji, for his vision, dedication, and contribution, and for the fact that we are winning medals after medals in various competitions during these days. I have some suggestions that, like amphetamine and steroids, have been evolving even from before the 1940s with the evolution of the pharmaceutical industry, and rules and regulations also have been simultaneously evolving. Also, sir, changes are coming in accordingly in the World Anti-Doping Code. At the same time, masking drugs are also being developed in the natural course of evolution. Therefore, as I think you have thought about, awareness programs are very, very important. They are already being carried out, but many more are needed. Sir, I'll just give my pointers because I have less time. I feel that we need to carry these awareness programs at all levels, not just at national or international level, but state level, district level, down the line, because that's where the program begins. And we have a very well-established network in the nation. This network is the associations, the federations, the clubs. I think they should be included in this, because this network percolates down to the taluka level, sir. So before every competition, a session and a certification on anti-doping must be made mandatory as a precursor for the permission of the competition to the association, sir. If that is done, the association becomes accountable to ensure that awareness for anti-doping is carried out by them. Also, sir, screening. Screening is not only necessary at the international level, but also down the line to the district level. So just give me 1 minute. Because you have mentioned a big lab which is worth crores of rupees, but what we need are little micro labs, mobile labs, or like simple glucometers that we have to check our sugar. In the same way, if we can screen out doping at the little lower level, that would be, and if made mandatory for the associations, this would produce very good results. So guidelines must be circulated. Accountability of coaches, accountability of associations have to be ensured, and we have to be, looking at the last point is that off-the-shelf drugs that are available, especially the powders, the proteins, the whey proteins that are available in the Yes, Dr. for the gyms, please.
Sir, I think the performance enhancers, the dietary supplements, all this should be looked into. I have much more to say, sir, but I will only end by saying that, you know, where there is a computer, if you detect the virus, detection is not our aim. You may detect the virus, but the virus has to be cured, and that cure has to be our aim. Thank you very much. Thank you very much. Now, thank you, Dr. Fawzia Khan. Through G.K. Watson. Sir, the bill proposes the amendments in accordance with the World Anti-Doping Agency Code. 2-3 short points, sir. One, the personal data protection of athletes who are suspected of illegal possession, use of trafficking of drugs is missing factor which has to be looked after by the Honorable Minister. Because if they are suspected and later proved innocent, their privacy remains violated and they suffer social stigma. Therefore, I request the Honorable Minister to kindly look into this important aspect. Number two, sir, there are many instances when athletes have tested positive for banned drug use for no fault of their own. Sometimes they are found to have taken those drugs as part of their regular medicine prescribed by their own doctors. Sometimes the drug from their nutrition supplements. Sir, I feel the need to create proper awareness among sportspersons, coaches, doctors who specialize in sports medicine and other stakeholders to doubly check what medicine and nutrition supplements they take. Another important point, sir, the World Doping Code states that the protected class of athletes, which includes athletes below 16 years of age, among others, may be given reduced penalties, punishments or ban periods. This bill does not make any distinction, sir, between minor and major athletes. I hope when the Minister takes care of it while framing rules under the Act, this will be definitely taken into care. Regarding the laboratories, sir, there is a need for setting up laboratories in each state. It is a welcome suggestion and will go a long way in speedy disposal of cases. I urge the Minister to take this suggestion because a large number of younger people today in the country are taking up sports as a career and way of life than a hobby or a part-time occasion. Sir, to conclude, we are already seeing the results of various initiatives taken by the Minister under the guidance of our Honorable Prime Minister in the form of Khelo India and other schemes for promotion of sports, fitness and healthy awareness in the country. The results of medal wins from our World Athletics Championship and Commonwealth Games are very encouraging, and we are on a course to become sporting superpowers, sir. With these words, I support the bill. Thank you very much. Thank you, Through G.K. Watson. Mr. Abdul Wahab wants to leave early. If the House permits, we could, please. Yes, if the House permits. Because yes. Janab Abdullah. Yeah, sir, first of all, I support the bill. But I got a revelation today that sports and games started in India after 2014. It is not coming, it is an evolution. One cannot come to what you call in the Olympiads, in the Commonwealth, overnight. It is an evolution. It is done by so many governments, not only from 2014. It was there a lot of governments, Vajpayee government, before that, Monsoon Singh and all. It was a concerted effort. So it came. Now the fruit is coming. And under Anurag Thakurji, we are very happy that every day we can see so many medals. But one thing to our sports minister, when he visits our state, you should see other people also, not only some editors,
some sect of people. You should make use of that time for just like our neighboring MPs or neighboring sports people and all. I wish next time Anurag Thakurji will give us, and not us, only other editors also, an opportunity to meet you. Sir, as per records with 152 anti-doping rule violation, India ranks third among the world's biggest doping violators. Major doping violation happens in the field of weightlifting, 25 cases, athletics, 20 cases, wrestling, 10 cases, followed by boxing and judo. Every time the athlete comes up with an exceptional performance out of the blue and ahead of a team in the selection meet, the chance of that athletic testing positive high. It is believed that a major reason for athletic dope is their wanting to register a high performance on the basis of which they can get jobs and incentives. However, there are many natural biological cases of high testosterone level and other where sports people are innocent. The increasing number of privately sponsored prize money, marathon and cross-country runs in India is also a source of doping temptation for athletes. In many cases, the coaches are also responsible for their casual approach. My suggestion is frequent testing of the sports person, creating more awareness and integrity campaign amongst sports person to feel responsible. And I agree Mr. Vasan's proposal to have every state these labs and all. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much, Abdul Wahab. Now, Sri Kanaka Meddala Ravindra Kumar Garu. Thank you, sir, for giving this opportunity to speak on this bill of National Anti-Doping Bill. Sir, I wanted to deal with these some provisions. Firstly, my submission is with respect to definitions. There are almost 35 definitions are there, out of which 20, ZA, ZB, ZC. This is prohibited list, prohibited method, and prohibited substance. The definitions are there, but that list was not set to the bill. That is a lack of, once it is defined, it should be annexed to the bill. That was not done. Coming to the section, clause 5, where any substance or method is included in the prohibited list and such prohibited substance or prohibited method is required. Without any list appended to this bill, it is not possible to invoke the provisions of clause 5. So it is better to attach the list, though there is an acting power and frame the rules by the government, but it is better to not to deviate from the original bill, better to annex it. Coming to the section 7 and clause 7 and clause 12, with regard to the appointment of national board and also the appellate authority under clause 12, qualifications have already been specified with regard to who is the person to be appointed as a national board member or the chairman, likewise appellate board also, appeal panel also. But whereas clause 15 deals with director general shall be appointed by the central government and person integrity. But there was no specific qualifications were mentioned, rather eligibility, required qualifications were not specified under 15. Apart from that, clause 8, 15, subclause 8 deals with the power of the central government to remove the director general without even before the expiry of the time. So that power takes away the independency of the body. It cannot be taken into consideration for the purpose of the directions in order to implement these provisions. Coming to the other doping control process, clause 19 deals with power of entry, search and seizure. This is under Criminal Procedure Code. The body, almost as the body is constituted under this bill, is a quasi-judicial functions are there. If that is there, specifically a legal knowledge also to be exercised in order to, when the investigation process is going on, power of entry, search and seizure also exercised carefully, but that was not specified in clause 19. Coming to the clause with regard to the, sir,
National, under clause 26, National Dope Testing Laboratory is constituted. WADA in September 2018, that is in World Anti-Doping Agency, is identified. It also includes one of the important sampling procedures, and also WADA banned NDTL. NDTL test is also constituted by the laboratory before this bill, but it is not in compliance with the international standard labs prescribed by the WADA. Sir, let me give an example for the proficiency of the NDTL. NDTL has given negative reports in 6 cases. Then WADA sent the samples again, accredited monitored lab in Canada, which found all of them to be positive. So all 6 Indians involved were suspended. So they not only disrepute the NDTL, but also the Indian sports. So testing laboratories constituting also is very important. Clause 26 deals with the power of the government to constitute it. But as far as these laboratories are concerned, it functions. One more point, sir. Coming to the example, sir, in the 2019, maximum positive samples 225 out of 4,000 samples were reported in our country. Yes, thank you. So in view of the taking into consideration, some precautions I would have taken. Thank you. Take the suggestions made by them into consideration. Thank you before very passing much. it. Thank you, sir. Dr. Thambidore. Thank you, Vice Chairman, for giving the opportunity to speak in the bill. Our ADMK party is supporting the bill which is piloted by our young man, sports minister. As others said, not only is active in politics, he is also active in sports. Previously also he headed many programs we know very well. Therefore, I am congratulating him. Our Honorable Prime Minister appointed him as a sports minister, and also at the time when he assumed this office, his own Commonwealth Games going on in London, UK. India shows good performance and we're getting good medals. Therefore, it is a credit for him, which he now is heading there, sir. Sir, regarding this anti-doping bill, we know very well why this has to come brought by the Parliament to enact. I was a member, I'm also a member of the Education Committee. We discussed thoroughly, and I need not necessarily to elaborate because our opinion also given to the government. 91 state parties. Therefore, when all see that TBS established National Board of Anti-Doping in Sport and provides for its composition, powers and functions. In that, sir, many members raised their objections regarding the establishment of this board and heading, who is heading at board also. The heading the board said already, sir, we are winning, autonomous is given. We have seen there are malpractices sports, many boards. That is why many members objected that the sports there are so many cases against boards, regarding boards. Because this board, when the government is taking over, because it is responsible to the government means the parliament, we are enacting the law. We are the members of that. If anything, things happens, we can have the right to raise the issue in the parliament, and the minister responsible to answer for that. Therefore, government giving the empowerment in government to appoint the director, and also whenever any problem removes that, there is no anything objection. I am no objection. That is. This is what discussed in the committee also. When we discussed in the standing committee, we made it clear that this is correct decision. We have the power to the government to appoint the board chairman, and also if any complaint comes, they have your right to remove also. That is what we said, sir. Regarding, as others said, because when we are taking medicines are not purposely, drugs are not purposely taken in sports, sometimes some people are misusing that. That is the fact. At the same time, without the knowledge, they are taking some kind of foods and everything. It may be in that, there may be that. For that, it cannot be punished. For giving that proper information and guidelines for them, this is what they said, the others all said. The committee has recommended emphasize on the need for opening more drop testing laboratories in the country, preferably
one in each state to cater the need of the country and to also become a leader of the Southeast Asian region in the areas of anti-doping research. That is why, sir, I am supporting the bill. I don't want to much of the time. You know very well, now time is coming. You have the Yes. time. Very good, very good. Speech. Thank you very much. Thank you, Dr. Tambidurai. Dr. Anil Agarwal. Thank you, Chairman Sahab. 5 minutes, please. How much? 5 minutes. Thank you, sir, giving me 5 minutes time. राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी विधेयक 2021 लोकसभा में 17 दिसंबर 2021 को इंट्रोड्यूस किया गया था और इस विषय की महत्ता को समझते हुए माननीय स्पीकर लोकसभा और माननीय चेयरमैन राज्यसभा द्वारा इसको स्टैंडिंग कमेटी के लिए रेफ़र किया गया। बहुत वृहद चर्चा हुई, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया गया, डिफरेंट फेडरेशंस को बुलाया गया और न्यूज़पेपर में भी इसके लिए एडवर्टाइजमेंट दिया गया और उन सब के वृहद डिस्कशन के बाद जो स्टैंडिंग कमेटी ने अपने रिकमेंडेशंस दी थी उसको अधिकांश को सरकार द्वारा स्वीकार किया गया और उसी के आधार पर अब ये बिल राज्यसभा में आप सबके लिए इस पर अपने विचार रखने के लिए और इसको पारित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। मुझे खुशी है कि इस सदन के सभी सदस्यों ने, चाहे वो किसी भी दल के हों, इसका समर्थन किया है। प्लीज। और अधिकांश सदस्यों ने राजनीति से ऊपर उठकर इसका स्वागत किया है। माननीय महोदय, मैं एक चीज़ और आपकी संज्ञान में लाना चाहता हूँ। 2014 के बाद स्पोर्ट्स में इस देश में बहुत क्रांतिकारी कदम उठाए गए और उन्हीं कदमों का आज ये असर है कि देश में मेडल्स की तालिका बढ़ रही है, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हों, चाहे दूसरी विश्व स्तरीय प्रतियोगिताएं हों, चाहे ओलंपिक की प्रतियोगिताएं हों, सभी में भारत बहुत अच्छा कर रहा है। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो स्पोर्ट्स में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ थीं या ऐसी बहुत सारी नियम थे जिनके वजह से स्पोर्ट्स फेडरेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आती थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन सब को देखते हुए नेशनल स्पोर्ट्स कोड लागू किया जो राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो गया है और उसकी वजह से बहुत सारी जो स्पोर्ट्स में दिक्कतें आती थी वो दूर हुई हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी राज्य सरकारों ने नेशनल स्पोर्ट्स कोड में जो प्राविधान हैं उनको अंगीकार नहीं किया है, तो अगर ये स्टेट लेवल पे भी होगा तो इसके बेहतर परिणाम आएंगे। महोदय, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पूर्व में क्या होता था कि कुछ परिवार या कुछ ग्रुप्स जितनी स्पोर्ट्स फेडरेशन थी उन पे अपना कंट्रोल कर लेते थे। आज नेशनल स्पोर्ट्स कोड लागू होने के बाद उसमें किसी भी व्यक्ति के लिए एक टाइम फ्रेम बना दिया गया है कि प्रेसिडेंट मैक्सिमम 3 टर्म रह सकता है, सेक्रेटरी 2 टर्म रह सकता है और उसके बाद कूलिंग पीरियड की अनिवार्यता है। इन सब चीज़ों से स्पोर्ट्स में बहुत पारदर्शिता आई है और पहले जो एक ये आरोप लगता था कि बहुत सारे प्रतिभावान खिलाड़ियों को उनकी उचित जगह, ये जो एक फेवरेटिज्म चलता था उसकी वजह से नहीं मिल पाती थी। मैं आपका ध्यान माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कुछ शुरू किए गए खेल प्रोग्राम्स के बारे में बताना आपको चाहता हूँ। खेलो इंडिया एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी, जो हमारे पहले स्पीकर थे, तारीफ़ की है। कुछ लोगों ने पार्शली तारीफ़ की है, लेकिन ये एक वास्तव में ऐसा प्रोग्राम है जो इस देश के लिए आने वाले समय में वरदान साबित होगा और मुझे निश्चित रूप से इस बात का पूरा यकीन है कि 2028 के ओलंपिक में भारत की जो पदक तालिका है वो डबल होगी। जहाँ तक वर्तमान बिल का प्रकरण है
तो इसमें जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है और हमारी भारत की नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी हैं, दोनों के बीच बेहतर समन्वय होगा। और निश्चित रूप से जो कुछ साथियों द्वारा उठाया गया है कि नेशनल लेवल पे कुछ प्लेयर्स जिनका कि टेस्ट नेगेटिव था, जब वो वर्ल्ड लेवल के उसमें गए तो उनका पॉजिटिव हो गया और उनको एक बहुत ही असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। मेरे कुछ साथियों ने हरियाणा के बारे में बहुत बढ़ चढ़ के बताया है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हरियाणा और केरल बहुत आगे है, लेकिन मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में इस वर्ष पिछले लगभग 2 वर्षों में काफ़ी काम हुआ है। और मेरठ में हमारे नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे शुरू की गई है। और जो पिछले बार जो खिलाड़ी हमारे जीत के आए, उनको लगभग 4-4 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिए गए हैं। मैं एक चीज़ और आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी हमारे एक आम आदमी पार्टी ने, सर ओनली आई विल टेक 1 मिनट, बहुत फ़ख्र के साथ ये कहा कि साहब हरभजन सिंह जी हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं जो गुगली फेंकते थे। मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि पहला ओलंपिक सिल्वर मेडल विजेता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है और राजस्थान से आता है, फौज से आता है। आप समय की बाध्यता है, मैं केवल कुछ बजट पे भी लोगों ने कहा था। निश्चित रूप से स्पोर्ट्स का बजट बढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि आज तक जो पूर्ववर्ती सरकारों ने बजट दिया था स्पोर्ट्स के लिए, उसको काफ़ी अधिक बढ़ाया गया है। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर अनिल। श्रीमती मौसम नूर, डॉक्टर अमर पटनायक। Thank you, Chairman, sir. Sir, as I stand here to speak on this subject, I am very proud to be speaking about a sector which is very close to my leader, Honorable Chief Minister of Orissa, Naveen Patnaik. The entire House, and I am sure the Honorable Minister, would join me in recognizing the kind of impetus he has given to hockey in this country. After 41 years, India got a medal in the Olympics because of the impetus that was given to hockey by adopting that particular sport by the state government for 10 years. And now the same kind of fillip is being given to other sports like football, like women's sports, several other sports. So it's very close to the heart of our state. And when people applaud the the medal tally of, let us say, Haryana and Kerala, people forget that this is the new kind of incentive and incentivization that is required to be provided to sports in India. We have 17 AstroTurf being developed in the 17 blocks of Sundargarh district, because that's considered as the cradle of hockey in the entire country. This is the kind of incentive we have to do for, both in the infrastructure side and for sportsmen. Now, before I come to this topic, I must compliment the Minister that what he has brought to the House currently is something which is not only timely, but it would actually pitch India at a level higher than countries like Russia, countries like Italy, who are now topping in the world in terms of doping activities. We were inching closer to them. So this is a structure which has come in to make us more credible in the international sports arena, and therefore I support the bill. I compliment the Minister for bringing this bill. Before I get into some of the details which will come by way of suggestions, I would first make a broad comment about the design of this bill. And I would strongly urge the Honourable Minister to consider this. One of the most important aspects of this bill is the anti-doping testing laboratories. And they are listed under Chapter 7, Miscellaneous, Section 26 and Section 26(1), 2 and Section 27. Don't you think that this is the crux of the entire thing? Because our national laboratory was de-recognized.
And therefore, this should actually find place of prominence as a prominent chapter otherwise in the entire design of the bill. And you could consider asking your ministry to look at this, because otherwise it doesn't give the preeminence that is required to be given to such laboratories. I will come to another point relating to the design of the bill once again, and that is the provision relating to the appeals panel, which says that the panel will consist of chairperson, a retired High Court judge, and a vice chairperson, a legal expert, and 4 members, medical practitioners. Now, there is a reference to medical practitioners in the entire bill. The point is, who is a medical practitioner? It's a very broad field. I think sports doctors or sports medicine, those who practice that should be categorically mentioned here, and those are the people who should be coming in here. Secondly, I have statistics, and it is very glaring that the International Journal of Pharmaceuticals, it has published in 2017 a report which says that out of 162 formulations, Ayurvedic formulations, which were tested, 16 had the presence of substance prohibited by WADA. 16 had presence of substance prohibited by WADA. Now, many of us, including our sportsmen, I take Ayurvedic medicines, I take homeopathic medicines, and we have cases here. I have a case here where the athlete said that she had taken that particular medicine thinking that it will increase her long-term immunity. Now, this is not covered in the entire provision of the Act. We cannot really cut and paste what the WADA has said. Our realities, Indian realities, are different, and that has to be factored into this particular provision. And therefore, my suggestion to the Honorable Minister is that we have the National Medical Commission, which has been set up now with 3 different verticals, one for allopathic, one for traditional medicines. If you have a representative from there in this appeals panel, then even if it is a question of having somebody taking the traditional medicines, he can evaluate it properly instead of blindly banning that particular athlete. The athlete's life is very small. Now I will come to some very concrete suggestions, sir. This is relating to awareness. Many of us have spoken about it. Many speakers before me have spoken about it. I would like to refer to one famous Cuban athlete who is the only athlete to have won the 400-meter and 800-meter Olympic in 1976. He says that you can tell your athletes, you tell your sportsmen, co-sportsmen, several things, but it is very important to have a policy for educating against doping. Awareness has not got the prominence that it is required to be given in the particular design of the Act. And this, I think, if it can be brought to the rules, I would strongly recommend that this could be done. Awareness is very important, because many of our sportsmen belong to communities or belong to families who are not that literate. So to expect them to know about the formulation of something that is being administered to them is actually very, very, tall thinking, I would say. The next point which I would like to mention is providing some kind of a legal aid to our athletes. Our athletes, if they are tested positive by various layers, then there is no how do they meet the legal challenge? So some kind of a legal aid assistance scheme should also be worked out for our athletes. We must realize that ultimately the bill or anything that we do for sports, the primacy should be given to sportsmen and not to policymakers. And therefore, everything should be done in keeping the interests of sportsmen in mind. The next point that I would like to make is relating to data protection. I think Honorable Basanji talked about it, but he said that there is no mention of it. Actually, there is a mention of it, and very strangely, the mention says that it would be made public. It is being legalized, legislated. I think that's a very retrogressive step, because until and unless the athlete has exhausted all chances, her or his name should not be disclosed to public. That is a change that I think has to be brought in. The last point that I would make with the minute that I have is relating to
facilitating the therapeutic use of exemptions. I think the athletes have to go through a series of processes which are very difficult. They would rather train rather than go for this process. I think that could be simplified, and this simplification is possible if you can have some kind of a certification that this particular formulation is dope-free. You can ask pharmaceutical companies who are giving these tablets or giving these medicines to have this certification mentioned. And I think with the kind of impetus that we are giving everywhere to sports in the country, there would be pharmaceutical companies who would go in for this. We could actually attempt to try that. Thank you, Doctor. So last minute, the point is relating to the selection process. The selection process of the Director General, many people have talked about many things, but I think the most important thing is at least a minimum qualification could be mentioned. You may not, because the government has the right to appoint, and the process of removal, it is there in all the government organizations, but minimum qualification could be mentioned so that, sports persons are not relegated to the background, as has been the allegation against Indian sports all this while. Thank you, Doctor. Thank you so much, sir. Thank you, Doctor. Now, Sri Binay Visham, 4 minutes. Thank you, sir. Sir, occasions may come, maybe rarely in the House, but the House feels to be united with a common mind, with a common view. And this is such a day for us. A day that we devote our time for sports and for the values of the sports. That too is brought by a young minister. I would like to reveal it here that from the first day when I came to the House, Anurag was my close friend, even though very young to me. And we had excellent occasions where we quarreled also, we debated. We had big debates among us each other. But still I have a love to him. I believe he too has it with me. Sir, in this House we had P.T. Usha, the power of the country. And I am very energized to say that we all knew her since so many years, since her school days. I don't know whether she remembers. I went to her house in Payoli when she was a school student, when she won the first medal in the school games. Since that days, Usha was so dear to us. Our state and our people used to call her the Payoli Express. She used to run on the beaches of Payoli. Near the house there was a beach, and there she ran early mornings of every day in those days. And that Usha has become a well-renowned person, and she has come to the Rajya Sabha as a member of the House. That too is a pride fighter. Sir, in this day, when a new bill on sports have come here, we have reasons to say that this is a moment of great hope also, because India is going ahead in the field of sports. We learned about victories, medals, and all those things. I remember once a meeting with the mother of Chanu, the girl who won the medal, gold medal, recently in the Commonwealth Games. I met her mother in Imphal. From a very poor family she is. And they were working people. From that family, a daughter emerged as a national figure to win the gold medal. That also is a matter to be reckoned with. Now, when we discuss about this anti-doping bill, I may refer to the fact that why this doping? Why? Sir, may not be very happy to all of us, but sports have become a big money affair. Big money affair. Rich people craving for riches, they make the sports as a stepping stone for that. And there are agencies, there are groups also to help them to win this acquiring money games like that. That also is happening. So how can we save the sports from the greed of the money?
It's not very easy. And we had General Watts here. General Watts showed us a way how to come beyond the petty party politics. Sometimes it happens here. We have politics, of course. We have to have it. And we have to be loyal to the politics also. But petty politics and politics are different. Sometimes we need some kind of a warning to us that to come out of that tendency. General Watts today did it. I support many of his views. I believe that the one point that he mentioned of cross-breeding, important it is. He talked about inter-caste marriages. I request the ruling government to think it seriously. Why we should oppose inter-religious marriages also. That will also help Indians to have a more efficient, more powerful young generation who can win more and more medals. So please come out of this petty considerations on such occasions. I hope that the words by General Watts may help us to come out of this kind of a narrow way of thinking. Sir, again to the bill, when I come, I find a little problem with that national boards. We talk about an agency, which is a statutory agency, which will now overtake the earlier society. That also is good. But when we come to the board, Minister, the board is trying to become a state within the state, as he mentioned. That board has certain powers. And that powers, many a time, is crossing the powers of the agency, of the... Thank you, Binaji. And I may request the Minister, think of calling this as an authority. Instead of an agency, why can't it be called as an authority? National Anti-Doping Authority. Yeah, thank you. That can be more meaningful. With these words, I conclude. Thank you, sir. Thank you very much, Binaji. Dr. Anil Jain, 5 minutes. Not here? Not present. Srimati Fangnan Konyak. Yes. Sir, first of all, at the outset, I would like to put forth that the National Anti-Doping Bill, which was passed in the Lok Sabha on July 27th, is a well-balanced and visionary bill, and which will further enhance the spirit of sports and culture in our country. I most India under the dynamic and visionary leadership of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. We have seen that the sports sector has grown by leaps and bounds, and we have seen the immense support, recognition, and the encouragement given to our sportsperson by our Prime Minister. This fact is self-evident from the various championships and medals that our country athletes have been winning. And as I speak, our athletes are doing us proud at the Commonwealth Games in Birmingham. The country hasn't seen anything quite like this. And therefore, I must state that in such a context, it is only right that India also does its part and fulfills its moral and international obligations by bringing, which will, by obligations which will come into reality once this bill is passed in this August House. Sir, doping continues to plague countries worldwide, and especially more so in India. In fact, 5 members of this year's Commonwealth contingent failed their dope tests, which has once again highlighted the need for a more comprehensive and stringent anti-doping law in our country. In fact, India ranks 3rd in the world when it comes to doping violations as per WADA 2019 report. It is indeed a grim reminder that the need for a concerted effort to bring an end to this menace. The bill seeks to prohibit athletes, their support personnel, and also others, concerned persons such as coaches, from indulging in doping, the violation of which can lead to their result disqualification, and also including forfeiture of medals, being barred from other events, and also even result in financial sanctions. Sir, it is a well-thought and well-intended bill for the benefit of the country. One of the reasons being that the National Anti-Doping Agency
will be constituted as a statutory body which will be headed by a Director General, and NADA will be involved in planning, implementing, monitoring, as well as investigating anti-doping activities and rule violations. There will also be a national board for anti-doping, the job of which is to make recommendations to the government on anti-doping regulations and also with regards to international compliances and other commitments. It will consist of a chairperson and 2 members. The board will further constitute a national anti-doping disciplinary panel which will determine the consequences of violating anti-doping rules. This panel will consist of a chairperson and 4 vice chairpersons who will all be legal experts, and 10 members who would comprise of medical practitioners and eminent athletes to add more support to the proposed anti-doping law. The board will also constitute a national anti-doping appeal panel to hear appeals and grievances against the decisions of the disciplinary panel. Might I add, sir, that transparency is also a key feature here, because this National Anti-Doping Agency will disclose information such as which concerned rule was violated and the consequences levied thereof. The National Dope Testing Lab in New Delhi will be the principal dope testing facility, and many more such facilities will also be established. Sir, I'd like to bring your kind attention that once this bill becomes an act, NADA will have powers to search, conduct raids, and seize. Currently, it does not have such powers. Sir, what this bill basically aims to do is to bring sports into the mainstream. When I say this, it means to give effect to the UNESCO International Convention against Doping in Sports and other such international compliances. A legal framework is being provided to combat the menace of doping in India. It is high time that our country, which aspires to be in the galaxy of the great sporting nations, also has its own effective mechanism of tackling doping in sports, and National Anti-Doping Bill exactly seeks to do that. We cannot be advocating for sporting greatness while conveniently turning a blind eye to doping. It is only fair that the bill becomes a law. Only then will India be able to avoid international embarrassments, such as the infamous record of having the 3rd most number of positive samples among the national anti-doping organizations of the world. And for a bill which will build capacities in anti-doping and will enable hosting of major sports events, it will protect their sportspersons' rights, and also, it will reinforce India's commitment to international obligations. It will also provide legal sanctity and provide independent mechanism for anti-doping. India under Honorable Prime Minister Modi is not only focusing on building infrastructure, but also promoting sports as a viable, career option. With the first central university, sports university coming up in Manipur, we really feel that the country now has come to the point, and I commend Union Minister of Sports, Sri Anurag Thakur, and our government led by Honorable Prime Minister Modi ji for moving this bill for the welfare and progress of the sports person of our country. Thank you. Thank you very much, Punyak ji. Sri Ram ji. धन्यवाद उपसभापति महोदय कि आपने मुझे इस नेशनल एंटी डोपिंग बिल पर बोलने का अवसर दिया। श्रीमान जी, सभी वक्तागणों ने, सांसदगणों ने अपनी बात को इस पर रखा हुआ है, और मैं माननीय मंत्री जी से कुछ इस खेल को लेकर कुछ उपलब्धियों के बारे में या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करना चाहता हूं। श्रीमान जी, खेल तभी होता है जब खेल के मैदान होते हैं, या हम दूसरी शब्दों में कह दें, अगर हम लोग बैक में जाएं, 25 साल पहले जाएं, तो हमारे आसपास के गांव देहात में, कस्बों में खेल के मैदान होते थे, उनमें हम लोग खेलते थे। लेकिन धीमे धीमे जैसे हम लोग बड़े होते गए, वो सारी जगहें संकुचित हो गई। आज गांव देहात में, शहरों में खेलने की कोई जगह नहीं बची हुई है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से बोलूँगा, मैं अर्ज करना चाहूँगा कि बिल में कोई प्रावधान करके लाएँ कि हर ज़िले में, कस्बे के अंदर खेल के मैदान या स्टेडियम और भी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनको भी देने का काम करें। और चूंकि मैं इसका एग्जाम्पल भी देना चाहूँगा कि देश के अंदर अभी आप सब ने कई सारे नाम सुने जो बहुत ही गरीब
परिवेश से निकल करके देश में उन लोगों ने अपने नाम को रोशन किया। उसमें से आप नाम जानते हैं, हिमा दास का भी नाम जानते हैं, उसमें वंदना कटारिया का भी नाम जानते हैं हम लोग हैं, उसमें उर्वशी सिंह का नाम जानते हैं। ये ऐसे नाम हैं जो गरीबी के प्रवेश में निकल के आए, जिनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने अपना नाम रोशन किया। लेकिन ऐसे तमाम और भी बच्चे हैं जो इस देश में देश के मान सम्मान को बढ़ा सकते हैं, तो उनको ज़रूरत है मूलभूत सुविधाओं की। इसलिए श्रीमान जी, मैं इस बात के लिए माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह का कोई प्रावधान लेके आएँ कि हर जिले में, कस्बे में स्टेडियम, मैदान की मूलभूत सुविधाएँ दी जाएँ। और चूँकि मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा, 2007 से 2012 में उत्तर प्रदेश में हमारे बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, और तब ग्रेटर नोएडा के अंदर इंटरनेशनल बुद्धा सर्किट बनाया गया। 1,10,000 कैपेसिटी का 2,000 करोड़ का कंस्ट्रक्शन का इंटरनेशनल लेवल का कार रेसिंग सर्किट बनाया गया, जो आज भी मौजूद है। ऐसे और भी तमाम काम करने की जरूरत है श्रीमान जी। और इसमें कुछ बात आई रेगुलेटरिंग बॉडी का या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, तो मैं श्रीमान जी अर्ज करना चाहूँगा सरकार से, मंत्री जी बैठे हुए हैं, कम से कम इसमें जो लोग अपॉइंट किए जाएं उनका कोई पीछे का खेल का बैकग्राउंड होना चाहिए। या तो ऐसे लोग नेशनल या इंटरनेशनल लेवल प्लेयर रहे हों, या कोई गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज, सिल्वर लेकर आए हों। ऐसे लोगों को इस बोर्ड में अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए। और यही सब बातें मैं थोड़ी सी करना चाह रहा था। और ज़रूरत है मोटिवेशनल पॉलिसी की और कॉन्क्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर की। ये चीज़ें अगर सरकार मुहैया कराएगी तो मेरी समझ से आज हम लोग 10 मेडल लाके आते हैं, कहीं 5 लेके आते हैं, हम लोग दूसरे कंट्रीज़ के बराबर नहीं खड़े हो पाते। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि अगर दूसरी कंट्रीज़ के लोग इतने सारे मेडल लेके आते हैं तो उसके पीछे क्या बात है। अगर हम लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं देंगे तो हम लोग ऐसे ही पीछे रहेंगे। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच राम जी। श्रीमती मौसम नूर। Thank you, sir, for this opportunity to speak on the National Anti-Doping Bill 2022. I appreciate the Minister's attempt to deal strictly with the dangerous problem of doping and to comply with the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization's International Convention against Doping in Sport. This is also timely since our country is also performing spectacularly at the Commonwealth Games. I would like to begin by congratulating the Indian contingent for their performance thus far and wishing them luck for the rest of the Games. According to the latest World Anti-Doping Agency WADA report released in 2021, India ranks 3rd in doping and has 152 cases across disciplines, only marginally below leaders Russia 167 and Italy 157. Just last week, some of our Commonwealth Games candidates were disqualified after failing routine tests for performance-enhancing drugs. We were all witness to the scandal in another country where athletes were taking these drugs with state sanction and administrative support. It is important that Indian sportspersons do not fall prey to the lure of easy wins and engage in dishonest behavior. The administrative setup of sport in the country should work to identify and nurture talent fairly and provide an environment of encouragement and guidance so young players are not led astray. The ministry's sports administrative bodies, coaches, former players and seniors all have a responsibility towards new players in this regard. For example, even before the present Commonwealth Games, members of women's cricket team were awaiting visas till the last minute. Such administrative kinks should be ironed out with domestic bodies working in tandem with the international bodies. To lead just minutes. I agree with the concerns raised by the fellow members. The bill does not make a sufficient distinction between minors and majors, and this should be addressed in the rules so as to protect impressionable minors. The panels mentioned in the bill should be independent
and a change must be made to separate the disciplinary panel and the appeal panel, as well as to give the disciplinary and hearing panels protection from arbitrary removal by the ministry. While the government has attempted to take a holistic view of the problem and by countering it from multiple fronts via the bill, the socio-economic reasons for doping have been overlooked. Research shows that one of the major reasons behind doping is a sportsperson's desperation to register significant performances. Such performances determine the quality of the government jobs and incentives they receive after their career in sports, and therefore fuel an intense desperation to register quick wins in the shortest time possible. A limited professional shelf life, combined with the unrelated and unsatisfactory desk jobs that await them post their professional careers, has always been a worry for our sportspersons. The government thus must change their perspective on the careers of our athletes. Provisions must be made for better monetary support during training and career periods, as well as for the post-retirement options to them in order to curtail their desperation. Our sportsperson must be humanized. They cannot be looked at wins dispensing vending machines. Their needs and aspirations must be given the time and space they need as they strive to take our country to new heights each day. I would also like to point out that there must be provisions to prevent the harassment of players. While carrying out raids is necessary, NADA should ensure that appropriate safeguards may be implemented to protect the rights of athletes and to address the issue of privacy. This is also a need to lay down their clear guidelines on what constitutes the anti-doping rule violation. I would also insist that more dope testing laboratories should be opened, preferably at least one lab in each state, to ensure better accessibility and speedy test results. In Bengal, we have a long history of encouraging sports and sportspersons. Trained in gymnastics and wrestling as a kid, the Nobel laureate Rabindranath Tagore was a great admirer of jiu-jitsu and even invited judo instructors to teach in Shantiniketan. Our football clubs are legendary, and just last month, a trophy tour for the Durand Cup was launched from Kolkata in the presence of State Minister for Youth Services and Sports. So in conclusion, I would like to commend the Ministry for bringing forward the bill to deal with this dangerous problem, and I hope it works both to prevent doping and to support and encouraging promising players. Thank you, sir. Thank you, Ms. Samnoor. Mr. Narendra Baisya. Thank you, Chairman, sir, for allowing me to speak on the bill. Sir, I must compliment Honorable Sports Minister Anurag Thakurji for bringing this bill at that time when our players were playing extremely good in the Commonwealth Games, which is organized in United Kingdom, sir. That this bill looks like a simple bill, but this is very important bill because prevent doping in the sport is the call of the hour, sir. Sir, the anti-doping bill was introduced in our country in the year 2021, sir. Bill was first introduced in Lok Sabha, sir. Sir, India anti-doping bill said provide for the Constitution and National Anti-Doping Agency for regulating the anti-doping activities in sports and give effect to United Nations Education, Scientific, Cultural Organization, International Convention against the doping in the sports, sir. India is a member of World Anti-Doping Agency, sir. And, sir,
Actually, I am standing here to speak from my heart, sir. Sir, I was the president of Indian Weightlifting Federation. I was elected the president of Indian Weightlifting Federation, sir. And when I took the responsibility in the year 2010, sir, Indian Weightlifting Federation was banned by the International Federation, sir, due to the many DOP positive cases, sir. Not only that, sir, International Weightlifting Federation imposed more than 3 crore rupees penalty on Indian Weightlifting Federation. Not only that, sir, when India was organized Commonwealth Games 2010 in Delhi, Indian weightlifters are not allowed to participate in Commonwealth Games in Delhi, sir, because at that time, Indian Weightlifting Federation was banned by the International Federation, and we have to pay 3 crore rupees, otherwise they are not going to allow our player to take part. But, sir, I must admit, with the help of the Sports Ministry of India, we work hard and we negotiate with the Anti-Doping International Weightlifting Federation, and ultimately ban imposed on Indian Weightlifting Federation, lifted by International Federation, and my players, Indian weightlifters, have participated in the Delhi Commonwealth Games, and they got 2 gold medals, total 9 medals in the Delhi Commonwealth Games, sir. Sir, just I like to say, very proudly say, sir, 2010, Indian Weightlifting Federation was banned by the International Federation. When it was banned, it is known to Honorable Sports Minister also, I took the responsibility. And people warned me, why you are going to finish your career? This is the worst game. You cannot rectify this sport. But I'm proudly, sir, 2011, the Congress meeting of International Weightlifting Federation declared Indian Weightlifting Federation is one of the cleanest federations of the world, sir. This is the motivation. This motivation is required, sir. Sir, India performed well, sir, in the Commonwealth Games. More medals is coming, sir. Not only that, sir, in the Tokyo Olympic Games, again I'm happy to say that I was the chief of mission of the Indian contingent. I lead the Indian contingent in the Tokyo Olympic Games, sir. Very good, because, sir, one thing I tell you, sir, for the first time, India is the long ball champion, Commonwealth long ball champion, sir. Thank you, Mr. Sir, Vice. India is today, sir, just 1 minute, sir. Sir, India is today Commonwealth table tennis champion, sir. Long jump, for the first time, we got the medal. We got 3 gold medals in the weightlifting, sir. Many medals is coming. Why this is happening? Because, sir, we have a sports-friendly government under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi. Very good, thank This you. government totally helps all the federations, all the sports persons, and sports ministry under the leadership of Anuragji, doing very well. Now there is no problem for player. If player like to go expose themselves outside of the India in abroad, government is allowing them. Yes. All sports medicine, doctor, psychologist, Yes, everybody is thank you. available with the help of motivation of the government, Yes. under the leadership of Narendra Modi government. Very This sports, Indian sports is doing well, and I'm hope, not only hope, I proudly say India will come within 3 in Commonwealth Games, sir. Thank you very Thank much, you, sir. Vice. With this, sir, I support the bill. Thank sir. you, thank you. Sri Dhananjay Bhimrao Makhadik. धन्यवाद सर, आपने मुझे द एंटी नेशनल डोपिंग बिल 2022 पर बोलने का मौका दिया। सर, राज्यसभा में ये मेरा पहला स्पीच है। मैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे राज्य के नेता उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रकांत दादा जी, इन सब का आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ।
हम सब जानते हैं अध्यक्ष जी, यूनेस्को ने 2005 में वाडा की स्थापना की थी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा को डोपिंग रोधी नियमों को लागू करने के लिए देशों को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संगठन की आवश्यकता होती है। इसलिए भारत में 2009 में नाडा की स्थापना की गई, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये इसकी स्वतंत्र रूप से स्थापना की गई थी। लेकिन सर, हमारे देश में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को नियमित करना, डोप प्रशिक्षण करना, किसी उल्लंघित मामले को दंडित करना, इसके लिए डोपिंग रोधी कोई कानून नहीं है। खेल संबंधी स्थायी समिति ने देखा कि इसके लिए सीधा और सरल कोई प्रावधान नहीं है। डोपिंग करते हुए अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसे अगर कोई सज़ा होती है तो अदालत में इसकी चुनौती देता है। इसके लिए उसके खुले प्रावधान हैं और इसीलिए खेल समिति विभाग ने 2020-21 में डोपिंग रोधी कानून की सिफारिश यहाँ पे की है। सर, यह कानून लाने की वजह क्या है? हमारे देश में खेल का और खिलाड़ियों का स्तर बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है और यह बिल इसे और मजबूत करेगा। इस खेल के खिलाड़ियों को मजबूत करने के लिए, इनके कल्याण करने के लिए ये बिल लाया गया है और मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैंने अभी कहा कि देश में खेल का स्तर और खिलाड़ियों का स्तर बढ़ रहा है, ये मैंने ऐसे ही नहीं कहा था। हाल ही में जो टोक्यो में ओलंपिक्स हुआ सर, हमने देखा वहाँ पे इतिहास में पहली बार हमें 7 मेडल्स मिले हैं। बर्मिंघम में अभी जो प्रतियोगिताएं चल रही हैं वहाँ पे 10 से ज़्यादा मेडल्स हमने पाए हैं। पैरा ओलंपिक्स में इतिहास में सबसे ज़्यादा मेडल्स हमने पाए हैं और इसमें खिलाड़ियों के साथ साथ सर सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान इसमें है, मैं समझता हूँ। हमारे सभी खेल मंत्री, अनुराग जी ठाकुर हो, रघुवेंद्र राठौर जी हो, किरेन रिजिजू हो, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में इन्होंने जो काम किया है, खेलो इंडिया जैसा प्रोग्राम, साई सेंटर जैसे जो सेंटर्स अभी देश भर में लागू किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण स्तर का टैलेंट ढूंढा जा रहा है। सर, मुझे याद है 2015-16 में जब मैं लोकसभा में था, स्पोर्ट्स बिल वहाँ पे लाया गया था, तब मैं वहाँ पे खुद बोला था स्पोर्ट्स बिल पे, ये आज का युवा स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है। पेरेंट्स उसको स्पोर्ट्स में जाने की अनुमति नहीं दे रहे क्योंकि उनको भरोसा नहीं है कि स्पोर्ट्स से उसका घर चलेगा, स्पोर्ट्स से उससे घर में पैसा आएगा, वो अपनी रोजी रोटी कमा पाएगा, इसका भरोसा पेरेंट्स को नहीं है, इसलिए पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं कर रहे। लेकिन आज की स्थिति क्या है सर? आज साई सेंटर्स हो, खेलो इंडिया के प्रोग्राम के माध्यम से आप देखेंगे करोड़ों रुपए, लाखों रुपए ग्रामीण स्तर के लोगों को मिल रहा है। आज प्रो कबड्डी लीग सर, मेरे कोल्हापुर का एक बच्चा 1.5 करोड़ रुपए उसको कबड्डी प्रो लीग में आज एक बच्चे को साल में मिल रहा है सर। अच्छी कीमत आज सालाना उनको मिल रही है। कुश्ती की आज प्रतियोगिता हो रही है सर, 50-50 लाख का इनाम आज बच्चों को मिल रहा है। तो मैं केंद्र सरकार को सराहना चाहता हूं कि उनकी प्रयास से आज इन स्पोर्ट्स पर्सन को ज़्यादा आमदनी हो रही है। उनके खुराक की चिंता हमको होती थी सर पहले, लेकिन आज वो चिंता नहीं हो रही है क्योंकि ग्रामीण स्तर से, छोटे छोटे घरों से, ये सब साधारण घरों से बच्चे आते हैं, उनको आज ये अच्छे तरह से पैसा मिल रहा है। हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है, 65% हमारे देश के युवा है और ये युवा कल्चर स्पोर्ट्स कल्चर बनने जा रहा है जिसमें स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा योगदान हो रहा है। मैंने जैसे कहा सर कि इनाम ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए शॉर्टकट्स के इस्तेमाल भी ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि स्तर बढ़ रहे हैं, मेडल्स बढ़ रहे हैं, तो डोपिंग के केसेस भी बढ़ रहे हैं सर। डोपिंग के मामले में वाडा ने जो 2019 में जो एक सर्वे किया था, उसमें जो उल्लंघन के मामले आए थे उसमें भारत सबसे आगे था सर। 2019 में जो सर्वेक्षण किया था, 4004 केसेस भारत के था
उसमें जो उल्लंघन के मामले आए थे उसमें भारत सबसे आगे था सर। 2019 में जो सर्वेक्षण किया था 4004 केसेस भारत के जो टेस्ट किए गए थे उसमें सबसे ज़्यादा 225 लोग बाधित पाए गए थे। यूएसए के जो 11,213 लोगों का टेस्टिंग किया गया था उनमें सिर्फ 194 लोगों को बाधित पाया गया था। रशिया के 9,516 लोगों को टेस्टिंग किया गया था, उसमें से सिर्फ 85 लोगों को बाधित पाया गया था। मतलब इंडिया के सबसे ज़्यादा बाधित पाए गए थे। इसमें अगर एनालिसिस किया जाए तो बॉडी बिल्डिंग के 22% लोग थे, साइकिलिंग के 14% लोग थे, एथलेटिक्स के 18% लोग थे और वेट लिफ्टिंग के 13% लोग थे सर। इसे हमें बहुत गंभीरता से देखना पड़ेगा सर, क्योंकि ये जो लोग आजकल जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं ये बाज़ार में बहुत सीधी तरीके से मिलते हैं, ऑनलाइन मिलते हैं और ये देने वाले और कोई नहीं है, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे जो हेल्पर्स हैं, हमारे जो मसाज करने वाले लोग हैं, उन्हीं से ही मिलता है। जो मसाज करने वाला था वो बोलता है सर ये दूसरा वाला एथलीट ये ले रहा है, आपको ये लेना चाहिए, ये दवाई ले रही है, ऑर्गेनिक दवाई है, आप लेनी चाहिए। ये बहुत सरल तरीके से मिलते हैं और उसका एक नया नाम भी आया, ऑर्गेनिक दवाई है, ऑर्गेनिक है, आयुर्वेदिक है और इसी के नाम पे ये कालाबाजारी होती है और उसको एथलीट को या उसको पता भी नहीं चलता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि स्पोर्ट्स पर्सन के साथ साथ सर मंत्री जी हमें कोचेस को भी, टीम स्टाफ को भी, डॉक्टर्स को, चिकित्सक को और मसाजर्स को भी शिक्षा और सूचनाएं देने की आवश्यकता है सर, क्योंकि जब हम अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ाओं में सहभाग लेते हैं, जैसे ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, वर्ल्ड गेम्स हो, जैसे अभी जितने भी स्पर्धाएं हो रही हैं, अगर हम उनमें सहभाग लेते हैं तो उनके कानून हमें मालूम होने चाहिए। ये सभी कंपटीशन सर वाडा के नियमों के अधीन चलते हैं और हमें उनके नियम मालूम होने चाहिए। 4 साल में एक बार ये स्पर्धाएं होती है, इसके लिए हम, हमारे बच्चे, हमारे एथलीट्स, हमारे स्पर्धक कितनी मेहनत करते हैं। एक दिन में उनका इवेंट होता है, एक मौका उनको मिलता है और उस मौके के बाद अगर वो डोपिंग टेस्ट में जाते हैं तो उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है, उनका पूरा परिवार खत्म हो जाता है सर। और अगर वो पाए जाते हैं तो उनको मेडल छीन लिए जाते हैं, उनकी ट्रॉफी छीन ली जाती है, उनके सर्टिफिकेट छीन लिए जाते हैं, उनकी नौकरी चली जाती है, उनका परिवार बिखर जाता है सर। और इसलिए जब वो पॉजिटिव होते हैं उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है, उनकी गांव में बदनामी होती है, उनके देश की भी बदनामी होती है। तो आगे जाके उनको किसी और प्रतियोगिता में सहभाग भी लेने को नहीं मिलता है सर। ये उसकी छोटी सी गलती उसकी ज़िंदगी तबाह कर सकती है। ये ट्रेनिंग के दौरान भी हो सकता है सर। जो सप्लीमेंट, मैंने इसको बताया कि जो सप्लीमेंट मिलते हैं उस पर बहुत आकर्षक एडवर्टीजमेंट होता है सर। अगर आप ये सप्लीमेंट लेते हो तो आपका बाइसेप 24 इंच का हो जाएगा, आप सप्लीमेंट लेते हो तो आपके 6 पैक्स ऐप हो जाएंगे। ये सारे सप्लीमेंट बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और अननोइंगली ये हो सकता है, उस पर लिखा होता है वाडा अप्रूव्ड होता है, नाडा अप्रूव्ड होता है, तो इस पर भी मंत्री जी ध्यान देने की आवश्यकता है, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये सारे स्टेरॉइड्स होते हैं। इसमें वेट गेन का भी एडवर्टाइजमेंट होता है। एनर्जी ड्रिंक्स हमारे बच्चे लेते हैं क्योंकि उनको एनर्जी की आवश्यकता होती है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और मैं समझता हूँ कि ये कोई एथलीट जानबूझकर या कोई स्पर्धक जानबूझकर नहीं लेता, इसे धोखे से भी दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें राजनीति भी होती है। राजनीति सिर्फ हमारे इसमें नहीं होती, खेल में भी बहुत राजनीति होती है, इसे भी हमें समझने की ज़रूरत होती है। और इसलिए इस बिल में यह बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है कि उसे अगर धोखे से कुछ दिया जाता है तो उसे अपील करने का मौका मिलता है, क्योंकि इसमें बहुत खान पान पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। मैं सर स्पोर्ट्स फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं कोल्हापुर से आता हूँ। हमारे यहाँ पे कुश्ती का, सभी खेलों में हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा कल्चर है सर। आपको याद होगा, सबको मालूम होगा, कोल्हापुर एक ऐसा गांव है, भारत को देश का पहला ओलंपिक मेडल 1952 में जो पहला ओलंपिक मेडल मिला था वो हमारे खाशाबाज यादव जी ने लाया था, वो कोल्हापुर के थे सर। और अभी भी कई सारे पहलवानों का नाम है, आपने सुना होगा, दादू चौगुले जी है, डबल हिंद केसरी थे, श्रीपति खंजनारे जी, अंदलकर पहलवान, बिराजदार जी, यहाँ पे हरियाणा के कई पहलवानों के नाम लिए थे। तो हमें भी बहुत गर्व है हमारे कोल्हापुर के पहलवानों का सर। तो मेरे पिताजी भी बहुत बड़े पहलवान थे सर, भीमराव माडिक पहलवान थे और लक्ष्मण वडार थे। मेरा बेटा सर, छोटा बेटा है मेरा, कृष्णराज माडिक, हमारे खेल मंत्री जी जानते हैं, वो वर्ल्ड फार्मूला 3 वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है सर।
फॉर्मूला 3 वर्ल्ड चैंपियन इसने हमारा लोकसभा में उसका भी जिक्र हमारे अध्यक्ष जी ने किया था सर। तो हमारा कोल्हापुर में भी क्रीड़ा का बहुत बड़ा कल्चर है। हमारे वीर धवल खड़े स्विमिंग में सर वो ओलंपिक जा चुके हैं। हमारी तेजस्विनी सावंत शूटिंग में ओलंपिक जा चुकी है। राधिका बराली शूटिंग में ओलंपिक जा चुकी है। देख बड़ा स्पोर्ट्स कल्चर है। मैं मंत्री से डिमांड करता हूं कि ये छोटे छोटे घरों में आते हैं तो स्पोर्ट्स बजट इसमें बढ़ना चाहिए। मैं डिमांड करता हूं सर। और मैं कुछ सुझाव इस माध्यम में बढ़ा रहे हमको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो मैं ये डिमांड करना कुछ सुझाव देना चाहता हूं सर कि इसके आपको इस बिल के द्वारा अवेयरनेस करने की ज़रूरत है सर, क्योंकि इसका अवेयरनेस स्कूल स्तर पे होना चाहिए। मैं खुद 7 संगठनों का मैं खेल को बढ़ावा देता हूं और डॉक्टर्स को सब में इस पे अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। जैसे बताया गया कि एशिया में 6 लैब है, हमारे यहाँ पे लैब्स रिजल्ट आता है तब तक उसको कोई फाइनेंस ना करे, उसको फिर से दोबारा खेलने का मौका दिया जाए। जो अध्यक्ष होने चाहिए वो मुझे लगता है कोई रिटायर्ड जज हो जो थोड़े से बायस ना हो, डॉक्टर्स या रिटायर्ड एथलीट्स होने चाहिए। धन्यवाद सर। मैं भी खुद एक नेशनल रेसलर रह चुका हूँ, नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका हूँ सर। मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। बहुत धन्यवाद धनंजय जी। माननीय मंत्री जी आप। धन्यवाद माननीय उपसभापति जी, माननीय डिप्टी चेयरमैन सर। मैं सबसे पहले तो नेशनल एंटी डोपिंग बिल पर चर्चा लेने में जो शामिल माननीय सांसद हुए, जिन्होंने भाग लिया, श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, जनरल वत्स जी, NR इलेंगो जी, शांतनु सेन जी, अयोध्याराम रेड्डी जी, KR सुरेश रेड्डी जी, जॉन ब्रिटोस, संजय सिंह जी, डॉक्टर फौजिया खान जी, श्री GK वासन जी, अब्दुल वाहब जी, K रविंद्र कुमार जी, थम्बी दुरई जी, डॉक्टर अनिल अग्रवाल, श्री अमर पटनायक जी, श्री विनय विश्वम जी, श्री फैंगोन कौनियाक जी, श्री राम जी, मौसम नूर जी, वीरेंद्र प्रसाद बैसिया जी, धनंजय महादिक जी एवं अन्य। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने इस बिल का समर्थन किया है और बहुत बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। डिप्टी चेयरमैन सर, कोपेनहेगन डिक्लेरेशन जो एंटी डोपिंग स्पोर्ट्स पर हुई थी, ये 2003 में हुई थी, जिसको भारत ने सहमति जताई, और यूनेस्को की इंटरनेशनल कन्वेंशन जो डोपिंग के विषय को लेकर थी, डोपिंग इन स्पोर्ट को लेकर थी 2005 में, उसके हम सिग्नेटरी हैं। और 2007 में हमने इसको रेटिफाई करने का काम किया था नवंबर में। इसके बाद पिछली बार जब कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली में हुए, उससे पहले यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन बने, नेशनल डोपिंग टेस्टिंग लैब की स्थापना हुई और लगातार कई वर्षों तक इस पे काम भी हुआ। लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी बने, हमारे यहाँ पर कानूनी प्रक्रिया उसको हो, कोई एक्ट यहाँ पर बने, उसकी एक कमी देखने को मिलती थी। जबकि दुनिया के 30 राज्यों में 30 देशों में इसको पूरा किया गया था। भारत आज जब राज्य सभा में भी आप सबके सहयोग से, आम सहमति से, पूर्ण सहमति से आपके पास होगा, तो भारत भी उन देशों में दुनिया भर में आएगा जहाँ पर इसको स्टैट्यूटरी संविधान यहाँ पर बन पाएगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता इस बात की भी है कि जब लोकसभा में इसको लेकर आए और सदन के सदस्यों ने वहाँ पर कहा कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहिए, पिछले साल दिसंबर में हमने इसको भेजा। मैं आभार प्रकट करता हूँ विनय सहस्त्रबुद्धे जी का भी और सारे कमेटी मेंबर्स का। मात्र 3 महीनों के अंदर कमेटी ने बहुत विस्तार पे इससे चर्चा करके बहुत बहुमूल्य सुझाव दिए हैं और हमने अधिकतर सुझाव, मैं कहूँगा लगभग सारे ही सुझावों को हमने इसमें शामिल करने का काम किया है। तो मैं कमेटी के सदस्यों का भी यहाँ पर आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सर, शुरुआत में जहाँ एक और माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने विषय को रखते हुए बहुत सारी बातें यहाँ पर की, उसमें मैं बाद में आऊँगा, लेकिन कहते शुरुआत अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा होता है। आप स्वयं एक खिलाड़ी हैं, खेल प्रशंसक और खेल प्रमोटर भी हैं,
और ऐसे राज्य से आते हैं जहाँ पर खिलाड़ी भी आते हैं। और हर सरकार ने एक के बाद दूसरी सरकार ने लगातार अच्छा काम करने का काम खेलों के प्रति किया है, और यही कारण है कि हरियाणा की भागीदारी देश के मेडल जीतने में बहुत अच्छी रही है। उसके लिए जहाँ एक और हरियाणा की सरकार, हरियाणा राज्य, हरियाणा के खिलाड़ी, आप सब उसके बधाई के पात्र हैं, वहीं पर बाकी राज्यों को भी इससे सीखने का अवसर मिलता है। खेल राज्य का विषय है। स्पोर्ट्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट and states have to play a very important role in the sport, in creating sports infrastructure. At the same time, not only to create the facilities but also to promote the sports person and create jobs for them also. I'll touch those points a little later, but I'll come to what has been done in the past few years. I would like to throw some light on that. Sir, क्योंकि नाडा की बात जब यहाँ पर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की बात की गई, भारत आज ऐसी स्थिति में है कि कॉमनवेल्थ खेल के बाद जब कॉमनवेल्थ गेम्स का यहाँ पर आयोजन हुआ, उसके बाद कुछ और बड़े इवेंट्स का आयोजन हुआ। मैं आज की अगर बात करूँ तो भारत जहाँ से चेस की शुरुआत हुई, शतरंज के खेल की शुरुआत हुई, यहाँ से वो पूरी दुनिया भर में गया, लेकिन चेस ओलंपियाड कभी भारत में नहीं हुआ। आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि दुनिया के 187 देश भाग ले रहे हैं और चेस ओलंपियाड 44वां चेस ओलंपियाड भारत में महाबलीपुरम में हो रहा है। और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इसकी शुरुआत अभी कुछ दिन पहले तमिलनाडु के महाबलीपुरम में, चेन्नई में जाकर वहाँ पर की। और जो वहाँ पर एक पूरा वातावरण खड़ा हुआ है चेस को लेकर। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य जहाँ पर बहुत बड़ा योगदान उनका चेस के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम चेस की बड़ी उपलब्धियों में बात करें, उसमें तमिलनाडु की एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है, और मैं तमिलनाडु को उसके लिए बधाई भी देना चाहता हूँ। एक के बाद दूसरे खिलाड़ी, और जब यहाँ पर भी दिल्ली में हमने चेस ओलंपियाड की पहली टॉर्च रिले हुई, ये आज तक कभी हुई नहीं थी। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी फिडे के प्रेसिडेंट आर्काडी द्वारकोविच से बात की, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने भी बात की, और हमने देश में प्रथा शुरू की। दुनिया भर के लिए अगर पहली टॉर्च रिले कहीं पर हुई है चेस ओलंपियाड की, तो वो भी भारत में ही, दिल्ली से हमने उसकी शुरुआत की। और सर, देश के 75 ऐसी लोकेशंस पर गए, क्योंकि हम आज़ादी का 75 वर्ष मना रहे हैं, ताकि चेस ओलंपियाड और चेस के खेल को लेकर जागरूकता भी हो। और बहुत सफल ये कार्यक्रम हुआ। 27,000 किलोमीटर से ज़्यादा ये सफ़र हुआ है और लाखों लोग इसके साथ जुड़े। और जब महाबलीपुरम में टॉर्च वापस पहुंची, यहाँ पर भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये टॉर्च रिले शुरू हुई तो किसको दी सर? 5 बार के जो विश्व विजेता है, कौन है? विश्वनाथ आनंद, उनको दी। और उनको लेकर जब लाल किले पर अगले दिन गई, उसके बाद पूरे देश भर में गई, तो अंतिम दिन फिर विश्वनाथ आनंद जी ने आकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को आकर टॉर्च को जाकर वहाँ पर सर वापस सौंपा, और 2 युवा खिलाड़ियों ने उसको वहाँ पर जाकर स्थापित किया। सर, मेरा कहने का मतलब इसके पीछे केवल एक है कि भारत बड़े आयोजन कर रहा है। आज से कुछ वर्ष पहले 2017 में फुटबॉल का अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ, बहुत शानदार सफल आयोजन हुआ, और AFC फीफा ने अगले आयोजन की जिम्मेदारी भी भारत के ऊपर दी। और इसी साल हम गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप अक्टूबर में करवाने जा रहे हैं। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं। डोप टेस्टिंग लैब बनाना और फिर उसकी क्षमता को बढ़ाना, ये बहुत आवश्यक हो गया था। आज हमारी क्षमता लगभग 6000 टेस्ट साल में करने की है, लेकिन अगर कोई बड़ा चैंपियनशिप यहाँ पर करवानी हो तो लगभग 10,000 टेस्ट 1 महीने में करने की क्षमता को करना होगा सर। तो उसके लिए कहीं ना कहीं देश में कानून भी हो और व्यवस्था भी खड़ी हो, उतने साइंटिस्ट हो, उतने लैब टेक्नीशियंस हो, और उतनी डोप टेस्टिंग लैब्स हमारे पूरे देश भर में खड़ी हो सकें। उसके विस्तार में मैं जाऊंगा आपके पूरे आते हुए।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स की आपने बात की, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात की। सर, आपदा का समय था, बहुत सारे आयोजन देश भर में नहीं हो पा रहे थे, लेकिन मुझे इस सदन को कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जब हमने बेंगलुरु में की तो कल्पना से ज़्यादा वहाँ पर एथलीट्स आए जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के थे। लगभग 5000 से ज़्यादा एथलीट्स और ऑफिशियल्स ने वहाँ पर आकर भाग लिया। बहुत सफल आयोजन सर वहाँ पर हुआ। देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ने आई, कोई पंजाब से थी, कोई हरियाणा से थी, कोई महाराष्ट्र से थी, और बहुत सफल उन्होंने प्रदर्शन वहाँ पर किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहीं और नहीं, हरियाणा में ही उसका पंचकुला और बाकी ऐसे 5-6 स्थानों पर उसका आयोजन हुआ और लगभग 8500 से ज़्यादा एथलीट्स और ऑफिशियल्स ने उसके आकर भाग लिया। और सर 12 रिकॉर्ड नेशनल 12 नेशनल रिकॉर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स में टूटे। जिन 12 रिकॉर्ड्स को तोड़ने का काम उसमें से 11 लड़कियों ने किया है, यानी कि नए 11 नेशनल रिकॉर्ड बने तो लड़कियों ने बनाने का वो काम किया है। तो सर आयोजन एक के बाद दूसरे हो रहे, लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स में ट्रेडिशनल गेम्स को भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया। सर योगासना की बात करें, थांगटा की बात करें, कलारीपट्टू की बात करें, या फिर गटका की बात करें, मलखम की बात करें, इन 5 गेमों को वहाँ पर लाया गया सर, और इतना बड़ा आकर्षण का केंद्र बने हैं, ये शायद पहले किसी ने कल्पना नहीं की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना थी, इसको शामिल किया गया और बहुत सफलता मिली है ट्रेडिशनल गेम्स को शामिल करके। आपके भी कोई और सुझाव हों, आपके राज्यों में, देश के अलग हिस्सों में ऐसे ट्रेडिशनल गेम्स होते हों, तो कृपया करके आप उसका सुझाव भी दीजिए। हम भविष्य में उनको भी शामिल करने का प्रयास समय समय पर अगर कभी भी होगा तो करने का करेंगे। सर माननीय सदस्यों ने बिल्कुल ठीक कुछ विषय उठाए भी कि NDTL हमारी लैब की सस्पेंशन हो गई थी, और मैंने अपने शुरू के वक्तव्य में भी कहा कई कारण उसके रहे। सर वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग दोनों में बहुत अंतर है। वेट लिफ्टिंग जहाँ एक और ओलंपिक स्पोर्ट है, हमें मेडल भी आते हैं। मीराबाई चानू ने ओलंपिक्स मेडल जब जिताने का काम हुआ सर, तो एक बेटी ने भारत को पहला मेडल भी जिताया, वो भी वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने जिताने का काम किया था। और अब भी कॉमनवेल्थ गेम में पहला गोल्ड मेडल जीतने का काम मीराबाई चानू ने किया। सर मैं अंतर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पीछे कुछ ऐसा हुआ जब बॉडी बिल्डिंग वालों के टेस्ट ज़्यादा हो गए और उसको भी रिकॉर्डिंग कर करके जैसे डाला गया, तो उसके कारण भी देश की छवि खराब हुई। एक विषय यहाँ पर जो और आया जिसको मैं आगे आके फिर आपके टच करूँगा, ऑफ द शेल्फ जो आपको प्रोटीन पाउडर्स और बाकी मिलते हैं उसका नुकसान भी क्या होता है, उसको भी एड्रेस करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग इसको भी लेते हैं। सर हमने प्रयास किए और जब मुझे जिम्मेदारी भी मिली, मुझे लगा भी कि ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम किसी एक टेस्ट को कराने के लिए यहाँ से सैंपल बेल्जियम भेजते हैं सर, उसकी कॉस्ट देश से 3 गुना ज़्यादा आती है। देश को नुकसान भी होता है और टेस्टिंग जो देश में हो सकती है वो भी किसी दूसरे के हाथ में पहुँच जाती है। आपदा के समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो एक कल्पना की थी, ये नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी हो या नेशनल एंटी डोपिंग, ये जो हमारी टेस्टिंग लैब है NDTL नेशनल डोपिंग टेस्टिंग लैब जो हम बनाई है सर, हमने इसकी क्षमता को बढ़ाने का काम भी किया है। ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा भी करेगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हम एक ही लैब तक सीमित नहीं रहेंगे, हम और लैब को स्थापना करने का काम भी भविष्य में करने वाले हैं। एक लैब को स्थापित करने में लगभग 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च आया है। कई बार तो एक मशीन भी 8 करोड़, 3 करोड़, 7 करोड़ ऐसे आती है और साइंटिस्ट की इसमें सर आवश्यकता पड़ती है। एक चैलेंज ये भी है, जो यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं कई बार विदेशों में भी चले जाते हैं, कई बार अलग अलग और क्षेत्रों में वो काम करना शुरू करते हैं, तो उनको होल्ड करना भी अपने आप में एक चैलेंज है। लेकिन भारत में अलग अलग देशों के सैंपल भी हम यहाँ पर टेस्ट करने की शुरुआत हमने की। 16 देशों के सैंपल की टेस्टिंग भी करते हैं और भविष्य में भारत हब बने टेस्टिंग का, इस दिशा में हम जाएंगे। केवल देश तक ही सीमित नहीं होंगे, दुनिया भर के देशों का, क्योंकि हम कॉस्ट इफेक्टिव हैं। कम खर्चे पर कम समय में
हम टेस्टिंग करके ना केवल भारत बल्कि दुनिया भर के देशों को दे सकें, उस दिशा में सर हम आगे बढ़ेंगे। एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि जब भी हम कोई कानून बनाएं तो आपने कंसल्टेंसी किससे की? क्या आपने देश के लोगों से पूछा, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन से पूछा, राज्यों की स्पोर्ट्स एसोसिएशन से पूछा, खिलाड़ियों से पूछा, माननीय सांसदों से पूछा, या देश में जो भी खेल संघों से उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन, उसकी गाइडलाइंस है, उसको लागू किया? सर, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं और ये बताना भी चाहता हूं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने भी 2 बार हमें जो सुझाव दिए उनको भी शामिल किया। यूनेस्को का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उसमें भी जो कहा गया उसको भी शामिल किया। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन से लेकर जो हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सर जितने भी यहाँ पर सुझाव आए, हमने सबको शामिल करके आपके सामने बिल लाने का काम किया है और लोकसभा में भी इसको आम सहमति के साथ, पूरे समर्थन के साथ पास किया गया। मुझे पूर्ण आशा है जैसा आपने समर्थन किया, आगे भी आप इसको पूर्ण सहमति से पास भी करेंगे। सर, इसके होने के बाद क्या होगा? जो दुनिया के बड़े देश हैं, यूएस, चाइना, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, ऐसे गिने चुने देशों में भारत का नाम भी आएगा, जिसका अपना कानून होगा, अपना एक्ट होगा और अपनी डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी भी देश में स्थापित होगी और आने वाले समय में देश के अलग अलग कोनों में भी होगी। इससे हमारी जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है, हम इसको और मजबूत करने वाले हैं ताकि यहीं पर टेस्टिंग भी करें। और जैसा मैंने पहले कहा, आज हम मात्र 6000 सैंपल लेकर टेस्ट पूरे साल भर में कर सकते हैं। भविष्य में इसको हम कई गुना और बढ़ाने का काम भी करेंगे और इस सब कॉन्टिनेंट में भारत एक बड़ी ताकत के रूप में टेस्टिंग लेबोरेटरी, जो डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी के रूप में हम यहाँ पर खड़े होंगे। सर, कुछ बातें यहाँ पर कही गई जो दीपेंद्र जी ने भी शुरू में कहा कि माइनर एथलीट्स को इस कैटेगरी में नहीं रखा गया। जो ओरिजिनल बिल था उसमें कमी थी, लेकिन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में सर जब ये गया तो वहाँ पर उन्होंने बड़े विस्तार में, कमेटी ने कहा कि आपको माइनर एथलीट्स को, इसको प्रोटेक्टिव एथलीट्स को लेना चाहिए। तो प्रोटेक्टेड पर्सन्स की जो हमने कैटेगरी यहाँ पर क्रिएट की है, उसमें कौन कौन आता है? सर, ये स्पेशल प्रोविज़न हमने इसमें ऐड किया है जिसमें माइनर एथलीट्स, इसको नाम यहाँ पर दिया गया, रूल्स में इसको समय समय पर आप चेंज कर सकते हो। मान लीजिए आज 16 साल है वाडा के अनुसार, तो कल को वाडा अगर 15 साल कर देता है, 14 साल करता है, या हमें लगता है कि इसको उम्र को बदलना है, तो रूल्स को उसमें हम बदल सकें, बार बार पार्लियामेंट उसमें आने की जरूरत ना पड़े, तो उसको हमने उसमें करने का प्रावधान यहाँ पर कर दिया है। इसी तरह से रिक्रिएशनल एथलीट्स, उसको भी यहाँ पे रखा गया है, और एथलीट्स विद द डिसेबिलिटीज़, ये प्रोटेक्टेड पर्सन में आएंगे ताकि इसके कारण आपको ज़्यादा दिक्कत भी ना आए और इसमें रिलैक्सेशन देने का सर हमने काम किया है। दूसरा, प्रोटेक्टेड पर्सन वाले में 3 कैटेगरीज आएंगी, माइनर एथलीट्स, रिक्रिएशनल एथलीट्स और एथलीट्स विद डिसेबिलिटीज़, तो तीनों को हमने उसमें कवर कर दिया है। सर, एक और प्रश्न दीपेंद्र जी ने यहाँ का पूछा कि फिक्स मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल जो लेने की बात कही। सर, इसमें हमने किया ही है कि जो देश भर में जितने टूर्नामेंट्स हमारे होते हैं, चाहे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के बाकी हों, हम उसमें प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जो स्टेट लेवल पर हाई रिस्क डिसिप्लिन्स हैं उसको लेकर भी हमने जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार टेस्टिंग करेंगे ताकि वो भी हो। लेकिन एक बात तो मैं सदन को बताना चाहता हूँ, हमने यहीं तक नहीं रुके, हमने इससे पहले भी बहुत सारे जागरूकता अभियान हमने पूरे देश भर में चलाए और उसकी कुछ जानकारी मैं आप सबके सामने देना चाहता हूं, क्योंकि इस बिल के पास होने से एंटी डोपिंग की अवेयरनेस, एजुकेशन और रिसर्च फैसिलिटीज़ इसमें वृद्धि होगी। और सर, नाडा और एनडीटीएल ने पिछले 1 साल में क्या किया, मैं उस पर थोड़ी जानकारी दे दूं ताकि सबका वो भी पता चलेगा हम अभी क्या कर रहे हैं। नाडा ने 100 एंटी डोपिंग एजुकेशन और अवेयरनेस वर्कशॉप हाइब्रिड मोड में, क्योंकि कोविड चल रहा था, हाइब्रिड मोड में की, जहाँ पे एथलीट और एथलीट सपोर्ट पर्सनल, इन दोनों को ही जानकारी उनको दी। और इसके अलावा जब हमने, नाडा ने तीसरा फंड अप्रूवल कमेटी यहाँ पर की और सेकंड मीटिंग जो COP8 ब्यूरो की जो यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन
अगेंस्ट डोपिंग के अंतर्गत आती है सर, उसमें हमने ना केवल होस्ट किया बल्कि मुझको सदन को बताते हुए प्रसन्नता भी होती है कि 1 साल पहले जहां हम सस्पेंडेड हमारी टेस्टिंग लेबॉर्ट्री थी, इस बार जब हमने होस्ट किया तो इंडिया को फंड अप्रूवल कमेटी का चेयरपर्सन भी चुना गया और मेंबर भी चुना गया ब्यूरो का। ये 1 साल में हमने सब कुछ किया है। और जब आप ये कानून आज बनाने जा रहे हैं तो इसके बाद भी दुनिया भर के देशों में और वाडा में एक संदेश स्पष्ट जाएगा कि भारत खेल, खिलाड़ियों और डोपिंग। नाडा ने सक्सेसफुली 157 लीगल हियरिंग की और एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल और एंटी डोपिंग अपील पैनल ने 87 ऑर्डर भी इशू किए हैं इसके। सर यही नहीं, FSSAI has issued regulations for mandatory testing of dietary supplements, but no laboratory under the government is doing such testing. Hence, ये बड़ा महत्वपूर्ण है सर। ऑर्डर्स तो पास कर दिए लेकिन कोई टेस्टिंग ऐसी करने वाली लैब नहीं है। तो हमने क्या किया है, हमने सर एक कदम और आगे जाकर जो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है गुजरात में, हमने उसके साथ एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। वहाँ पर वो लैब भी स्थापित करेंगे और ये जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है इसकी टेस्टिंग को हम नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के माध्यम से करने की शुरुआत करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा कदम इस दिशा में हम उठाने जा रहे हैं। सर जो एग्जिस्टिंग गैप है स्टैंडर्ड डाइटरी सप्लीमेंट्स का और नॉन स्टैंडर्ड वंस का, इसको भी हम ख़त्म करेंगे। जहां एक और टेस्टिंग होनी शुरू हो जाएगी, दूसरा जागरूकता अभियान भी देश भर में और तेजी के साथ लेकर जाएंगे। सर नाडा के माध्यम से जब हमने डीजी नाडा की नियुक्ति की, अब एक प्रश्न बीच में आया था कि आखिरकार डीजी नाडा की नियुक्ति कैसे की, ऑफिशियल्स की नियुक्ति सरकार ने कैसे की। सर मैं सदन को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो वाडा की गाइडलाइंस हैं वो अनुमति देती हैं कि सरकार या खेल मंत्रालय इन अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर बाकी देशों में भी इनकी नियुक्ति की गई है और एक विश्वास मैं आपको और दिलाना चाहता हूं, दे विल वर्क एट आर्म्स लेंथ। ये ऑटोनोमस बॉडी है, यहाँ पर सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं होगी। खेल और खिलाड़ियों के भविष्य की बात है, हम इसके बारे में बहुत गंभीर हैं और इसको मजबूत ही करेंगे, दखलंदाजी कोई नहीं होगी, इस बात का विश्वास दिलाता हूँ। सर नाडा ने एंटी डोपिंग एजुकेशन और अवेयरनेस टूल किट को भी डेवलप किया है सर, और इसके अलग अलग स्टेक होल्डर्स को शामिल करके किया है। ना केवल इसको फिजिकल तौर पे जाके करने की सर आवश्यकता होगी, साथ ही साथ डिजिटल भी इसकी हमने वो प्रावधान किए हैं। सर टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग यहाँ पर किया गया है। और जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स हुई, हमने वहाँ पे एथलीट्स को अवेयरनेस भी की, सेंसिटाइज भी किया, वहाँ पर टेस्टिंग करने का काम भी किया और डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जो डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, खिलाड़ियों को आकर उस एप्लीकेशन को यूज़ करने के भी जानकारी दी। सर ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन ये एक प्रयास है डिपेंडेंसी मैनुअल सिस्टम्स पर कम करने की, और हम लगातार वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को भी बना रहे हैं। डिजिटल क्विज और एजुकेशनल रिसोर्सेज को भी तैयार किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में जो स्कूलों के बच्चे हैं वो चाहे फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, उनको भी जानकारी हो कि डोपिंग होता क्या है, क्या करने से आप फंस सकते हो। और सर ये केवल अवेयरनेस की बात नहीं है, जैसा दीपेंद्र जी और कुछ माननीय सांसदों ने कहा कि कुछ खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम से पहले पकड़े गए। सर एक इंस्टेंस तो ऐसा है, एक खिलाड़ी की टेस्टिंग करनी थी जहां उसको आपने जाके वेयर अबाउट क्लॉज इसमें एक होती है कि आपको बताना है आप कहां पर हो, उससे बचने का प्रयास कर रहे थे। एक जगह दूसरी जगह 1 महीना लटकाने के बाद जब उसका चेकअप हुआ सर, तो उसके बाद वो पॉजिटिव पकड़े गए। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को भी पता है कि वो गलत करते हैं और बचने का प्रयास करते हैं, लेकिन सर वो देश का नुकसान भी करते हैं, क्योंकि देश के टैक्स पेयर का पैसा चंद करोड़ नहीं सर, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम पर 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किया जाता है। एलीट एथलीट की बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग और आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस भी 6 लाख रुपया खिलाड़ी को साल का दिया जाता है, जेब खर्च दिया जाता है, और विदेशों में जाकर ट्रेनिंग करने का और कंपटीशन में भाग लेने का खर्चा भी पूरी तरह से भारत सरकार ही वहन करती है। कहीं कोई कमी नहीं रखी गई, लेकिन एथलीट को भी जागरूक होने की आवश्यकता है
और सेंसिटाइज हम करने का प्रयास भी करें सर, टेस्टिंग भी ज़्यादा करने का काम कर रहे हैं, और इसी तरह से सर रिसर्च मटेरियल भी और बाकी सब करने का काम कर रहे हैं। IIT दिल्ली के साथ भी सर हमने नेशनल डोप टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का MOU साइन करने की दिशा में सर हम हैं, ताकि वो भी वहाँ पर अपना योगदान इस दिशा में दे सके। सर कुछ बातें और दीपेंद्र जी ने यहाँ पर पूछी। एक तो मैंने हाई रिस्क एथलीट्स का बता दिया, उस पर करते हैं। एक कहा गया कि जो DG नाडा या नाडा की जो कामकाज होगा, इसमें मैं बड़ा करूं कि बिल में ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस देने का वो सेफगार्ड हमने यहाँ पे रखा है, और जो सजेशंस वाडा की तरफ से मिली थी उसमें भी हमने उसको रूल्स में फ्रेम करने जा रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ रूल्स एंड रेगुलेशन में वो सारी चीज़ों को प्रावधान हम वहाँ पर करेंगे, ताकि कोई भी ऐसी दिक्कत ना आए जहाँ पर सरकारी दखलंदाजी आपको कहीं सीधे तौर पर नजर आए, वो कहीं पर नहीं होगा। और जो आपने बात कही कि रिमूवल और अपॉइंटमेंट की बात है, ये वर्ल्ड दुनिया भर में जो अलग अलग देशों में कानून बने हैं उसके अनुसार ही यहाँ पर किया गया है। जो पहले पावर बोर्ड को थी कि कहीं डायरेक्शन देनी, सर डायरेक्शन देने की पावर नहीं है, केवल रिकमेंडेटरी पावर्स इसमें रखी गई हैं। और एक आपका सुझाव आया था कि आप आर्बिट्रेशन करने के लिए लुजान स्विट्ज़रलैंड में क्यों जाएं, तो सिंगापुर में भी यहाँ पर उनका एक्सटेंशन ऑफिस है जो मैटर ऑफ हियरिंग के लिए वहाँ पर इस्तेमाल होता है। लेकिन हम प्रयास करेंगे, मैं कोई यहाँ पर एश्योरेंस नहीं दे रहा, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूँ, लेकिन प्रयास करेंगे, सरकार लगातार प्रयास करती रहती है कि भविष्य में भी अगर कोई हियरिंग की यहाँ पर हो, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट, भविष्य में अगर वो अपनी एक्सपेंशन करते हों तो भारत भी उसमें पिच करेगा कि कभी भविष्य में यहाँ पर बने। नहीं तो डिजिटल हियरिंग्स तो आजकल वर्चुअल हियरिंग्स तो होती हैं, उसमें भी बहुत ईज हो गई है, ताकि हम यहाँ से भी अपनी बात रख सकें। बाकी आपने बहुत कुछ हरियाणा पर कहा, पर उसमें मैं नहीं कहूँगा। आपने, जनरल साहब ने, दोनों ने खूब बातें उस पर कही है। हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान खेलों में है, जिसको पूरा देश मानता भी है, और मुझे पूर्ण विश्वास है आगे भी हरियाणा और बाकी राज्य, चाहे वो तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, किसी भी राज्य की बात करें, मैं कहता हूँ सारे नॉर्थ ईस्ट की अगर आप जनसंख्या के आधार पर देखें, मुझे किसी ने सर सवाल पूछा एक बार कि नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आप मणिपुर में क्यों खोलने जा रहे हैं 900 करोड़ रुपए की, तो मैं यही कहना चाहता हूं, राज्य की जनसंख्या के आधार से नहीं, आखिरकार लुक ईस्ट की बजाय एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर मोदी सरकार ने काम करने का काम किया है, और नॉर्थ ईस्ट के खिलाड़ियों ने बहुत बड़ा योगदान भारत में खेलों के क्षेत्र में भी किया। और मणिपुर में अगर आप सड़क पे सुबह निकल कर जाएंगे, सर लगता है हर परिवार इस सड़क पे कोई भाग रहा है, कोई ट्रेनिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो एक कल्चर वहां पर खेलों को लेकर पैदा हुआ है, और मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। बहुत सारे राज्य अपनी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज भी बना रहे हैं, कुछ तो हवा में किले बांध रहे थे यहाँ पर बोलते हुए, अभी वो माननीय सांसद यहाँ पर है नहीं, चले गए। उन्होंने खेल यूनिवर्सिटी की बात तो की, लेकिन है कहाँ पर? यहाँ की जनता पूछ रही है सर, आज तक वो है कहाँ खेल यूनिवर्सिटी? मैं उन पर बाद में आऊंगा थोड़ा सा, जब वो बजट की बात कर रहे थे। सर यहाँ पर पूछा गया कि एम्प्लॉयमेंट का क्या हो, जनरल वत्स ने भी पूछा कि खिलाड़ियों की, पूर्व खिलाड़ियों की एम्प्लॉयमेंट का क्या। बहुत सारे राज्य अपनी तरफ से अच्छा प्रयास भी कर रहे हैं, बहुत सारे राज्य इस बात की कंप्लेंट करते हैं, अब ये राज्यों को देखना है, मेरा विषय नहीं है। भारत सरकार सर, हमने आकर एथलीट जो जीत कर आता है उसको गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को हमने बार बार समय रहते हुए अवार्ड फीस भी बढ़ाई और समय समय पर उनको सम्मानित करने का काम भी किया। कुछ राज्य बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं, कुछ कम देते हैं। तो किसी ने मुझे कहा कि हॉकी की टीम जीत कर आई कि अगर हरियाणा ने 6 करोड़ दे दिया तो केरल वाले 2 करोड़ क्यों देते हैं? सर ये राज्य का विषय है, यहाँ पे मैं कहीं इंटरवीन नहीं कर सकता, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, चाहे पैरालंपिक्स के जीत कर आए, चाहे डेफ ओलंपिक्स के जीत कर आए,
चाहे ओलंपिक्स में जीत कर आए, हमने सबको एक समान पैसा देकर सम्मानित करने का काम किया है। हमने कहीं पर कोई भेदभाव नहीं किया। और मुझे लगता है राज्यों का, जैसे मैंने पहले कहा, स्पोर्ट्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट, राज्यों को ही प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार, राज्य की सरकार, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, स्टेट एसोसिएशन, कॉर्पोरेट एंड NGOs, they should come forward, join hands and work for the promotion of sports. It is happening for last few years. मैं ये नहीं कहता पहले की सरकारों ने किया, सर हर सरकार प्रयास करती है। जैसा सदन में देखा आपने, लोकसभा और राज्यसभा, किसी सांसद ने, एक को छोड़कर किसी सांसद ने राजनीति करने का प्रयास नहीं किया। सबने खेल भावना के साथ, यहाँ उसी खेल भावना के साथ इस चर्चा में भाग लिया है। मैं आप सबका उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूँ। सर इसमें खेलो इंडिया, सर DOPT के रूल्स हैं जहाँ पर स्पोर्ट्स कोटा में जॉब्स सरकार भी देती है, भारत सरकार भी देती है। इसके अलावा सर जो हमारी स्कीम्स हैं अलग अलग, सर मैं जब मंत्री बना यहाँ पर खेल मंत्री, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में पिछले 2 दशकों से एक बदलाव होना था। हमने बहुत सारी पोस्ट सरेंडर की ताकि कोचिज़ की नियुक्ति की जा सके। मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्नता, हमने 400 कोचिज़ की नियुक्ति सीधे तौर पर कर दी है। और अब खेलो इंडिया सेंटर्स में 1000 खेलो इंडिया सेंटर बनाने जा रहे हैं, जिसमें से 580 से ज़्यादा की हमने अनुमति भी दे दी। और यहाँ पर पूर्व खिलाड़ी जो हैं उनको खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए और उसको चलाने के लिए पैसे देने का प्रावधान हमने बजट में किया है। सर ये पूर्व खिलाड़ियों को एक तरह से खेलों को बढ़ावा देने, ट्रेनिंग देने और उनकी कमाई का साधन भी वहाँ से होगा। ये भी हमने वहाँ पर करने का काम किया है। सर एक कहा गया कि लिस्ट पब्लिश करनी चाहिए कौन कौन से इसके प्रोडक्ट्स की। यहाँ पर सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत डायनेमिक है, वो वाडा के हिसाब से हर साल चेंज होता रहता है। मैं आज अगर इसके साथ आज एक लिस्ट अटैच कर दूंगा तो मैं फिर बंद जाऊंगा। मुझे बार बार हो सकता है 6 महीने, 3 महीने, 1 साल बाद आपके पास आना पड़े। तो उसको रूल्स में रखा है, जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव होगा हम रूल्स में उसके बदलाव करते रहेंगे ताकि सदन को बार बार उसमें चेंज ना, बार बार तंग ना करना पड़े। सर प्रोटेक्टेड पर्सन पे मैंने पहले कर दिया, NR इलंगो जी ने उस पर कुछ सवाल खड़े किए थे। इसके अलावा जनरल वत्स ने पूछा था कि क्या सैंपल्स को कैसे दें। सर सारे सैंपल्स को हम लोग एक बहुत साइंटिफिक तरीके से सर इसका सैंपल भी लिया जाता है और उनको स्टोर भी बड़े सिक्योर तरीके से किया जाता है। और ये टेम्पर प्रूफ प्रोटोकॉल है और टेम्पर प्रूफ किट्स का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें खिलाड़ी के वर्षों के मेहनत जुड़ी हुई है। सर कोई नहीं चाहता कि कोई गलत सैंपल ले। सर अब तो खिलाड़ी भी बहुत जागरूक हैं, क्योंकि 1-2 इंस्टेंस पहले ऐसे हुए हैं, किसी ने किसी की पानी में कुछ मिला दिया। अब सर खिलाड़ी यहाँ तक जागरूक हो गए, प्लास्टिक की बोतल भी नहीं लेते ताकि कोई कुछ इंजेक्ट ना कर दे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या देश में। तो ये ऐसा भी बहुत सारी जगह पर होता है। तो वो जागरूकता भी हम उनके और पे करते हैं और यहाँ पर टेम्पर प्रूफ हम जो किट्स हैं और प्रोटोकॉल हम उसको अडॉप्ट करते हैं। और इस बिल के आने से तो उसको हम और सशक्ति करने जा रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, इस बात का विश्वास भी आपको दिलाता हूँ। शांतनु सेन जी ने भी कुछ बातें यहाँ पर उठाई, ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस की, DG नाडा की और बाकी नाडा की ऑपरेशंस की। वो मैंने पहले भी कहा सर हमने वो कर दिया है। और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में जो और बदलाव करने की आवश्यकता होगी हम उसको फर्दर एलैबोरेट सर वहाँ पर और भी कर देंगे और मैं माननीय सदस्यों को भविष्य में उसकी जानकारी भी उपलब्ध करवा दूंगा। सर बिल में स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं ताकि उसको एजुकेशन और अवेयरनेस क्रिएशन के लिए हम कर सकें और हम लगातार अभी भी कर रहे हैं सर, भविष्य में इसको करेंगे। सर पावर टू सर्च एंड सीजर की यहाँ पर बात की गई सर क्योंकि बहुत सारे टेस्ट जो हैं लगभग 60% टेस्ट हमें आउट ऑफ कंपटीशन करना पड़ता है। तो जब क्योंकि वैश्या जी बहुत लंबे समय से खेलों के साथ जुड़े हैं और जैसे उन्होंने बताया भी शेफ डी मिशन हमारे टोक्यो ओलंपिक्स में थे भी, ये भली भांति जानते हैं कि जब आउट ऑफ कंपटीशन आपको ऐसी टेस्टिंग करनी पड़ती है तो मैटर ऑफ एंटी डोपिंग रूल वायलेशन ना हो तो कंडक्ट जो सर्च एंड सीजर को कंडक्ट करना होता तो आप उसका प्रावधान नहीं करेंगे तो उनको ताकत ही नहीं मिलेगी। और अगर हम सही मायने में डोपिंग को ख़त्म करना चाहते हैं तो ये ताकत उनको आपको कानून में देनी होगी और आज आप सदन के माध्यम से उनको देने वाले हैं।
ये भी एक बहुत बड़ा कदम आप उस दिशा में दे रहे हैं। दूसरा, इसका दुरुपयोग ना हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वाडा के जो नियम हैं, जो उन्होंने वहाँ से सुझाव भी दिए, उसके अनुसार ही हम इसको सर्च सीजर का रूल्स को लेकर आएंगे, ताकि कहीं पर एंट्री भी करनी हो, सर्च सीजर करना हो, उसके अनुसार ही करें। सर, पीटी उषा जी क्योंकि बहुत बड़ी खिलाड़ी रही हैं, देश की सम्मानित खिलाड़ी भी हैं, और उड़न परी की जैसे कहा गया, उनको सिक्के नाम से जाना जाता था। मैं धन्यवादी हूं कि सदन की गरिमा पहले मैरी कॉम जैसे खिलाड़ियों के कारण बढ़ी, पीटी उषा जी के आने से सदन की गरिमा बढ़ी है। और मैं तो ये भी सौभाग्य मानता हूं कि हरभजन सिंह, जो बहुत बड़े खिलाड़ी क्रिकेट के हैं, वो भी आज इस सदन का हिस्सा बने हैं। वो भी, मुझे आशा है कि भविष्य में अलग अलग समय पर खेलों पर और बाकी विषयों पर भी बोलेंगे। सचिन तेंदुलकर भी रहे, बहुत सारे खिलाड़ी, कुछ लोकसभा, कुछ राज्यसभा में टिर्की रहे, बाकी सब भी रहे। दिलीप टिर्की बाकी रहे, मैंने कहा दिलीप टिर्की रहे, बाकी सब रहे। धनंजय मादिक जी ने कहा वो स्वयं खिलाड़ी रहे। मेरा आप सबसे अनुरोध ये रहेगा, खिलाड़ी तो आए हैं, आप सब भी अपने अपने क्षेत्रों में अगर खेलों का आयोजन करेंगे तो बहुत सारे खिलाड़ियों को ऐसे टूर्नामेंट में खेलकर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। और सांसद खेल प्रतिस्पर्धा देश के बहुत सारे राज्यों में माननीय सांसदों ने करवाई, जो बहुत सफल आयोजन सर हुआ है, और लाखों उभरते हुए ये हम भी उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए बल दे सकें। खेल महाकुंभ गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था, मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में किया सर। लगभग 75,000 से 1 लाख खिलाड़ी केवल मेरे संसदीय क्षेत्र में खेलते हैं। तो आप कल्पना कीजिए, हमारे दोनों सदनों को मिलाकर 800 से ज़्यादा सांसद जब ये करेंगे, या पूर्व सांसद भी करें, तो देश भर में सर करोड़ों लोग फिट इंडिया कैंपेन को भी, खेलो इंडिया कैंपेन को भी आगे बढ़ा सकते हैं। हम सब का ये प्रयास होना चाहिए। जॉन ब्रिटास ने कहा यहाँ पर, माननीय सांसद ने, कि मैं केरल आया, इनसे नहीं मिल पाया, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ, मैं आपसे नहीं मिल पाया। लेकिन सर, सच्चाई ये है कि हमारी पिछले दिन कॉन्फ्रेंस थी तेलंगाना में, हैदराबाद। रात को मैं 1 बजे फ्री हुआ, सुबह 5 बजे की फ़्लाइट पकड़ के मैं कालीकट गया, और वहाँ पर जाने के बाद सर, मैं पहली मीटिंग मेरी 9:30-10 बजे जब मैं पहुँचा सर, पहली मीटिंग करके मैं एक मीडिया हाउस के उद्घाटन पे गया था। उसके बाद मीडिया समूह के लोगों को मैं अलग मीटिंग में अलग से मिला, अब जिनको बुलाया गया मैं वहाँ पे मिला, खेल के संघों से मिला, वहाँ के खेल मंत्री से अलग मीटिंग की, फिर वहाँ के मेयर से अलग मीटिंग की, फिर पीटी उषा जी यहाँ पर होंगी, जितने वहाँ के खिलाड़ी, एक इंडोर स्टेडियम में 2.5 घंटे जाके सर मैंने खिलाड़ियों से अलग मीटिंग की। और उसी दिन रात को 8:30-9 बजे की जो आखिरी फ्लाइट थी, पकड़ कर आया। आगे प्रयास करूँगा कि रात को वहाँ पर रुकूँ भी और ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों से मिलूँ। मेरा प्रयास होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलूँ। और मैं सर सदन में ये कहना भी चाहता हूँ, वहाँ के खेल मंत्री जी भी 8 घंटे चल के मुझसे मिलने आए, इसलिए मैं उनको भी यहाँ पर कहना चाहता हूँ। हमने 2 दिन की स्पोर्ट्स मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस केवड़िया गुजरात में की, एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में, अलग अलग राज्यों के सर अलग अलग खेल मंत्री अलग अलग विचारधाराओं के थे, लेकिन खेल को लेकर सबने इतने बेहतर सुझाव दिए। उड़ीसा के हों, छत्तीसगढ़ के हों, अलग राज्य की सरकारें सर, अलग पार्टी की सरकारें, लेकिन खेल में सबने अपना बहुमूल्य सुझाव देने का काम किया है। इसलिए मैं केवल एक पार्टी का मंत्री नहीं हूं सर, मैं तो सोचता हूं मोदी जी ने अवसर दिया है, मैं तो देश के सभी खिलाड़ियों सभी के लिए एक बराबर हूं। और मैं तो यहाँ से उठकर विपक्ष के लोगों के साथ जाकर बैठता हूँ। रामगोपाल जी बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, मैं तो उठकर चले जाता हूँ पूछने के लिए, इनके अनुभव से सीखूं। सर, आप तो जब लोकसभा में थे, आप तो इसको वाउच भी करेंगे, आप तब भी नेता थे, यहाँ पे भी नेता है, हमने कभी उस पर भी कोई इस तरह की बातचीत नहीं की। सर, दूसरा मैं कहूँगा हब एंड स्पोक मॉडल, क्योंकि पीटी उषा जी पर हम बात कर रहे थे। हब एंड स्पोक मॉडल हमने शुरू किया है, जो नेशनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स एंड साइंस रिसर्च का सर दिल्ली में इसका मुख्यालय है, लेकिन देश में हमारे जितने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, हर जगह पर हमने इसका स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बनाया है, और हम आगे इसको और मजबूत करने की दिशा में ही काम कर रहे हैं। और नेशनल फोरेंसिक साइंस लैब के साथ हमने डाइटरी सप्लीमेंट्स की, जो मैंने पहले बात कही, डोपिंग की नॉन स्टैंडर्ड डाइट सप्लीमेंट्स, इनको भी टेस्ट करने के प्रावधान वहाँ पर हों, वो भी हम करने जा रहे हैं, ताकि कोई भी खिलाड़ी या गैर खिलाड़ी
अगर जिम में भी जाता है, कई बार वहां पर एक प्रोटीन का डब्बा रखा होता है, उसको लगता है कि उसके मसल रातों रात बढ़ जाएंगे। उसका नफा क्या है, नुकसान क्या है, वो जानकारी भी भविष्य में मिले, उस दिशा में भी हम काम करने जा रहे हैं। सर, एक कहा गया फॉल्स पॉजिटिव केसेस के प्रोसीजर की बात कही गई। इस बिल को लाने के बाद भी और उससे पहले भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसमें रिमोट पॉसिबिलिटी ऐसी है कि ऐसा कुछ होगा, वो भी हम वहां पर करने वाले हैं। सर, प्रॉपर्टी लिस्ट की मैंने पहले उत्तर दे दिया कि उसमें जो प्रॉपर्टी सब्सटेंसेस हैं, उनके स्टैंडर्ड्स और बाकी सबको समय समय पर रिवाइज करने ये एनुअल बेसिस पर होगा, क्योंकि बार बार एक क्वेश्चन पूछे गए। सर, एक सवाल और आया कि भारत सरकार बजट क्यों नहीं बढ़ाती है। सर, निश्चित तौर पर कोई भी खेल प्रेमी होगा, उसको लगेगा कि भारत सरकार को बजट और बढ़ाना चाहिए, लेकिन सदन की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2013-14 में 866 करोड़ रुपया खेलों का बजट था, जिसको बढ़ाकर 2254 करोड़ रुपया कर दिया गया। 866 crore was the budget in the year 2013-14, which has been raised to 2,250 crore rupees in the current financial year. सर, यही नहीं, हमने इसके साथ साथ सर बहुत सारी और बदलाव भी किए हैं। सर, आज लगभग 300 ऐसे प्रोजेक्ट, लगभग 2000। आपका बिल तो सर्वानुमत पास हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सभी लोग सपोर्ट किए हैं। लेकिन आपके नोटिस को मैं ये लाना चाहता हूँ कि आज हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट के घर को दिल्ली पुलिस ने पूरा घेरा डाल के रखा है, माननीय लोपी। हाँ। और राहुल गांधी जी के घर को भी पूरा पुलिस घेरा डाल के रखा है। अगर ये सदन चल रहा है, प्लीज कम द सब्जेक्ट। हाँ, इस विषय पर अगर बोलना हो तो नहीं, इसे हम तो वेलकम किए, सपोर्ट कर रहे हैं। दैट इज नथिंग, वी आर सपोर्टिंग, इट शुड बी पास्ड यूनानिमसली। लेकिन इस सदन में अगर नहीं बोलूंगा तो कहाँ बोलूंगा? नहीं, ये सब्जेक्ट विषय कुछ और है। इसलिए देखिए साहब, अगर जगह पे इस ढंग से नहीं, कोई सदन का विषय नहीं है, सदन में बहुत व्यवस्थित तरीके से बिल चल रहा है, कानून अपनी व्यवस्था कर रहा है, अपना काम कर रहा है, उसमें सरकार के ऊपर टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। जब कारनामे ऐसे करो तो उस समय चिंता करनी चाहिए, ऐसे कारनामे करते वक्त चिंता करनी चाहिए। आज हमें मत बताइए, जो कारण है वो कारण की चर्चा करें, किस कारण से कार्रवाई हुई है, वो कारण का जवाब दीजिए। आप लोग उसमें दखल अंदाजी सरकार नहीं करती है। प्लीज। सर, माननीय सांसदों ने जैसे पूछा कि खेलों में क्या हुआ, रूपाला जी, खेलों में क्या हुआ, वो दूसरे खेल की बात करें, मैं असली खेल की बात कर रहा हूँ। माननीय मंत्री जी, प्लीज माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए प्लीज। सर, बजट की मैंने बात कही कि 2013-14 में खेल का बजट जहां मात्र 866 करोड़ था, उसको बढ़ाकर 2254 करोड़ प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया है। और सर, मैं इस तुलना में जाना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि पूछा गया, दूसरा पूछा गया क्या खेल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सर, 2010 से लेकर 2016 तक मात्र 62 प्रोजेक्ट 342 करोड़ रुपए की लागत से चल रहे थे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले कुछ वर्षों में 2017 से 22 तक मात्र 5 वर्षों में 300 प्रोजेक्ट 2753 करोड़ रुपए की लागत से हम खेलों के पूरे देश भर में बना रहे हैं। सर, हम कहीं पर कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। यही नहीं सर, हमने जो पैसा है वो भी द्रोणाचार्य अवार्ड 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया, और इसी तरह से ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी सर 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपया कर दिया है, और अर्जुन अवार्ड को भी 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपया कर दिया है।
सर एक बात कही गई कि खिलाड़ियों के आने के बाद सम्मानित किया जाता है, पहले कुछ नहीं करते। सर मुझे लगता है इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालना बहुत आवश्यक है। सर टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच भी है और उसका क्रियान्वयन भी जब धरातल पर किया गया, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसका मैं पहला चेयरमैन बना था। सर यहाँ पर खिलाड़ी के लिए उनके रहने की, खाने की, खेलने की, ट्रेनिंग की, विदेश जाने की, देश और विदेश के दोनों में टूर्नामेंट्स में भाग लेने का पूरा खर्चा मोदी सरकार वहन करती है और 6 लाख रुपया साल का जेब खर्च अलग से देती है ताकि खिलाड़ी को पैसों की चिंता ना करनी पड़े, खेलों पर ध्यान रखें और मेडल जीते। यही कारण है कि टोक्यो ओलंपिक्स में 7 मेडल आज तक के सबसे ज्यादा भारत ने जीते और नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। पैरालंपिक्स में पिछली बार 19 लोगों का कंटिंजेंट किया था, इस बार 19 मेडल जीतने का काम भारत के खिलाड़ियों ने किया। डेफ ओलंपिक्स में 16 मेडल जीते। तो वहीं पर ही IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता, तो मनीषा मौन ने और दीपिका हुड्डा ने हमारे यहाँ पर गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम किया। थॉमस कप बैडमिंटन में सर भारत ने 73 सालों में कभी गोल्ड नहीं जीता था, इस बार भारत के खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल थॉमस कप में भी जीतने का काम किया है। ये अपने आप सही कहा आपने, रातों रात नहीं हुआ। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम हो, खेलो इंडिया सेंटर्स हो, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो, स्टेट ट्रेनिंग सेंटर्स हो या एक्सटेंशन सेंटर्स हो, ये सारे प्रावधान किए गए और बजट में बढ़ोतरी की गई, तभी जाकर खिलाड़ियों को सहयोग भी किया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये सर, जब वो खिलाड़ी या कोई भी व्यक्ति जब युद्ध में भी सर, अगर जनरल साहब कहाँ गए हैं, तो जनरल साहब युद्ध में जब कोई जाता है और कारगिल के युद्ध में सर अगर टाइगर हिल पर वापस कब्जा लेना था तो उससे पहले कहीं ना कहीं मनोबल किसने बढ़ाया? उस समय फौज के उस अधिकारी ने तो मनोबल बढ़ाया ही होगा। लेकिन मुझे आज भी याद है कारगिल युद्ध में जब वहां पर हमारे सैनिक शहीद हुए या जो वहां पर गंभीर रूप से घायल भी हुए, प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय किसी पद पर नहीं थे, कहीं पे मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद वो उनका हालचाल पूछने गए। और जब अस्पताल तो गए ही थे, लेकिन जिस बंकर में जाकर अपने सैनिकों से मिल रहे थे, वहां पर वो लोग ध्यान देकर रेडियो पर सुन रहे थे, एकदम से सबने भारत माता की जय करनी शुरू कर दी। क्यों? उस समय अटल जी ने निर्णय लिया था कि मैं देश से बाहर नहीं जाऊंगा जब तक 1-1 इंच भारत भूमि की वापस नहीं ले सकते। तो जवानों को लगा कि देश के प्रधानमंत्री साथ में खड़े हैं। इसी तरह से मोदी जी आज जब हमारे देश के खिलाड़ी दुनिया के किसी दूसरी धरती पर जाकर खेल को एक युद्ध भूमि के रूप में अगर देखें, अगर वहां पर हिस्सा लेने जाते हैं तो उनके जाने से पहले देश के प्रधानमंत्री उनसे बात करके मनोबल बढ़ाते भी हैं, समय पर वहां पर बात करनी तो भी करते हैं, और आने के बाद भी प्रधानमंत्री निवास पर खिलाड़ियों को बुलाकर उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। एक बड़ा बदलाव आया सर, बड़ा बदलाव आया है। मैं तो पिछले 22 साल से सर खेलों से जुड़ा हूं, कभी खेल संघों के अध्यक्ष से लेकर आज खेल मंत्री तक। मैं जानता हूं कौन किस समय कितने लोग मिलते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत कुछ बदला है, सोच बदली है, सुविधाएं बदली है, और हमारे खिलाड़ियों ने देश के मान सम्मान और मेडल जीतने का काम भी करने का काम किया है। दूसरा सर, फिट इंडिया कैंपेन को भी हमने आगे बढ़ाया। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज ये पूरे देश भर में किया। सर फिट इंडिया क्विज भी हमने किया। मैं सबको, क्योंकि जाने की जल्दी होगी, मैं उस पर समय ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि सब ने आम सहमति के साथ किया। सर 2 बातों पर मैं जरूर ध्यान देना चाहता हूँ। एक माननीय सांसद एक राज्य की बड़ी बड़ी बातें करके गए सर, और मैं बैठे बैठे देख रहा था सर कि किया क्या है, और फिर मैंने सोचा कि चलो उस राज्य का बजट का प्रावधान कितना, जरा उसको भी बुलाकर देखा जाए। सर बजट बढ़ाना तो दूर की बात, सर 284 करोड़ रुपया उन्होंने 2020-21 में दिल्ली सरकार ने खेल का बजट रखा था, मात्र 40 करोड़ रुपए खर्च किए। और यही नहीं सर, बजट लगातार कम किया है। उसको कम करते करते
116 करोड़ और अब 115 करोड़ शायद इस पे ले आए। मैंने कागज यहीं पे रखा था, वापस आपको पढ़ के बता देता हूं क्योंकि कागज भी थोड़े नहीं, रिकॉर्ड पे आंकड़ा ठीक जाना चाहिए। सर दूसरी उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की कि ये किया वो किया। वो जिस खेल विश्वविद्यालय की बात करते हैं वो शायद हवा में बने, जमीन पे तो कहीं नजर आता नहीं है। और बड़ी बात तो ये है जो आरोप वो उत्तर प्रदेश पर लगाकर चले गए। मैंने पहले भी कहा, मैं फिर बड़ी गंभीरता के साथ कहता हूं कि अगर देश में टोक्यो ओलंपिक्स पैरालंपिक्स के बाद देश की सरकार ने तो दिए ही पैसे, अलग अलग राज्यों की सरकारों ने अपने खिलाड़ियों को भी सम्मानित करके उनको कैश रिवॉर्ड्स दिए। उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य ऐसा है जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने देश के खिलाड़ियों को बुलाकर भी करोड़ों रुपए देकर सम्मानित किया और मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना भी रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास भी किया है। सर इसलिए वे सारे बातें यहां पर लानी इसलिए आवश्यक थी कि देश को जानकारी मिले, कोई गलत आंकड़ा वहां पर ना जाए। बाकी जहां तक दिल्ली की सरकार की बात है, इन्होंने लगातार बजट में कटौती ही की है। 280 करोड़ केवल दिखावे के लिए था, 40 करोड़ ही खर्च किया, फिर 116 करोड़ शायद 115 करोड़ पे आ गए। खर्चा कितना कर पाएंगे मुझे सर उसका पता नहीं। कुछ बातें सर जो मुझे लगता है राजनीतिक रूप से यहाँ करने का प्रयास किया, मैं उस पर नहीं कहूँगा क्योंकि मैटर सब जुडिस भी है। केवल कुछ लोगों को चर्चा में रहने की आदत है, आरोप लगाओ और फिर भाग जाओ, रिप्लाई के समय सदन में उपस्थित नहीं है। इससे पता चलता है वो खिलाड़ियों को लेकर गंभीर कितने हैं। मैं माननीय संजय सिंह जी की बात कर रहा था सर। दूसरा सर मेरा एक अनुरोध और रहेगा। कुछ ने कहा कि राज्यों में लैब्स बने सर, क्योंकि जो भी लैब बनेगी ये नाडा के कानून के अंतर्गत ही बनेगी। और मैंने पहले भी कहा एक लैब से हमारा भी काम चलने वाला नहीं है। हम चाहेंगे कि देश के अलग अलग स्थानों पर भविष्य में बढ़ोतरी हो, बने, लेकिन हर राज्य में एकदम से खोलना संभव नहीं हो पाएगा। शायद उतनी आवश्यकता शुरू में ना भी हो, लेकिन जो भी बने क्वालिटी बने, ना केवल देश के खिलाड़ियों के टेस्टिंग के लिए उपयोगी हो, बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूं हम NDTL को, नेशनल डोपिंग टेस्टिंग लेबोरेटरी को एक आत्मनिर्भर भारत की सोच के अंतर्गत देश और दुनिया के लिए टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाने जाएंगे ताकि दुनिया भर के सैंपल्स को भी यहाँ पर लाएं और भारत इस दिशा में भी अपना बड़ा नाम कर सके। आप सभी ने अपना बहुमूल्य सुझाव यहाँ पर दिए, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार भी प्रकट करता हूँ। आपने खेलों में और खेल के बिल में राजनीति नहीं लाए, इसके लिए भी आपका आभार प्रकट करता हूँ। मिस्टर जॉन ब्रिटास ने कहा कि क्रिकेट ने बहुत पैसा कमाया, 50,000 करोड़ कमाया, तो मैं तो कहना चाहता हूँ भारत को इस बात का भी गर्व होना चाहिए कि दुनिया में जितने देशों में क्रिकेट खेला जाता है वो भी आज भारत की ओर देखते हैं कि भारत में आकर खेलने का अवसर मिले। ये भारत ने अपनी ताकत और नाम पूरी दुनिया भर में बनाया है। और जब टोक्यो ओलंपिक्स में भी हमारे खिलाड़ी गए सर, तब BCCI ने उसमें भी प्रमोशन के लिए पैसा दिया, खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए पैसा दिया। स्टेडियम सर जो अहमदाबाद में बना है सर, कितना स्टेडियम है सर? क्रिकेट जगत में दुनिया का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम कहीं पर बना है तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये गुजरात में बना है। हमें इन बातों पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि मैं सर दो बातें में इसलिए आज विशेष पर क्यों बात कर रहा हूं। एक बात कही गई कि सर एक बात कही गई कि पॉलिटिशियन, सर कहा गया कि पॉलिटिशियंस स्पोर्ट्स बॉडी को हेड करते हैं। सर शरद पवार जी क्रिकेट के अध्यक्ष रहे तो मुंबई में उन्होंने क्रिकेट स्टेडियम बनाया, अरुण जेटली जी यहाँ पर दिल्ली के अध्यक्ष रहे तो यहाँ पर स्टेडियम बनाया, खिलाड़ी भी रहे तो उन्होंने भी बनाया। ये व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर करता है, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स पर निर्भर करता है कि वो क्या योगदान दे सकता है। ना सभी सांसद एक बराबर होंगे, ना वो सभी खेल एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे हो सकते हैं। इसलिए उनके रूल्स एंड रेगुलेशन अपने, वो जिसको चुनना चाहे चुने। हमने
नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड लेकर आए, उसके अनुसार उनका चयन किया जाता है। खेल संघ ऑटोनोमस बॉडीज हैं, वो अपने आप अपने लोगों को चुनते हैं। मैं इतना ही कुछ कहूँगा, हम खेल और खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और इस बिल में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। आप सबने सहयोग दिया, आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। अच्छा, discussion is over. Taken my name out of actually Please go to your seat. sir, it's my delayed sir. This is not your seat. Please go to your seat. Because you have also given for Okay, amendment. sir. Please. मान लिया Please. सर, अनुराग जी ने मेरे को रेफर किया है. I have a complaint that he didn't meet me while he visited Kerala. That's not the fact. The fact is that his office called me up and asked me whether I would be available for a meeting at Calicut in the capacity of Chief Editor and Managing Director of a channel. I said yes. When my honorable ministry is visiting Kerala, I would be more than happy to meet him. Then what happened, sir? A section of the media heads were not invited. And I wrote a letter to him saying that I would have liked to come for your meeting. So it's not that he didn't meet me. No. It's that his office didn't Now give me I the come to invitation. amendment. I really want No, to make nothing. record It's correct. not going to. Please. I shall first put the amendment. Moved by Dr. John Brittas for reference of the National Anti-Doping Bill 2022 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha to vote. चूंकि आपका amendment था, इसलिए requested to be on the seat. वहीं से पेश हो सकता था. The question is that the bill to provide for the constitution of the National Anti-Doping Agency for regulating anti-doping activities in sports and to give effect to the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization International Convention Against Doping in Sports and compliance of such other obligations and commitments thereunder and for matters connected therewith or incidental thereto as passed by Lok Sabha be referred to a select committee of the Rajya Sabha consisting of the following members: Sri Vikas Ranjan Bhattacharya, Dr. John Brittas, Professor Manoj Kumar Jha, Sri Jose K. Mani, Sri A. Rahim, Sri Trichu Siva, Dr. V. Shivasan, Sri K.C. Venugopal. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the no's habit, the amendment is negative. I shall now put the motion moved by Sri Anurag Singh Thakur to vote. The question is that the National Anti-Doping Bill 2022 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. There are two amendments, number 4 and 5 by Dr. John Brittas. Are you moving? I am not moving, sir. I shall now put clause 2 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, Clause 2 is adopted. Clauses 3 to 6 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, Clauses 3 to 6 are adopted. Clause 7 stands part of the bill. There are 6 amendments. Number 1 by Dr. V. Sivasan. Number 6 to 9 by Dr. John Brittas. Number 22 by Sri A. Rahim. Are you moving, Dr. V. Sivasan? No, not moving. Dr. John Brittas, 6 to 9, are you moving? Sir, I like him so much, so I don't move. Yeah. Sri A. Rahim, number 22, are you moving? I don't move, sir. Thank you. I shall now put clause 7 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, Clause 7 is adopted. Clauses 8 to 10 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, Clauses 8 to 10 are adopted.
Clause 11 stands part of the bill. There are 9 amendments. Number 2 by Dr. V. Sivasan, number 10 to 14 by Dr. John Brittas, number 23 to 25 by Sri A. Rahim. Dr. V. Sivasan, are you moving? Yes, sir. Moving? Yeah. Move. Dr. John Brittas, are you moving? Not moving, sir. Not moving. Dr. Sri A. Rahim, are you moving? Sir, I move. Acha, move. Amendments moved. I shall now first put the amendment moved by Dr. V. Sivasan to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendments moved by Sri A. Rahim to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 11 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 11 is adopted. Clause 12 stands part of the bill. There are 2 amendments, number 15 and 16 by Dr. John Brittas. Are you moving? Not moving, sir. Not moved. I shall now put clause 12 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 12 is adopted. Clauses 13 and 14 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 13 and 14 are adopted. Clause 15 stands part of the bill. There are 4 amendments. Number 17 to 20 by Dr. John Brittas. Are you moving? Not moving, sir. Not. I shall now put clause 15 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 15 is adopted. Clause 16 stands part of the bill. There is 1 amendment, number 3 by Dr. V. Sivasan. Are you moving? I am moving, sir. Moved. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 16 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 16 is adopted. Clauses 17 to 33 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 17 to 33 are adopted. Clause 34 stands part of the bill. There is 1 amendment, number 21 by Dr. John Brittas. Not moving, sir. Not moving. I shall now put clause 34 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 34 is adopted. Clause 1, the enacting formula, the preamble and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula, the preamble and the title are adopted. Sri Anurag Singh Thakur to move that the bill be passed. So with your kind permission, I rise to move the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Recorded that it's unanimously. Yes. If everybody agrees. It will be seen. No problem. Statutory resolutions. Chairman Sri Pankaj Chaudhary to move the following resolutions. सभापति महोदय, अपनी वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से मैं निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्ताव पेश करता हूं। सीमा शुल्क टैक्स अधिनियम 1975 की धारा 8A के अनुसरण में यह सदन एतवार दिनांक 21 मई 2022 की अधिसूचना संख्या 28/2022 सीमा शुल्क दिनांक 21 मई 2022 और GSR 380E को अनुमोदित करता है, जिसमें इस्पात उद्योग के कुछ निर्धारित कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं पर निर्यात शुल्क बढ़ाने और उगाने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूचित में संशोधन की मांग की जाती है। वित्त अधिनियम 2002 की धारा 147 के अनुसरण में यह सदन एतत्वार दिनांक 30 जून 2022 की अधिसूचना संख्या
5/2022 केंद्रीय उत्पाद शुल्क GSR 493E दिनांक 30 जून 2022 को अनुमोदित करती है, जो कच्चे पेट्रोलियम तथा ATF पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क निर्धारित करने के लिए वित्त अधिनियम 2002 की 8वीं अनुसूची में संशोधन करने की मांग की जाती है। Sri Pankaj Chaudhary has moved the following resolutions in pursuance of Section 8(1) of the Customs Tariff Act 1975. This House hereby approves of notification number 28/2022 Customs dated 21st May 2022, GSR 380E dated 21st May 2022, which seeks to amend the second schedule of the Customs Tariff Act in order to increase and levy export duty on certain raw materials and intermediate goods of the steel industry. In pursuance of Section 147 of the Finance Act 2002, this House hereby approves of notification number 05/2022, Central Excise dated 30th June 2022, GSR 493E dated 30th June 2022, which seeks to amend the 8th schedule to Finance Act 2002 in order to prescribe a special additional excise duty on crude petroleum and ATF. Resolutions moved. No. इस पे हो गया किसी बार भी बोलेगा ना सर नहीं ये पहले इसका क्या करना दूसरा I shall now put the statutory resolutions moved by the minister to vote. The question is put. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The resolutions are adopted. Now special mentions. Professor Manoj Kumar Jha, not present. Sri Manas Ranjan ji, not present. Dr. John Britash. Sir, I want to, excuse me, hello. Please. Sir, I want to raise a very pertinent matter. As you know, the airfare has peaked and the increase has been almost 300% to 600%. It's not only with regard to the domestic routes, but especially on the international routes. Kerala diaspora in West Asian countries is getting their fingers burned owing to the soaring airfares. Many are dropping their plans to come into India. Sir, almost 4 million Malayalis are residing in Gulf countries, and most of their families are in Kerala. Because of the steep hike in the airfare, they are unable to come to Kerala. Sir, I have been requesting the Honorable Minister to regulate and put a ceiling for the airfare, and I would earnestly request him to see that some regulation is brought forward. Thank you, sir. Thank you. Srimati Seema Dwivedi. माननीय महोदय, भारतवर्ष के अनेक प्रांतों में विभिन्न सरकारें अपने अपने पढ़ना है इसको मैडम? हाँ पढ़ रही हूँ। हाँ पढ़िए इसको। अच्छा जो अप्रूव्ड टेक्स्ट है वही आप पढ़ सकते हैं, वही पढ़ अदरवाइज जो रिकॉर्ड पे नहीं सर वही पढ़ रही हूँ। प्लीज। सभी विश्वविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के समय समय पर प्रमोशन न होने के संबंध में सभी विश्वविद्यालयों एवं विद्यालयों में समय से उनका शिक्षकों का प्रमोशन हो जाए, ऐसा सरकार ने समय समय पर शासनादेश जारी किया था। वर्ष 2021 तक सभी शिक्षकों के व्यक्तिगत प्रमोशन हो जाएंगे। ऐसा आदेश होने के बाद भी अब तक प्रमोशन न होने के कारण शिक्षकों को मानसिक वेदना हो रही है। शिक्षक समाज का आईना होता है, परंतु अनदेखी के कारण उनके व्यक्तिगत क्षति हो रही है। सरकार के संज्ञान में लाना चाहती हूं कि सरकार अपने आदेश को पालन करने हेतु तत्काल प्रभाव से इस पर विचार करके शिक्षकों के सम्मान की रक्षा करें, क्योंकि यदि शिक्षकों के प्रमोशन को बाधित रखा गया तो शिक्षकों के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से उनको मानसिक एवं आर्थिक स्थिति का आघात लगने से शैक्षिक कार्य में उदासीनता होगी, जिससे पठन पाठन प्रभावित होगा। क्योंकि शिक्षक की वजह से किसी भी देश का विकास एवं उसका
निर्भरता युवाओं पर सीधा प्रभाव डालता है। युवाओं को सही दिशा में मोड़ना एवं उनको प्रभावित करने का कार्य सही मायने में शिक्षक ही कर सकता है। शिक्षकों की संतुष्टि एवं उनके सम्मान की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। वह शिक्षक समुदाय की रक्षा एवं लगातार शिक्षकों का प्रोत्साहित करें। समय समय पर सरकार शिक्षकों को पुरस्कृत करना एवं उनके अच्छे कार्यों की प्रशंसा करना यह सरकार की तरफ से देखने को मिलता है, लेकिन पता नहीं किन कारणों से सरकार अपने आदेश को जो कटा हुआ है वो नहीं पढ़ सकती, जो कटा हुआ है वो नहीं पढ़ सकती। बस मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस समय समय पर जो उन्होंने अपना आदेश दिया था अपने आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। माननीय मुकुल वासनिक जी, नॉट प्रेजेंट। डॉक्टर के लक्ष्मण, नॉट प्रेजेंट। माननीय निरंजन विसी जी, प्लीज। Thank you, Honorable Chairman, sir, for giving an opportunity to me to speak regarding need to take steps to improve network connectivity to the existing mobile net towers in Odisha. Sir, since long, Odisha has been a connection deficit state. The present tele density of Odisha is 75% against 90% of all India. There are nearly 51,353 villages, out of which 11,000 villages have no mobile connectivity. The state has the maximum number of uncovered villages in the country. The quality of mobile connection is a major concern in view of requirement of data connectivity for citizen-centric applications, including digital payment, being promoted by the government. During this COVID-19 pandemic, all work is being done through digital platform, and people are dependent on internet for access to basic necessities like online education of students and work from home, etc. Therefore, I urge upon the government of India to improve network connectivity. Mohammad Nadimul Haq ji. My question is on lateral entry in the Indian Administrative Service. Respected Chairman, sir, I rise today to request the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions to reform the initiative of lateral integration in IAS. The government has said that lateral recruitment is aimed at achieving the twin objectives of bringing in fresh talent and augmenting the availability of manpower. In 2021, the government made only 31 recruitments through lateral entry. This is not enough to radically professionalize the civil service. With increased participation not only in the social sector, but also in many new emerging sectors such as telecommunications, information technology, climate change, and road transport, there is an urgent need for more officers in the general administration. However, due to the overall shortage of officials, most states are unwilling to release senior IAS officers for central deputation, leading to a bizarre situation where a railway traffic officer works as a joint secretary in the health department and an ordnance service official finds himself in the Ministry of Tribal Affairs. Governance is not contractual work. It is a commitment to the country. I urge the government to provide incentives to young civil servants to acquire knowledge and improve their skills in order to build a healthy bureaucracy. The government should formalize a criterion to decide what skills, qualities, and experiences a particular role requires, as it will allow the government to assign roles more confidently. Thank you. डॉक्टर सो कुमार मित्तल, आप ले करना चाहेंगे या पढ़ना चाहेंगे? पढ़ना चाहेंगे। धन्यवाद, आप मौका दे रहे हैं इस चीज़ के लिए। It's regarding amendments to table of precedence. The order of precedence in India is a protocol list in which the government of India's functionaries and authorities are listed by rank and office. It is designed for state and ceremonial events. It has no application in the government's day-to-day operations. The President of India issues the order, which is maintained by the Ministry of Home Affairs. Currently,
The Member of Parliament are listed at number 21 in the table of precedence, which is even below the statutory post like Cabinet Secretary, Chairman Central Tribunal, Central Administrative Tribunal, and Chairman Minority Commission. A Member of Parliament is elected through the mechanism laid down in the Constitution of India. A Member of Parliament represents the will of the people and is their voice in the Parliament, and in addition to this, he is also entrusted with representing his state and also the country at multiple forums. However, the low ranking in the table of precedence doesn't do justice to the stature and sanctity of a Member of Parliament, which needs to be changed in a representative democracy like India, which takes pride in its parliamentary system of governance, where its citizen decides their representatives, including the Prime Minister, President and Vice President. I request the government that in view of the important constitutional, statutory and legislative functions being discharged by the Member of Parliaments and also Member of Legislative Assembly, the table of precedence should be revised and entry 15, which is accorded to Cabinet Minister in the state, should be given to MPs and MLAs who reflect the aspiration of their electorate as policy makers. Thank you very much. Jai Hind. Mr. Sujit Kumar, not present. Mr. K.C. Venugopal, not present. Mr. Wilson. Vice Chairman, sir, for allowing me to make a special mention of urgent public importance on the matter relating to abolishing of toll plazas across the country. There are about 1,000 toll plazas in India, highest being in Tamil Nadu about 48. Right to travel is a fundamental right. In developed countries, there is an option of toll and non-toll roads. However, in our country, all important arterial roads in state have been taken over by NHA and converted into toll roads, forcing the people to pay toll. Those living adjacent to toll roads have to use the roads every day, and even the monthly passes are expensive. There are many stretches of national highways operated by the concessionaires and National Highways Authority of India who have already realized the investment but still continuing to collect exorbitant toll fees. Toll fees are increased year to year by National Highways Authority of India mechanically. Toll fees are charged even for government transport buses and other state government vehicles. State transport corporations are not profit-driven but services at normal rates. Therefore, all National Highways Authority of India toll fee plazas in the country requires immediate auditing by an independent authority to analyze the investment made, amount realized through toll collections in such stretch, and any amount due to concessionaire, National Highways Authority of India. Such concessionaires could be settled once for all. There cannot be element of profiteering in public utility infrastructure. Time has come where all the toll plazas have to be abolished completely. Instead, a one-time fee at the time of registering the motor vehicles can be collected. Therefore, I urge the Honorable Union Minister for Road Transport Highways to abolish all toll plazas across the country. Thank you, Vice Chairman, sir. Mr. Abhiranjan Biswas. So, my special mention is not concerned over Forest Conservation Rules 2022. The new Forest Conservation Rules 2022 are due to be placed before the House for approval. Concerns have arisen that these new rules will make the process easier to divert forest and tribal land towards infrastructure projects, mining, and other purposes detrimental to forest conditions and conservation. Concerns also arise of dilution of the historic rights granted under the Forest Rights Act 2006 to tribal communities and other forest-dwelling groups under the guise of
streamlining of forest clearance approval processes, obtaining of collective decisions, and placing monetary values on forest tracts for less effective reforestation projects elsewhere. The Forest Conservation Act 1980 worked to undo the colonial idea of forest as resources to exploit and viewed them as heritage to be protected. Through this lens, the Act created stringent processes right up to the Union Ministry level, which were to be followed prior to diversion of forest land. The Forest Rights Act 2006 also worked to undo historic injustices to forest-dwelling communities and gave them a legal right over their traditional homes and a say in the diversion of these lands. It is imperative that these protections continue to exist for the safety and security of the forests and tribal communities of India. I urge the government to reconsider the issuance of the Forest Conservation Rules 2022. Thank you, sir. Sir, associate. Thank you. Please write it down. Message from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 3rd August 2022 passed the Central Universities Amendment Bill 2022. I lay a copy of the said bill on the table. Thank you. The House stands adjourned to meet at 11 hours on Thursday, the 4th August 2022.